The strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Desperation. I come to crush my enemies. I reap. The strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Desperation. I come to crush my enemies. I reap. The strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Desperation. I come to crush my enemies. I reap. The strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
Desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome back. This is the main event that you guys been waiting for. Back again here at the Algambo Esports. We are here waiting for those 16 register team to see who takes the spot right here. So with that, let's see what we have. I'm your caster PT. I will be joined by Sarah very soon. She'll be back. Don't worry about that. But other than that, let me say about the matches that we have in our hands now. It's going to be quite interesting given the fact that there were 16 teams who have registered, and on top of that, these are the teams right here up for a good amount of practice out of their hands, and on top of that, they want to make sure that they have the best. So let's see. We have Astral Reaper versus Zero Vault. Soon we'll be diving into the drop, and we will be able to see what kind of with. And also don't forget, all the 16 teams will be playing today. It's the day number one, and on top of that, it's gonna be best of one. So the best of one team is gonna be a bit iffy given the fact that you mess up here, it's just gonna be tata bye bye and you just going home. So let's see. Let's see. Other than that, let's go. The draft has been, presented right in front of us. Looks like Zero Volt will be onto the blue side. Now, when you are on a blue side, you do get a bit of a advantage of picking up one hero that is uh, such a hero that is overpowered, or maybe a comfort hero that could work very well into your hands. So I do want to see Zero Volt picking such heroes. Maybe is it going to be a Sora, or is it going to be a marksman such as the Claude? I am kind of curious to see where the Claude stands as of now into the meta. So let's see if that be comes up in the ban, or is it going to be picked up? Other than that, Zushin Freya very well. Wasn't expecting a Zushin from the blue side, like given the fact that they could have gone for it if Astral Reaper, if they forgot about that. But okay, they are not going for that. Ban. You got the Claude getting banned as well. That is also looking quite good. And on top of that, I do want to see something like the Sora getting banned. One is going to be the best of one series. And with that, I do believe we have Sarah on board with us. Hello, Sarah. How are you doing?
Okay, okay. Oh, never mind. She'll be back. Don't worry. But other than that, a Claude out of the way, carry out of the way. Carry was quite expected. Now I do want to see how the gold lane's gonna be. Is it going to be the fighter gold lane that we are looking for, or is it going to be a you know a proper marksman? Now again onto the marksman. I do feel like we do have a chance of seeing the Granger up in the front, or maybe, come up with the CC. So let's see. Other than that, we do have the Yuzhong getting banned. Understandable. EXP lane, very good hero. So that's going to be there. And I think this is the last time I'm going to believe Sarah is here. Yep, yep. Hello, is it audible properly? Yes, you are. And how are you? Oh, well, just keeping up with life somehow, I believe, and things have been really hard. But I guess it is what it is. But let's just say this game, it looks a bit interesting because look at that. It's going to be a Zacian, the first pick already. Yep, now that's definitely interesting. I was thinking something like a Sora coming up, but that's not the case. Now, Astral Reaper does have the chance to pick up something like that, but on top of that, they need something to get the control back. Now, again, Zaytian gives such a good control during those team fights, and her ultimate, that just split second that you have to dodge, or you have to be in a very uncomfortable position. You have to look out for that. But other than that, Astral Reaper, look at that, going for a strong picks. Yep, that's gonna be a Sora Grok pick coming in from the red side, the Astrolect Reaper team. However, Zero Volt here really needs to think this through, and the problem is just going to be that since they have a Zacian, it is going to be a major problem because she is a bit immobile. And so obviously they need to think this through and pick up some frontliners which can actually counter the Sora. And that's going to be quite possibly a Khalid pick that we can see. I do want to see something like that coming up as well, but here you go. And on top of that, you're just, putting up a bit of HP, a taker, heroes, damage dealer. So that is also working out very well. YSS, one hand, I feel like it's going to be a hyper YSS, the juggler, but there is a quite a bit of a chance to go for the flex as well. That's what. And now we see the Yasun Shen, a very standard jungle pick, and that's the best situation you could possibly have. And honestly, Yasun Shen in the gold can be flexed as well. But for now, we see the X-Borg pick coming in, quite possibly a counter for the Sora on the EXP. But then again, the Sora could be forced on towards the, what is it called? The gold lane. Of course, Sora Gold is a big situation, and the export towards the EXP is a bit of a weak pick in the current meta, but let's see how that works out. So let's see. I was expecting a Farsa right here. Understandable. You have the Zetian in front of you. Pick up the Farsa. You do create a space for you and your team. But at the same time, Zetian has the ability to pause, not exactly pause, but actually just wipe out her ultimate. So if Zetian times it very well, now here her timing gonna be very, very important for Zero Volt. So curious to know. But back again towards the banning, very quickly diving in, they have gone in for such tanky picks from both the sides, along with an Ixia. Now, Ixia, a bit, 50-50. I feel like Zero Volt have done their homework. That's what. The bans are actually looking pretty good here. Ixia Fredrin is not, I mean, Fredrin is okay, but Ixia is not so common in the current scenes, but I guess it's just a comfort ban for these people because we know the Mumbai server and Delhi servers, they love the Ixia Digi combo, and I think they kind of just want to deny that. So for now, gold lane, a lot of options open, especially the Claude. I believe, no, the Claude is banned out. My apologies. So definitely they need
to kind of push the Sora towards the gold lane, or they would later on need to pick up something like the Esme gold, or maybe the Lapu Lapu gold, or even the Yuzhong gold. But Yuzhong is banned out, so that's ruled out, of course. Let's see how it works out for these people right now. But looks decent so far. Definitely. And with Yeah. that, we do have a Benedetta pick. Now, it's a long time no see. I literally put my votes right here because this is one of the picks that I have not seen in such a long time. So I do want to see how the Benedetta is going to work out for the side of Team Astral Reaper. But at the same time, against a Xborg, I have a feeling that this Xborg is an EXP. Yep. The Benedetta is also kind of a, niche pick that comes in for these kind of teams. And technically speaking, they need to just focus out a little bit towards their drafter. I believe the Sora, Bene, both of them can just go into either of the lanes. And the problem is just going to be the fact that, they just go in for those picks here and there. But let's see how it works out overall. Oh, onto the other side, very quickly jumping in. They got the Harriet onto their hands along with the Tigreal. Now, very strong crowd control coming in from the side of Team Zero Vault, which is really looking good. But Astral Reaper, they now need to pick something just to stop them, just to make sure that the back lanes will be protected. Now, again, picking up a Benedetta, they are kind of denying themselves with a little bit of an, EXP dominance that they were looking for. Again, let's just say it's just, Xborg versus Benedetta. I would still put my votes under the hands of the Xborg, not a Benedetta. One, obviously it's out of meta. Two, Benedetta, I feel like a bit squishy unless if you don't know how to play. So I want to see how Sky is gonna have a time on in the EXP lane. That's what I kind of find the red draft a little bit better because of the scaling that they have. They have a utility mage in the mid lane and a magic damage gold laner. So definitely that's a good balance of the magic damage they have. While onto the hands of Astral Reaper, it's just a Farsa with her single burst. So it's a good decision overall that the Farsa works out. But onto the hands of Zero Volt, textbook wise, they have a slightly better draft. So let's see how the game works out because for now things are looking pretty good. But I believe we are into the land of dawn, ladies and gentlemen. So welcome to the first game of the day presented to you by Algambo Esports, and we will be having a lot of fun in this one. Let's go, let's go. Now again, both the teams are ready for the best of one series. So let's see. And crazily enough, Sarah, both the teams need positioning. So it's just gonna be the battle of position. You position well, you will be protected, you will be having a bit of a time. Okay, there you go. This is what I was talking about. Tigreal trying to drag you down. Yep, that's going to be a very early aggression coming in from Astralix Reaper, and they are definitely dealing as much damage as they possibly can. And that is actually looking well for them as well, because the more pressure they create in the early game is better for them, because they don't have a late game insurance against the Harith. So the momentum they create before the first two turtles is going to be actually defining the entire game for them. That's true. That's true. And on top of that, I am curious to see what kind of a dominance that they are going forward for, given the fact that there is no first blood yet. Now, Sky yet to become a level 4. That's going to be, I think, going to be a bit slow gank onto the top lane. So let's wait and watch how they will be trying to prioritize because it's just 20 seconds left. Yep, it's still very early to say how it goes, and the entire the game is going to defined on how the Harith farms up, and the way he farms is going to be the major challenge because he does have the escape skills, but end of the day the problem is going to be the mid laner, the Zacian ultimate, Fury of the Phoenix, how it lands onto the enemies, and then look at the Feathered Airstrike, though it's dealing a lot of damage onto the Zacian. Obviously, the Zacian is countered, considered a counter for the Farsa, but here, I believe in the early game, the Farsa is going to be,
more mobile choice. Yep. And welcome back to the game. That's going to be a failed tech charge altogether, but the stun's coming in from the turret, the Yasun Shin. And she is definitely trying to be escaping from that situation, both the Zacian as well as the Yasun Shin. But onto the bot side, a lot of pressure onto the tower itself. Absolutely a good domination coming in from the red side right now. And look at the instant replay. The Sora going in for the engaged, but I mean, they did it so well. They went in for the engage. They kind of failed at it, but then the red side just charged back. The tech charge was used defensively here, but I mean, end of the day, the blue team and the red team, they made it fairly equal, even though the goal lead is tending towards the red side for now. That's true. Like, look at them. Okay, once again, Zayden being targeted, looking quite low. That will be Wolfie for you, taking down the sky in that manner. But wait a minute, how is this one taking up 3 kills already on a killing spree? That is definitely crazy. Looks like Flicker will be blown out of by Huang, and on top of that, the lasting insanity comes in now in the manner that he gets interrupted and will be taken down. That's Tornado for you, but the turtle is up. Now it's gonna be how Sky trying to get ready for the turtle, because he's also a bit behind on his farm. Exactly so. Obviously, the red team, as we can see, is leading it out for now. And this team, look at the engage coming in. That's going to be an amazing ultimate coming in from the Yasun Shin, but then the Benedetta turns it around with the Petrify and the ultimate. Sora gets a kill up top in a 1v1. Like we said, the golden matchup, Sora is actually a very good pick. But here, look at the Farsa trying to create some pressure onto the Xborg, but unfortunately, the implosion comes in just a little too late for the Xborg to try and finish them off, and he will also have to be using his flicker just to escape, which means a lot of resource wasted, and the red team just gets the lot into their hands. Now that is definitely a good advantage on hands, that how you are piloting yourself in those team fights. Now this is really looking good, given the fact that taking down turtles will give you a bit of a goal, and putting down so pressure in the bottom lane. Edberg is not having his time. Look at that, Love Praga armor already blown up. He's getting interrupted. They come along as well, trying to come up with implosion, but Babu as well as Sky just gets interrupted by the Satan, just making sure that they are trying to get out as quickly as possible. Now that Sora also tries to jump in, I believe his position a bit crazy, trying to make sure that this YSS will be going down. Now looking quite low, existence to OP, make sure to take down members one by one. They go inside the turret, giving this Benedra a double kill, and possibly with this turret as well. Oh, okay, turret, no turret for that so far. It looks like another, Farsa's ultimate. It's just the finisher right here. So far looking quite good into the hands of Team Astral Reaper. They are able to pick up cues on how Zero Volt is coming up with the problems. They themselves, like position wise, I feel like they have to make sure to get it on very quickly as possible, because they are the ones losing turrets as of now. Exactly so, and I believe that the red team is definitely. At them, they are trying to gear up for fight very quickly. Like, these network issues are so hard to predict, but
Astrolix Reaper. 4,000 gold lead nearly. It's a 4.3, 3.3 to be exact. But right now, the gold lane is definitely a winning lane for them. But the side of Zero Volt, they need to find the Harriet some space if they want to come back into this game. That's true. That's true. They have given the space, but I feel like now is the time for the Harriet to jump in to the team fights very quickly. But they're okay. There you go. Huang all alone comes up with an implosion. Such a beautiful flow go Zetian with the Phoenix of Fury, just making sure. But at the behind of the scene, Sky just giving them the gold that they are needing, proceeding towards the mid lane as quickly as possible. But looks like Harriet will be coming into the team fights a little bit slow, given the fact that the Babu goes in. There you go. He almost makes it out alive, but no, it is not in his cards as of now. Sky, on the other hand, he's trying to evade that lasting insanity. Wolf all alone though, is it a good position? I feel like he's gonna get interrupted. But Sorin looking quite low. It's just one shuriken blade away, but now Wolfie with a basic attack takes it away. Definitely here. Oh, look at the Tigreal. A very smart escape coming in from him with the flicker. I was still using up the shadows. Doesn't really have a Sky Piercer onto him for the kill secure, but the Grog. Oh my goodness, the Grog just gets it with one passive hit and then the ultimate coming in all at the same time. Definitely Astrolix Reaper here showing why they are a bit of the superior team here. They have been dominating since game 1. The pressure being created does show up. The Harriet, as much as he would have liked to farm up, it hasn't been so visible. But so far, so good, I believe, for them, and it has been going smoothly enough for the teams. But the damage output from these teams, look at the burst, that wall was so smart. But then the Zacian will be using up the Fury of the Phoenix, but Benedetta will be there to finish her off. Implosion comes in on 2 people, but the Harriet doesn't really have the ultimate to try and escape. Babu will be taking up a lot of damage, but then the Hayabusa of the quad shadow kill finishes the Harriet off right away. Let's go look at them one by one. The turrets are falling down. Now this is going to be Astral Reaper's game, given that if they are on this phase now. Lord though, the first Lord, I have seen a lot of teams a bit of a mistake that they always go in for the Lord. They take it down for themselves and then go for a fight, and that fight doesn't work in favor. If that's the scenario we are looking here, I won't be surprised. But I do want to see, a different outcome coming in from both of the teams. But look at that. That's just a bit of a lot of damage coming in from Wolfie already. The map control that they needed, Astral Reaper has it. Exactly so. And right now, Zero Volt can't really find anything. The Harriet is as a 0-5-2. That's like the worst possible situation to be in for a Harriet. Like, in this late game phase already. It's late game considering the fact that there are practically no towers left. Only the tier 2 on towards the mid is their way of hope right now. And Astrolix Reaper are leaving no chances. The Benedetta and the Farsa are very on point with their ultimates. And it looks extremely promising for them to try and get those, damage outputs. And especially the Harriet and the Zacian are getting marked every single time. So obviously speaking, they are targeting down the correct heroes, and that is exactly why they have nearly 6,000 gold lead right now. Let's go. Let's see what will happen. The Lord's gonna march in very quickly. Now, with this Lord, I do believe Astral Reaper will be able to take down at least 1 inhibitor. With the first Lord, if you're able to take down 2 inhibitors, that just works out so well in your favor, and you do maintain that stats that you have already in your hands. So I do want to see them trying to synchronize the lane. Looks like the top and the bottom there's like a massive wave that's just gonna come in, while Tornado also trying to come up, but Wolf will be taken down. That is Zero Volt's time to shine. Look at that, they took down the main members, but Existence to OP also takes down the gold laner, so this is also a bit iffy on both the sides. Lord marching in, looks like the Holy Shield will be taken off. There is a bit of a chance that mid lane, but with how Sorin as well as YSS are moving around, I feel like that's a bit impossible as of now.
the Grok is even doing a good job of actually slow pushing the minions with his walls, and they have been used up pretty accurately every single time. And even the Hayabusa, the Sky actually, as far as I remember, is very good onto the Hayabusa. He has had a few titles before as well, and it kind of shows into his gameplay. 4-3 and almost at full build is going to be making up the BOD. Has the Sky Piercer now, so technically should be able to finish up at least the squishies before a team fight, even begins, try to get a pick off here and there. The Yesenshin does pick up on the BOD first though, but he has only 4 items while the Hayabusa has 5. So that kind of speaks about the goal difference as well, despite the Yesenshin and the Hayabusa being nearly at same goal. But ironically enough, the Grok has more farm as compared to the Farsa, while all the rest of the members of Team Zero Ball are lying in the 6 to 7k range, which is actually dragging them behind for now. That's true. And as you are in YSS, you need your farm to be quite high in compared to your enemy jungle. But looking at this score, he is trying to get there. He is very close, when I talk and try to compare it with Sky. But at the same time, there you go, a bit of a dash coming in from the Harith, just making sure he is positioning well. I already mentioned it, and that is going to be quite important. How these teams, position themselves, and how we have been seeing how Astral Reaper has been taking advantage of that. They're just deploying the Sora, the Benedetta as much as possible towards the back lanes, while the Tyrael is much focused on trying to repel the Grok. That's what you need to poke down that Grok, actually take him down before the team fight, because once the tech charge lands, you've got no way to escape it. Zacian and Harith are actually the 2 best picks against the Grok. You've got a lot of immunity, you've got a lot of range, and you've got a lot of poke. So I really doubt why it is not working out for them. And one of the major conditions, of course, is going to be the Benedetta as well as the Farsa and the Hayabusa at the same time. They have been poking down the Harith so many times, poor thing, that 6 deaths and only 2 assists, which means that he definitely does not have the farm which he would have wanted. Pressure is building up with how the minions are coming in, but at the same time, the Lord is also now with Lord is going to be going the absolute defense. They have to make sure to take down Luffy once again, and if they do manage to take him down, that's going to be absolute of a good defense that they could be able to. But let's wait and watch. Yep. As far as things go, the Lord is going to be charging down the bottom lane. The lanes are well synced this time. The Sora still has the Flicker and the Cloud Ultimate, and they would be looking for a possible engage once the minions are cleared up. Hayabusa as well looking for an opening on Zacian or the Harith if possible, just trying to mark down the backline as much as he can. Benedetta here is looking for a setup with her ultimate as well as the Petrify at the same time, but thankfully the Lord has been cleared out. Hayabusa emphasis out on the Shadow will be targeted down by Zacian's ultimate as well as the decision at the same time, but he has enough mobility to walk out of that situation. Oh, look at them trying to charge in. There you go, Tigreal getting pushed and pulled, a bit of damage onto him. Not into the coming from Astral Reaper, because they also are well aware that putting a lot of resources on the Tigreal, that just leaves them quite open and vulnerable. So they are gonna go in a bit of a pause and try to see if the members, okay, wait a minute, I do see Sky trying to go in, but Flicker will be popped off from this habit, just making sure that he won't be having the one more death on his hands. Other than that, Astral Reaper playing it quite slow. They know they have a bit of an advantage to take in with 1 minute left for the Lord. They are just going to wait it out, I feel, because they don't even need to engage at this point. The Farsa trying to match up with the Sora ultimate, but oh, there we go, an implosion along with the Fury of the Phoenix as well as the last insanity right onto the Sora, and Grog does manage to flicker out, but Sora could not. He does not have that much of resilience onto him. I think he does not have the top boost is going to be the main reason, but there we go, another Petrify comes in. Harith, they taking in quite some amount of damage, but there we go, the damage from the Farsa is actually
more insane than we thought. Tigreal trying to interrupt, but Wolfie will manage to find that kill onto the Assumption. One goes in to save another, but ends up dying instead of the another. What an irony in this situation. One for one, that is definitely looking quite good. But at the same note, there you go, instant replay coming in. How these members were trying to come up with a situation now. That was quite, a fight that we have just seen. But other than that, I think Wolfie is definitely a threat right there for Zero Volt, and they have to make sure to target him if they do get their opening that they are looking for. That's what. And for now, Red Team, they're looking very strong. Doesn't have to be any kind of issues for these people. And they are definitely not thinking about, forcing the tower. They're just gonna wait for the Lord. And they have the lead as well to do that. So technically speaking, they just need to sit and chill and sing down the minions is all they need to do here. Let's see. Now, is this the lot that's going to decide the fate of Zero Ball? This is a lot that they'll have to defend once more, trying to make sure to stay and try to capitalize. If Astralex Reaper makes a mistake, as of now, both of them both of the teams just trying to make sure that the lane does gets interrupted because Astral Reaper are really good on lane synchronization. And look at that, they did manage to bring in the mid, the top, as well as the bottom quickly as possible. That's what the Lord is going to be charging in now. Hayabusa does get the ultimate, but he's also quite low. Has to run back before damage. The implosion can be a good setup here if he manages to get it. Flickers in, but will get the implosion on only one person. High key, unfortunate. Benedetta, meanwhile, means to the back line. Uses of the Petrify. Doesn't have the CC immune anyways. And right now, trying to escape. Tech charge comes in onto 3 people. But Astralix Reaper, they kind of miss out on their synergy here. Wolfie gets taken down. 2 damage healers are out. Sora is getting targeted well, and he will be falling down too to the Harrod this time. Zero Volt, again, they pull off an amazing defense. The Hayabusa targeting the backline as much as possible, but can he escape is the question. I think he can. It's just a Hayabusa after all. Let's sure look at them. Not aim for the side of Astral Reaper. Look at them, there are quite a few members, and that is not working out. The more that they extend, I feel like the more the round that they had, they are losing at the same time. YSS, I do believe, is also farmed up, but now he needs to make sure to work it through with the Tigreal. Look at that size, make an appearance with the quad shadow, but looking like one more shot, and that is why it is for you. That takes it away. Tornado left all alone, but they know the backup's coming. Absolutely. So Zero Volt here might just be pulling off that amazing comeback we were talking about. Again, the Benedetta dives right into his own death. Sora here trying to reach the X-Borg, but the X-Borg will flicker out of that dangerous situation, managing to stay alive for another day. But right now, Astralix Reaper, what can they do to get their lead back? Or is Zero Volt really going to take this match away? That's going to be a fast slot coming in from their side. The damage from the Harith and the Zacian are definitely hitting hard right now, especially over the Grog, because the Grog is very vulnerable towards magic damage. As much as physical damage he has, he can't tolerate all those magical sparkles hitting him every now and then. But the lane advantage is still into the hands of Astralix Reaper, so maybe if they go in for a split strategy, it would be very useful for them. Let's see if they do or not. Now they'll have to come up. Okay, Sky looking quite down once again, but he has his immortality. But no, that was just not enough. Why is will be taking away a kill? A bit of a topic coming in from the tornado. Will be just making sure that Instinct will be losing his life. Wang all alone. He knows the Harith is there along with the flicker. 3-man knockup. That's looking quite good, but another person almost losing their immortality and almost their life. But flicker was there on such a right point, but Sorin though, he made such a good call that he did not go to the team fights. He is capitalizing on the turrets because he is well aware that the turrets is gonna give him that win that they were looking for. Exactly.
So Farsa again trying to clear out the minions with a better airstrike, and Yisun is the only one who is trying to, push forward. But oh no, the Sora kind of misses out onto that last dash, but definitely that's going to be a good amount of chopper coming in on point. Tigreal again tries to go in with the dash, but now the Grok is going to be caught out low. Yisun manages to finish him off. That sustain is not coming in any useful, but the holy burst coming in from the far south thanks to lightning chunk in Xborg. A man with an Athena gets taken down so easily. Okay, okay. Astral Reaper, this guy is bit, trying to navigate towards the back lanes, and he is failing to do so. So there's going to be a bit of a problem. Like Grok is definitely providing that space a bit later than how Sky wants it. So that is definitely proving a bit of a problem right there for this Hayabusa. So let's wait and watch how they are trying to spice up the stuff as quickly as possible. But other than that, Zero Volt is definitely looking good for a good comeback. Yep, they are looking very good indeed. A 4 versus 4, and the Lord coming up in 5 seconds. Who is going to take it out? Who is going to make the last mistake of this game? Both the teams have equal vision at the Lord. They've got their zones in. Hayabusa trying to poke out on the Tigreal, baits out his flicker, which is a very important resource being wasted. And he's walking into something very dangerous right now. The Yisun is right there for the backup, so technically it's fine for now. Harith as well in a vulnerable position. He gets spotted though. Benedetta already very, very low, will have to run off from that situation. Hayabusa trying to find the Harith, but he dashes away from the shadow. So technically, Zero Volt managed to gain their lead at the river area, but the Benedetta as well as the Tigreal both are going to be caught out low into this team fight. Let's go, let's go. I have a feeling that this is the Lord that both the teams is just gonna make or break. Huang looking quite low. He doesn't have his immortality, but he does get stopped up. Makes the implosion call. Walks with instinct along with the YSS. Wolfie in a very safe position, but no, that doesn't matter given the fact that Babu will be taken down into the front lane. Such a good call from Huang right there, but he has to try to make sure that he is surviving. Look at that, it's too OP on a chase for Huang, but oh, wait a minute, there you go. Freeze will be used up by the YSS. Members are an absolute wipeout. Zero Volt, they have done it. Are they going to go in for the Lord, or are they just going to, try to go towards the top lane? They can definitely try and just end this because it's like at least a 25 seconds onto the clock, and they've got the Harith, they've got the Yisun, they've got 3 cannon minions onto them. So obviously they should be going in for the Lord. I don't know what they would be waiting for, but look at that. Zero Ball pulling off absolutely something miraculous, but oh my god, this is going to be Astrolix Reaper throwing away their chances at a victory, and Zero Volt reigning supreme, pulling off a wonderful comeback despite being at a loss at the beginning. Crazy match indeed from both the sides. No, I wasn't expecting Zero Volt to, give such an amazing defense. They were the one team that did not have lords on their hands. The maximum amount of lords were there into the hands of Team Astral Reaper. Look at that instant replays coming up, and this is going to be one of the match highlights. How Astral Reaper were fighting back, trying to take down members as quickly as possible. But I feel like all the credit should definitely go to Instinct as well. His, Instinct as well as Huang, they made such quick decisions under pressure, which I really loved. That's what performing under pressure is going to be the main factor here. Astrolix Reaper, they got cornered towards the late game and they lost it out. Fortunately enough, Zero Volt didn't fumble, and I guess despite being at a 0-6-2 in the early game, coming up to a 4-6-11 from that kind of shows why Mr. Nari is at India number 25 Harith. So I guess props to him for that. But unfortunately,
I don't know what to say to Asterix Reaper. They were leading so well, but end of the day, it didn't work out for them, and Zero Vault just came out on top. That's true. And being the best of one series, you know this is going to be the result. You have to go home. And looks like a team Zero Volt will be pushing forward to the round number two. Oh, and with that, ladies and gentlemen, let's go for a short break. We'll be right back with the second matches because the fun's not over. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
Hello, ladies and gentlemen. Welcome back. You guys are watching the Elite 16 Screams here at Algambo Esports. Back again with the second match of the day. Now, this is going to be interesting one. And with interesting names, let me introduce you to the teams. It's going to be Ocean White versus Red Nose. Both of them with colors. So let's see how it goes. And as usual, I'm your caster PC and I'm joined by Sarah today. Hello, Sarah. What are we expecting today? Hello, welcome to Game 2 as introduced by Peachy, and these are very new names into the community. It's going to be Ocean White versus Red Rose. Ocean White, of course, has a few names which are kind of known in the, higher ranked scenes, but let's just say, oh no, sorry, it's Red Rose actually. And Red Rose have got Oh wait, okay. It's Ocean White after all. Ocean White, it's got Yafets, they've got Surma, and they are pretty well-known players. And we'll see how it works out for them. Red Rose, meanwhile, they've started on with the bans, and it's going to be a Sora first ban. So maybe we see the Jushin man, the Grok, and then the God of Kacha or Kalia or Hilda ban coming in from the red side. And yeah, it's gonna be a Jushin after all. Yep, it is, a little bit of technical glitches that happen, but covering up for that, we have got Red Rose here waiting out for their second ban here. They could just take out the Garut Kacha, they could take out something onto the mid lane, maybe the Eve or the Farsa, and that would kind of enable them to pick up the Yisun first pick, which is a very good flex pick coming in for the jungle as well as gold lane. Speechy for back, take it over. And back again with these kind of bands that is really looking good. I feel like onto the last game, Sura being open, I think the teams are taking quite an inspiration of banning up the Sora, so that's gonna be looking quite good. But other than that, the Fredrin as expected, the Leo mod, Freya. I feel like today we are not gonna see any Freya being open. Yep, no Freya's after all. She has been a beast on towards the goal lane, just lashing away onto the back line. And the major advantage she has is her ultimate. But let's just say it's a bit difficult for them after all to play against the Freya, so they're going to take it away and neither pick it themselves. Not so much of a comfort. Let's not give it to the enemy. Let's just ban it away. And while we were talking about that, we see the Leomord and Fredrin getting taken out too. That's going to be instant Hilda, Roam, Lock-in from Red Rose, while Ocean White loves their CC. They're going to take it up. They can still flex. Oh no, that's not going to be a flex. I mean, it could still be a flex, but YS's goal along with CCEXP is a bit of a squishy draft. So let's see how they play around those two heroes. Let's see now again. I feel like this CC would be going towards the goal lane. They trying to come up with a fighter goal lane, but other than that, Red Rose also not backing down, picks up such good heroes such as the Yuzhong and the Eve. Now I do have to give credits for Hilda as well. Now Hilda on the roam, I feel like it's just quite early on. Like you don't know what kind of a draft that the team Ocean White could go for, and you picking up a Hilda is it's just like 50-50 for me. That's what the Ascension and the Kalia combo is again very good that they have been locking in on the Manu Shankar and the Tsunami Slam. It goes so perfectly together. But Red Rose have got a decent form too. They can use the RWM to lock the members down while Yuzhong dives in towards the backline and Hilda just tries to poke away and then burst away with the ult once they get caught into the RWM. But along with the RWM, they need something to complement that. Quite possibly they could choose maybe a Baxia into the jungle, maybe a Guinevere into the jungle. If it or best comes to best, they could try the Leomord, but that's banned out. So I guess they're left with a few options here. Maybe the Suyo, that's a decent choice.
That's definitely another good one that they could go ahead for. But let's wait and watch on how which heroes that they are comfortable as well. So other than that, as you mentioned, Sarah, the Bakshia, I feel like the Bakshia pick could work out so well. So let's wait if they go for that. Once again, as expected, the Farsa coming into the play. I feel like we are gonna see a lot of Farsas today. Is gonna have like she already has a second streak today with the first game already coming up with the Farsa, second game as well. But I have to say the same about the Hayabusa though. That is definitely interesting coming in from Red Rose and to actually get a good front laner. What are Ocean White going against? That too against the usual. Absolutely. So they have the Farsa along with the Kaylee. I love Ocean White's draft. It is so, familiar to me in a way. But Red Rose, of course, Hayabusa, and the Lapu Lapu. Very good picks against the Yasunshin we saw in the previous game. Hayabusa working out against the Yasunshin, except for the fact that the late game was a complete throw. But other than that, I feel like Red Rose have got a decent draft too, but okay, that is going to be a game changer. 3 heroes to shield you, and then nobody to melt you down except for a very late game lead. Ocean White absolutely played with Red Rose's mind here. Okay, I mean, putting that hero for the last, that was just such a good decision. Now, on top of that, it's gonna be Esme versus the Lapu Lapu, CC versus the usual. Mid lanes, both the sides is strong. Every single lane, it's just such good heroes. Now, the only part that they have to play is the execution. Both of the teams, they'll have to try and see how to get each other as quickly as possible and in a way that you are not losing a lot as well. So, curious to know what will happen. And with that, ladies and gentlemen, into the ladder down. Welcome, game 2 for day 1, and we will be seeing some fun games here. Definitely, the textbook wise draft is better for Ocean White, but let's see what Comfort does. Red Rose, they do look decent, but the Yuzhong seems to be facing a bit of network issues, so the Esme will have a bit of free farming, at least for the first minute, which is not very good and a major disadvantage, even, I would say. But let's see how they manage to come back from that. But other than that, early poke coming in, Revitalize will be used up already by the Hilda. So that is something they need to watch out for. Let's see. Let's see. Now, Wine also has to make sure that he is getting the max amount of, you know, damage as well as the farm into his hands or into the middle lane. A bit of a stun coming in for this Hilda. They are just trying to make sure to get this Hilda very far away from YSS. Exactly. So there was a try to get it engaged, but they're gonna do it late. And I like the strategy Ocean White is going in for. They're getting out the impression that they are not taking their buffs and instead they're stealing away Hayabusa's jungle and will go to their own red a bit late. Which, I mean, it does kind of hinder the fact that the Ascension will be reaching the level 4 slightly later, but it kind of works out in the long run because they just want to match it up, the level 4 timing with the turtle timing, which is a very decent recent strategy that has been brought up by the players. That's true. So let's wait and watch how these members will be trying to navigate towards the first turtle of this match. Now, the first turtle will be quite important for the YSS, but at the same time, Red Rose will be trying to come up with an advantage that they have. The Hayabusa was just getting attacked, might be the first blood, and yes, that's Surma Whitey coming up with a double kill. Now, there you go. It's gonna be an easy turtle for Ocean White. Very easy turtle indeed. That's the early game we were talking about. Farsa being the one to secure those 2 kills means she's just going to get the lightning trunk in and going on much faster than expected. And she would be, just dominating the entire map. Yasunshin already from the early game onwards dealing quite a lot of damage, gets the double, and now the Hayabusa doesn't have any kind of dash, and he will be able to get the triple as well. A major early game lead for Ocean White here.
Let's see. Let's see. Now these members are moving and quite fast. Are coming in from the side of Team Ocean White. Look at them. 5 kills already. They're just like trying to make sure that they have that absolute dominance that they are looking for. And on top of that, going for invades that early on also says that they are quite prepared to make sure this Hayabusa doesn't get any farm. There you go, A3 will be taken down. But at the same moment, usual, is this a right call given the fact that you don't have enough items on your hands, but you can come up with a bit of help of your passive? But now, looks like Farsa will be just making sure that you will be out of the way. Definitely enough, just zoning away every single person you possibly can while your team tries to take down the objectives. This is not a good early game for the side of Red Rose, definitely, and they needed all the early they could find because Ocean Wide have enough late game. They've got a YSS, they've got a Farsa, they've got a CC. So technically speaking, there we go. The Hayabusa definitely will get the quad shadow kill. That was an easy one, but overextension I would say from the side of Ocean Wide, and even the Esmeralda could be taken. But that's a smart flicker coming in from her, and she will be able to just run out from that situation. But no, she gets a kill. Oh, usual. Though I feel like he just overstayed a bit. There you go, onto the top lane as well. The members are just wiping out the gold shield as quickly as possible. Now I feel like onto the bottom lane as well, that bit of a delay from the Yuzhong just gave out so much resources into the hands of Esmeralda, so that's gonna be a bit of a pause for that. But look at that, they'll have to make sure to get this turtle as well. Exactly. So again, it should be a pretty free turtle for the side of Ocean Wide. Esmeralda and Kalia will be zoning people away, and the CC is there as well. So a good 5v5 would be coming in. And look at the damage coming in onto the Yi. She will get taken down. And again, there we go. That's gonna be Hilda going in for an engage. But the CC zoning away a Lapu Lapu all by herself. Now that is something new we don't get to see every day, but we get to see it now. And the damage on the Yi Sun-Shin absolutely wild as he bursts down that Lapu along with CC's health just under the tier 1. Crazy match coming up from these teams. Look at them completely shutting down Hayabusa's farm, making sure Hilda doesn't have the space to just run as well. So this is definitely crazy coming in from the Ocean Wide. Look at them, unstoppable, picked up by Surma. They are not stopping, and on top of that, Wine is pretty much farmed. He got that snowball that he's looking for as a YSS. He got it, and there you go into the bottom lane. One more kill will be made. Kalea comes up with the Tsunami Slam, picks up one. That's going to be the Hayabusa onto the topping block. Next, Ace looking quite in the danger zone as well. I believe he should be just going back to the other lane just to farm up. So, Red Rose and Ocean Wide. What is going to be the outcome? And right now I can say it's a 95% win chance for Team Ocean Wide. And that is also mainly because of the reason that we have been seeing so far. This Mountain Shocker and then the Kalia trying to go in every single time. Mountain Shocker will get missed this time. A good map awareness coming in from the Yashin, but they won't commit to it fully. And instead, they're just going to wait it out for the... I mean, they don't even need to wait out for the Lord because it's just 6 minutes and 45 seconds. They could take it away and the Lord would still be up by the 8 minute and 40-second mark. For now, it's looking pretty good for them. Even the goal lead is 9,000 in their favor. 9.2k, yeah. So... I mean, I don't know. What can Red Rose do here? They don't have any kind of late game to take down this Yusunchin, Farsa, and CC. Oh, they love to, capitalize on the mistakes that Ocean White would be making, but Ocean White really not showing any signs of it. Look at that, Tsunami Slam coming up for this Hayabusa once again, will be taken down. They're trying to go in for death this time around, looking quite low. I don't think the Hilda should just make that call anymore, given the fact that there is Yuzhong trying to fight it out, but that is not their area as of now. Exactly, so 2 members down. Kalia gets a Tsunami Slam all over again. Wine finishes Ace of mid-air. That's the lead they have.
right now, and it's just getting higher and higher. 19-1. Is this a 10-minute end game which we will be able to see, or will it go after the 10-minute game is going to be the question? Because I find things very difficult here for the side of Red Rose if they want to try and come back. That's true. It's gonna be a bit iffy from both the sides. Look at them; they're losing turrets one by one. They'll have to make sure that these members are on a same plane as well. They try to give Hayabusa the space, but the Hayabusa gets constantly getting targeted. It's just not it. 1 for 19 is the score as of now. But there you go, bottom lane, three members against one. Lapu Lapu. Oh my god, that was crazy coming in as of now. They are lacking those items, they are lacking the gold, and yet they are, accepting the invitation of Ocean White for a fight. It's an invitation, all right, but in a 4v5 situation with so less farm, you don't want to go ahead for a fight. All the tower shields have been bursted off, and then there we go, another tsunami slam. RWM comes in too, but even Hilda will get bursted right away. Yuzhong will be in midair trying to defend that mid inhibitor because they know how important it is, but Ocean White, smartly enough, they back off to take that Lord, which is going to be spawning in another 1 second. And now look at the goal difference. It's at a whopping 14,000. I think that's the highest we have ever seen in any tournament so far. That's true. Look at them. They are not, giving a bit of a gap as well for the other side to capitalize it. So this is going to be crazy. I would be surprised though if they are able to end this game with just one Lord, because compared to the first game, I think this is definitely going very quickly. Exactly so, and that's gonna be an instant burst on the Lord. Another tsunami slam, and again that's gonna be a kill out of the Yuzhong. I told you these players are very good rankers, and I think eventually the rank experience is paying off. And Lapu Lapu tries to get a stun onto the Barca, but instant reflex there, she's gonna be backing up. Kelia definitely healing her team as much as she possibly can. Yasunshin went in a little too deep for her comfort. Esmeralda and C still compensated for it by taking down the Hayabusa. 3 members are down. Surma will finish off the last one. Another tsunami slam to drag Ace out of that tower, but the turret damage is enough to finish him off. Yurang trying to hold it out solo. The Lord is hitting the base, bro. You gotta come defend your base. Hello, you get shut down, but it's gonna be enough is the question. It's not. Team Ocean by take away a very dominating under 12-minute win for themselves. Crazy match with one Lord, and they just said that is just enough for them to end this match. No space whatsoever for the Hayabusa, for the Hilda, even for the Eve to make a play. Despite picking such good picks, they have completely made sure the full stop will be just the answer for the Red Rose. Look at them. The stuns were coming up perfectly, and on top of that, that area, how much the Parsa covered was just, cherry on top for Ocean White. Absolutely. These early engages, the pressure and the momentum being created right from before the first hurdle is what, like that first early game burst coming in from the Farsa, the double kill, and then the Yasunshin getting the triple. Of course, the Killia gets the, MVP. She deserves it so much. Her engages were on point. The fleeting time just allowed her to get those ultimates right on point, like every 12, 15, max 20 seconds, right from the early game itself. And even the far side, the Yasunshin did a wonderful job of zoning people away. And the Yasunshin was just extraordinary while taking down the objective. He wasn't being, like, no way could zone him away. Even the Hilda and Yuzhong couldn't. So that made all the difference that could be possible. I feel bad for Lapu Lapu though. Poor thing dealt only 7,000 damage. But hey, that's gonna be it for game number 2. We will be taking a short break and moving towards game number 3. I see. Desperation. I come to crush my enemies. I reap. The strong rise. The weak crumble.
My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to game number 3 for the Elite 16 scrims presented to you by Algambo Esports. This is just day 1, and we have got, I think, 16 amazing teams with us. And we already saw 2 of them move to the round of 8. Unfortunately, the first game was drawn by Astrolix Reports, and the second game was a complete domination coming at Revolution Light. Right now, we are into game 3, and this will be me, Sarah, on the costume desk alongside Debbie. So, Debbie, hello and welcome. Yep. Yeah, this is a good welcoming, man. Now we're going to be directly heading into the drafting phase. It's been a long while, but Mystic Esports will be going against MYT in this best of 1 series. A very, very good game ahead of them. So Mystic Esports now, they have that first pick. So it's a very good choice that they ban away the Sora. But you know what, Sarah? I think the Sora is not really that of a bannable hero these days because a lot of counterable heroes can be picked away against him. But you know what? They cannot really take the chances. But interesting choice of ban from MYT though. The first are taken away. Swat, I think these are just comfort bans coming in from these 2 teams. Look at Mystic Esports having the first pick and still banning out on the production. Now that is something so new. I feel like, so obviously they need to think this out on what they want to pick up here. I think Jushin. Oh wait, this looks like a red sort band though. But nevertheless, I think they don't really want to go for the heroes that can be a problem for their side. So MYT, there are a lot of options to go for here. Oh wow, Lancelot. Maybe this is a target ban, especially again because I've never seen the Lancelot being banned in this current patch. Because it's usually ignored. It's like a last option of a pick that you usually want to go for, but understandable. So Mystic Esports, what can they ban here though? Let's see what they do. I mean, I wouldn't be surprised if they ban out the Barak or Hilda themselves, but okay, the carry. I mean, yeah, this is now justified because the carry and Claude are like, what do we say? The King Kong versus Keldra. The King Kong versus Ivy of the bull. But now that's a matchup we like to see. And obviously, that's a very bannable hero. MYT might take out the Claude themselves as we speak. If that doesn't happen, they're going to take out the Ascension instant. So 2 very strong junglers have been taken out. But that does mean
leave the Leomord, Guinevere, Baxia, Lucas, Suyo, all options Oh, stay Suyo. open. Yeah, and the Grok prospect, it works out if you're very, very comfortable and have a Eve or something to back you up. But other than that, MYT can actually decide to counter that with the Khalid and Eve for themselves. Maybe even try for that constant magic shred. That's what you're trying to look for here most of the time when you see a Grog, but Z10 is the specialty that they want to go for, but a safe choice of hero. I mean, the clock could come true here actually, because if they did not pick it away, Mystic Esports would be the one taking it out themselves either way. But no, yeah, this is the priority that the clock usually have right now, but I don't know, the Z10 is a bit too rust, but then again, it's a very, very good hero when you want to control the mid lane, especially now that it have a good clearance here. So Mystic Esports, they wanted to go for the Yuzhong and the Hayabusa, instantly locked it out so that they'll be able to counter out onto the G10 right now. Very understandable, but a bit too early. I like the Yuzhong and the Grok combination though, because for a Yuzhong you kind of need another good setter that can actually follow you up and be that Jonah that you really wanted to be here. So MYT though, they have lots of options that you talked about. I feel like the Khalid would be the best choice here though. Exactly. The Khalid is a very, very good choice, along with the Fredrin as well. I mean, you can just go in for the constant poke damage. The Fredrin can back you up, and then the Zacian is going to poke you as well. The Claude is going to get so much space, and there's only one knockup, that's the tech charge, and the Grok is always going to try and mark down the backline, and the Claude can just BMI his way out of that. So technically speaking, Mystic Esports needs to think this through. They are kind of, having a solid lineup though for MYT. The first picks are definitely up to the par here. But I'm afraid they might be lacking a bit onto the Magic department if they do not go for the Magic XP laner. They still have options to go for the Khalid again into the roam, which is going to be a very, very valuable option here. But hey, they removed out another marksman. That's Brody. I've never seen that hero in a while, but it can be one of the comfort for the hands of Mystic Esports, so this is very understandable. And the Minotaur ban, this is a very good setup, I would say, because Minotaur, he can actually be a good follow-up together period with the Fredrin too. And now the Freya ban, finally the ban's making sense onto the Freya here. So Mystic, they're kind of losing out onto a lot of gold laner. They might be left only with the Granger here at this point. Exactly. So, and I mean, they can't really pick up a marksman in this draft either because the carry has been taken out. The Claude is already picked up. So what is their option? They are left with the quite possibly maybe only the Lapu Lapu. The Freya has been taken down too. Sora is out as well. So the Lapu is one of the only choices, and at best an Esmeralda or Suyo towards the goal lane. But those picks will suffer a lot against, the Esmeralda will suffer against the Claude, and the Suyo will suffer against the Zacian as well as Fredrin. So let's see what happens in this situation. Minotaur in a class ban, I feel that is definitely not something we will be seeing in tournaments, at least for now. But here we go. This is a scrims after all, and practice makes perfect. So I believe they do not want to give any comfort picks to MYT. And as predicted from the very start of the draft, that's finally a Khalid. I was actually surprised that Mythic Esports, they weren't actually banning out to the Khalid here, because I feel like they could literally handle onto the Atlas because of the immunity that the Grog can have it passive. But anyway, I think they really do not want to miss out, to lose out onto the mid lane here. So they need a very solid hero. But then again, MYT, they banned away the far side already, which is the best choice that they could go for here right now. And they are going to be lacking out a bit onto the marksman as well. So if they want to go for the Kimi, I do not really have the complaint. But then again, Kimi against a Claude usually struggles, so that can be a very highly bad option here. But hey, at least mid lane, something we don't usually see in Moscow. Let's see what happens. And Vachi will definitely go in for the Khalid. We have been talking about the Khalid for so long, and that's just a very standard pick against the Grok as well. Even works against. Oh wait a minute. That's it. Yeah, exactly. Okay. Something's cooking, Alice man. Mid, bro. Alice Mid. And you are competing against a Zacian who can actually
like shred you up. Right. It's just the glowing one. Moscow still okay, but against Fredrin and Khalid and the Yeah. I don't know how that's gonna work out, but if it does, it does. But I feel a little skeptical about Mystics draft. But MYT, Yeah. very solid, very amazing draft for him. Mm. Very solid up to the very end here, I would say, because the glue kind of does well when you are kind of against tanky from honest here, but I don't really see the factor that the glue can bring here. But then again, he can be very useful as a distractor, and that kind of makes the Khalid, give that leeway to Khalid to build out at least one damage items, and that can eventually work out well for them because they also have a utility into the mid lane side. Like I mentioned, the lack of magic damage department will be seen on both of the sides here, especially into the early phases of the game. But then the Z10, when it comes to the late part of the game, her poke is definitely gonna be something that is gonna be mindful of. And then again, onto the other side, the Elise is gonna be the only magic damage dealing potential that they have right now, and she is not really a burst hero, so they're kind of evening it out. But then the HP based damage that Elise deals against the Fredrin might eventually be doing them a big favor. All troops deployed. That's exactly what. And welcome to the land of dawn, ladies and gentlemen. Well, okay, that's a very, very, very conflicting name coming in from Mystic Esports. We will not be talking about that. But onto the side of MYT, the Millennia. I feel like I know her from somewhere, but then again, two strong drafts. MYT definitely leading it textbook-wise with the Blue Roam. Very new, but not so unusual. I know a few teams who do that, but yeah, me too. it works pretty well for them, and it actually compensates for the lack of magic damage because they should have ultimate, and Blue is just gonna be adding to the magic damage defense reduction that she does with her second skill. So for now, it's looking pretty good for MYT. All they need to do is hold it out in the early game and just wait for the Claude to burst in, starting with the THS from the 4-minute or 5-minute mark. That's what I'm actually waiting for here, but I'm afraid that the mini goals might be eventually. Oh wait, that's a lot of aggression. Look at that. Yeah, very good aggression indeed, but you do not want to be getting that aggressive right into the early game. And are we seeing a Khalid roam? Khalid EXP? XP. Okay. Yeah. I mean, Mercy is one of the only players I've seen play that. Yeah. Now it's going to be MYT. These new teams have got some real surprises for us, ladies and gentlemen. Do watch out for the qualifiers coming our way. It's going to be more fun than the league stage, I promise you that. But for now, talking about this game, Hayabusa picks up a kill already onto the Claude up in the top lane. So that's a good equalizer. And now with the turtle coming up, Mystic Esports should be able to take it, unless, of course, the Fredrin just stuns the Hayabusa on this path. That's the thing that they're actually waiting for here. Level 4 already for the Elise right now. He might be able to go for the start Yagami. He does have the ultimate here, so look at that. Phoenix coming through, and Bender will be able to take out onto the turtle here. No fight just yet. The dragon coming through as well, though. Yep, that's been engaged, coming in. Alice definitely trying to mark down the blue. Last to run away, but the dragon will be able to secure the kill, but Khalid gets a revenge onto the Alice. Station has to flicker out. The passive from the dragon is hitting quite hard, but Khalid definitely dealing quite some amount of damage, has to flicker out as well. Frederick tried to get some engage on, but he is going to be caught out quite low, and despite Grok not being level 4, that dragon definitely changed the course of that team fight. That's what, this is the presence of the dragon that you usually talked about here. We can see here with the engages coming through, he was able to find out a bit of a compensation here. The Khalid unable to do anything in that department here because of the lack of damage that he has so far right now. But yeah, he baited out a lot of resources, and that's gonna be in favor when they wanna go for another kind of fight here. But the fact that Mythic Esports, especially Nox, can retreat, actually got a kill onto Sanemi, kind of says a lot. But hey, a bit of a kill onto the bot lane side. That is a solo kill, by the way, Dragon. Yeah, Sensei will not be living to see another day, but that's gonna be a settled landing. Look at the ton. Yep, and the
gonna be a ton of praises. Wrath locks and deals quite a lot of damage to the wow. She manages to heal it all up. Claude still doesn't have the blazing to wear the vengeance. Should it be enough? Would it be enough is the question. It's not. Alice manages to escape. Millennia manages to take down the Moskov. Very well done coming in from her, but the Fredrin is gonna be caught up pretty low. Dragon comes into clutch, finishes off the kill onto Bedrock, gets Petrify onto the glue, and she will get taken down too. That's what. Yep, the Zacian stays alive though. It's definitely good enough that the Zayden is, that's down, because of course you kind of need a bit of a farm so that you'll be the poking hero that you are picked to be here. But that big engage onto Elise was, definitely necessary, but then again, they weren't able to find any compensation here, and the team fight stayed long enough for the Dragon to arrive. Sensei was able to do here, but bot lane. Yep, that's gonna be a kill onto the Khalid, I believe. What works once doesn't work twice is kind of the message these people are giving. And look at the Hayabusa just going on towards the backline. This is why we say sometimes comfort matters a little more than meta, and that's what Mr. Esports are showing right now. Goal lead still tending towards the hands of MYT, but a Praises Rat gonna be coming in. Gloom gets taken down. Alice gets the throne of Ruben onto the Fredrin, and there's gonna be an instant kill on two of them. And again, Mystic Esports showing their dominance. That was a good dominance, a good compensation that they can find right now. SOD perfect landing, and he was able to get another kill also, so that's definitely going to be a powerful early game for HP the Greatest here top lane. There might be a bit of an engage here wall coming through, but they won't be able to engage onto him because of course that is a core, and he does have the BMI and the flicker together, and you cannot really go all in on him at that point of a time. But now their focus might actually shift a little bit onto the gold lane side here yet again, but then they won't be able to find the fights that they are looking for here, because mid lane is what they should actually protect out. But Yuan is actually taking a lot of damage from the allies because that is an XP damage hero. It will be dependent on it as well. But Shadow landing, will he go in though? Commit out. Tech tries to escape from the poor Brock, and even the Moskov is getting countered so bad. Like he doesn't have the range, while the Zacian, the Claude, they have got so much of range. And look at the Dragon again coming in, going in. Whoa. Almost immediately. Alice gets the Fredrin, and Yuzhong definitely trying to mark down the Zacian as well as the Claude here. And the Khalid comes into clutch though, and that's going to be a Fury of the Phoenix. And Claude flickers in, gets the kill. That's a 3-man tech charge coming in too. Moskov trying to get some damage output here, but the Khalid did the more damage as compared. Moskov dashes out from the last sliver of HP and manages to keep the hopes alive for his team. That is the triggering of the lethal ignitions that he bring onto the table here. But what a good engage coming through onto the mid lane side for Yagami here. He was able to go in, but then the Dragon came into the later part of the game, later part of the fight, and then he was able to find a kill or so. But then again, the turnabout happened. The marksman is the sole survivor. Claude died. Tsunami did not survive there. So basically that team fight might be eventually in favor for the side of Mystic Esports here, but the interesting choice of a build coming through from the Grok right now. He is onto the Thunder Belt. You don't usually see a go onto the Thunder Belt these days, but then again, they might want to prioritize a little bit more onto the damage. It can work well, but Shadow Kill mid lane will not be finding anything just yet, but the turtle is already up. No ultimate for the Hayabusa here. He does have the retribution though, and he is same level with the Fredrin as well, so they can try to go for the contest. Absolutely so. And for now, the red team tech charge coming in as well, but the Grog is going to finish off the Fredrin. Khalid takes down Moskov meanwhile, but now the Khalid and Claude, they are just fighting amongst themselves. Khalid has to run away, but there we go. The Al is definitely eating a lot from the Blues goose, and that's one of the reasons the team fights have been sustaining up for so long. 3 versus 1 trade, while I believe that turtle the turtle was secured by the teams, and there the Throne of Ruin was the main deciding factor. Fredrin got the turtle, but end of the day he got so locked in place that he just got taken down almost instantly from that tech charge. Yuzhong came in the punch as well, targeting on the backline, and overall Mystic Esports definitely have a better trade. The way that they were layering onto the crowd control that they have so far for the side of Mystic,
Esports is definitely on point here because they went for the Zone of Ruin first, and then comes the Dragon, and then comes the follow-up tech charge as well. It can be the other way around, but they did not really go for the excessive engages. They go for the perfect timing here. On paper, this kind of lineup would not be actually working out well, but they are doing so good here. Flicker already wasted on Melania here, so she will not be having the flicker for another 2 minutes of the game, so she will be quite vulnerable without the passive as well, which is going to be holding on to for so long. The Lord is what they are actually waiting for here. 30 seconds is what they have here. So far, not much of a damage coming through yet for Tsunami onto the club, but there might be something here though. Definitely, Moscow is definitely melting now. The tech Wow. comes into clutch. Who would have expected these kind of gameplays coming in from those kind of picks? But like we mentioned, comfort over meta, and we have been seeing Oh my god. every single time. The Glue definitely trying to do something here, but what's he gonna do against an Alice? She's just gonna be getting full HP every single time she goes in. Vengeance comes into clutch. Claude is gonna be taken in with quite a amount of damage, goes down half HP, has to back off, while Lujal will be pushing down the bottom lane for a slow push with his minions, while the rest of his team goes in for the Lord. They can go for the Lord directly here because they have a Moskov who can actually bond it out though. But oh no, what was the on? Oh man, that doesn't look good. No, that doesn't look good at all. I don't know why he went in a 1v4 kind of situation. Or They should have just waited it out, and then they lost the vengeance from the Alice as well. Alice used up the ultimate too. So technically speaking, a lot of resources already used up into that team by now. Hayabusa doesn't have that. He doesn't have the ultimate either. He's gonna be caught out in the middle of 4 people, and goodbye Hayabusa. yeah, that was actually a bit of a throw coming through from the side of Mystic Esport here. And then a Sky Piercer into the hands of Nux. Yeah, definitely not going to be working out if he's dead. But the Lord is going to be up in the perfect timing for MYT here. But the Dragon is still there with the Petrify. That's gonna be an engage, alright. Fury of the Phoenix is gonna come in, but the damage is not gonna be enough. Wow. There's a Petrify. The Yu Zhang towards the back line, just doing God's work here, while Moskov takes down a Claude as well as the Glue. Glue managed to take down one Alice, but now the minions are gonna be charging on the mid lane. They have got 2 strong waves, a double cannon, and the inhibitor do not have their shields. So definitely they can push forward with those minions here. Look at the replay. The Alice went in working the Yu Zhang, just targeted the back line as much as he could. Got the shield out from Zacian from his ultimate, targeted on the Fredrin, came back for the Zacian. Now the base is gonna be caught out pretty low. Though oh no, the Moscow went back in. Now he's gonna be caught out, and goodbye Moscow this time. Well, that is not really a good scenario for them to come through against it because they could have avoided being dead. The inhibitor was enough. Take the Lord and end the game. That's gonna be the name. But they are unable to do so because they have a neck for overstaying. But onto the other side, I'm pretty sure that this will be a good sign for the side of MYT to take on to the Lord. Level 11 for both of the jungles here, so this can be a perfect contest coming through as well. This time around, Yagami though, he is going in. Indeed, and Alice will be down the Lord. He steals it away. Hayabusa takes a kill onto Nemo and Bender as they are being targeted down. And right now, Mystic Esports just completely turning the tides around despite losing their marksman just a few minutes ago. And now they have a very strong 10-minute wave coming in. They are going in for a little bit of their own fun and banter, and I think this is the first time you're able to see the game chat message time, but there we go. That's gonna be a very good end coming into this game, and Mystic Esports with an amazing comeback. Yeah, amazing comeback with at least mid lane. You know, I don't have anything against at least. I love XP laner heroes, man. Come on. But then again, a mid lane at least is not something you really have to expect because you might want a bit of a burst into the mid lane side and try to go for the damages first and then try to control onto the mid lane here. But I think it played for Sensei, for not Sensei, but Yagami. Yeah, he played it so well with the brave smite that he have. He was able to rotate around very faster with the Crimson Beam too, and then the damages and most of the initiations has been done by him, and the follow-up is always good. It's always good coming through onto the XP lane side as well, and they did not really need to go for those
passive plays when they have this kind of combination here as well. Look at the team fight so long that it was actually good time for Sensei to come through and get out those damages, because that is a Yuzong we are talking about, and he did so well with the rotation as well. Even though Nemo Uchiha was able to get out the damages, I think he sometimes is a tad bit too late, because he did not really want to do that on the Khalid. The Khalid is a fast moving hero with the passive. You should be able to out rotate onto the Yuzong, but he wasn't able to do that because the Yuzong was just good enough to try to have a good rotation as well. Even here, this initiation being done by Yagami was perfectly well done, and this follow up and the amount of times that they were trying to focus onto the backlines was definitely amazingly well done. Absolutely so. And while that happened, the MVP deserved for that Grok. He just did so many amazing setups, and even for the side of MYT, they did have, the decent setup coming in from the Glue as well as the Khalid, but they just lacked in terms of execution. So overall, Mystic Esports definitely did an amazing job. We talked about the Ali's pick being very niche towards the mid lane, but look at the highest. It's unbelievable of sorts. But hey, Debbie, that's gonna be it for game number 3, and we will be taking a short break before coming back with game 4. I see. Desperation. I come to crush my enemies. I reap. The strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall meet. Desperation. I come to crush my enemies. I reap. The strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall meet. Desperation. I come to crush my enemies. I reap. The strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall meet.
Desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall meet. Hello and welcome back, ladies and gentlemen, once again into the Algambo Esports presenting the Elite 16 Scrims. And as you all know, we are already in for the fourth game tonight. It's going to be between Team 7 IC Emporium versus Nexus. But hey, where are my manners? I need to introduce myself. I'm Shinryu. I'll be joining in the decks alongside Sarah, who has already been present. So Sarah, just give me a rundown. What is happening or what are we following for this game too? Let's just say the previous three games have been like a really amazing showdown between all the six teams. The first game was actually the best, I feel, where one of the teams, oh no, whatever. The Astrolix Reaper, It's okay. yes. Yeah, yeah. Astrolix Reaper. Astral Reaper, They yeah. were leading for so long, but then the enemies, they just pulled off an amazing comeback. Zero Oh. Volt, they did so well. 26 minutes game, and they managed to win it out despite their early game goal laner being 0-6-2, and then he went on to a 4-6-11. So huge comeback there. Second game, Oceanwide, they just did a one-sided domination from themselves, and third game too, I felt like it was one-sided as well. So technically speaking, the judging from the pattern, if we go for comeback, domination, the fourth game should be a comeback kind of matchmaking. But let's see, Nexus has been in the scene for a while 7 IC Emporium, they are a bit new. So we will be seeing a fun game there. Absolutely. I mean, let's just keep one thing between us and the audience as well. Let's not judge these teams based on the top level teams, the mythic leaderboard, the elite leaderboard teams, because a lot of the times there are many emerging teams that are coming out, and these are the opportunities for these players, these teams to actually come and show up their talents, right? So don't judge, don't be too hard on them based on the drafts, based on their gameplay, because they are also trying to learn and trying to get to the point where they can compete into the bigger tournaments that are actually around, right, Sarah? And when we talk about the bigger tournaments, we're talking about one of the biggest for sure. But hey, let's go back to the draft here. Looking at the bans, Nexus Esports, they're definitely taking down a lot of the roamers, making sure that their jungle or their basically the setup potential or the pick-off potential is quite off from Team 7 IC Emporium, whereas 7 IC Emporium, I would say they're just going for the usual bans, which we look at most often, right? Yep, those are just standard bans. The Sora, I feel, is not that much of a ban-worthy hero. Definitely works out if the user is good, but doesn't really deserve a ban so early on. But then again, it's probably a respect ban towards Nexus. They have been playing it out quite well. Of course, Freya was the goal lane, not a hero you want to give away. Jushin is just a permanent ban. You're never gonna see her in any tournament whatsoever. Nexus, meanwhile, Hilda, Kalia, Baxia, 3 tank bans already. So what is their first pick going to be? Do they go in for the Yisun Shin? That is one of their comforts. But no, they decide to lock in onto the Grok. I think the Grok is too good to let go given the current patch. I think you can exert a lot of pressure, and that too, you're quite tanky to be taken down easily. And if you are on the leading edge, then I think it's quite given that it's going to be very difficult for your team to actually get past this wall that is going to be there as well. But again, judging by the first pick, this actually put a lot of pressures into the jungle, meaning that if you go for a squishy jungler that can be in a problematic situation, you would not really want to give Grok the leeway to come and bully you, slow down your farm. That's going to be
very difficult into the point where it comes down to taking down this neutral objective. So I think 7 IC Emporium, they need to go for something that can actually kite away the Grok or can actually put a lot of pressure maybe so that the Grok's pressure can be exerted back. The Yuzhong really good frontline. I think the dive is pretty much a threat to the backline, so that can work really well. The Kimi can work extremely good, but it requires a little bit farm, especially if it's going for the Sky Piercer. Need those stack for sure. Exactly so, and the Kimi is actually a decent pick. The Sky Piercer works out, and moreover, it works out because of the fact that she's just gonna be shredding through whatever magic defense the Grok builds up. And even a Radiant usually isn't enough to save a Grok from a Kimi's damage unless your team is leading far, far ahead. Yuzhong once again negates the Farsa pick or the Yeet pick in this situation, True. or even Zacian. So we'll see what they decide to go in for. The Meat loves his Fredrin, so he's gonna lock another Fredrin already, but we talked about not picking up a Farsa, but they decided to go in for the Farsa anyway. Super IC is so good onto his Eve. I wonder why he didn't go for it. That would have been somewhat of a better choice as compared to a Farsa maybe. But let's see, Bird versus Dragon, we'll see who wins. Okay, I mean, I do think the Bird kind of has a disadvantage when it comes down to this matchup, but then again, I think it can work indeed if the positioning is fine. If they use the Feather Airstrike after they are done with the Black Dragon, I think that can really work well, given the fact that it outranges the Kimi, so really good mid control as well. And with the Grok, I think the rotation really becomes exponentially faster. And at the same time, you can see I was expecting Team 7 IC Emporium to actually go for the carry here instead of the glue, because I don't think so you would want to prior the glue this early on. But nevertheless, it's still a decent hero against those tanky frontliners, because you can really annoy the heck out of those picks. So it can really work. And if your team is dealing damage, then the damage is going to reflect on your teammate itself. But at the same time, you can see 7 IC Emporium, they understand that they should not want to give away the Alice, because we saw what happens when an Alice is played against Glue, isn't it, Sarah? So, not again. That's what, not again indeed. But Nexus can still possibly try to take the Ruby towards the gold lane. That's one of their choices, or maybe a Okay. Lapu. The Lapu does work against the Yuzhong, and it also works against a Glue. Unless, of course, they force the Yuzhong towards the gold lane, in which case the Ruby would work out. Or they force the Glue Good. towards the Roam, in which case the Lapu would work out. So let's see what they decide here. Export Glue Mort bans, very valid against the Fredrin. But they do need something ranged. Possibly, I mean, the Claude is one of the options available. So let's see if they decide to go in for that. The Claude could be good, but then again, there's a lot of, I think, damage or crowd control abilities. The team can actually go for the knock up, the tech charge, of course. These two can be really an instant cancel on the on the blazing duet, of course. So that can be a problem. And then again, you have a Farsa that can make you instantly lose your HP, so you have to constantly recall back. For 7 IC Emporium, I think they need something little bit, maybe an assassin, but I don't think so an assassin can work. But then again, you're pretty good on the read with the Claude. It is risky for sure, but it definitely does the work. It can melt your tanky heroes or the frontliners, but only when you can actually find the farm. Now, usually if you're playing a ranked game, I think you would instantly want to lock in the Leslie, but Nexus, do they actually want to do that? They could. Technically speaking, they could. It does work out, but other than that, if they do not want to, in that situation, they would have to look in for something like the Herrick. The Herrick is not something Mikey is so comfortable with, but if he has been practicing recently, then I can say that it is a decent choice. It would help him to heal up against the glue as well. But the Arlot here, now that is something I'm skeptical about. It works against the Yuzhong along with the Fredrin and Grok, but the problem is going to stay is that he would not be able to sustain so much towards the late game. If he can mark down the Kimi and Claude along with the Fursa, then it's fine. If they can catch them in the final slash, it's fine as well. But if he gets stunned down or immobilized even once, or if his second skill cooldown goes out, or if this Mr. Soul Shredder Hanzo comes in and bursts him down, then Nexus will lack in terms of sustain.
Definitely so, but I think it's a pretty high risk, high reward draft coming here, Sarah. But given the draft already that we got to look at, any prediction that you want to give before the start of the game? Prediction wise, I mean, if just like ignoring the, what's that pick again? Arlot. Ignoring the Arlot pick, I feel like Nexus should have the win. They are on their comfort pick except for the Arid, but other than that, it's fine for them. So I'm gonna be having to support them in this one. Okay. I think I know more reasons than just that. But once again, ladies and gentlemen, we'll soon head into the game number 4, of course. This is going to be Team Nexus taking on against Team 7, IC Emporium. A best of 1. The winner moves on to the next round. But then again, once again, this is Land of the One. This is going to be Shinri and Sarah joining you as the voice of the game. Welcome to the Land of Dawn, ladies and gentlemen, and we will be treading forward in this game. And as far as we see, standard rotation is going to be coming in from every team. Hanzo will have definitely the faster jungle in the early game, but for now it looks fine. But we'll see how it works out towards late game, because Kimmy scaling versus the Harriet scaling, Kimmy scales a little bit better along with the Claude. But the entire draft for the side of 7 IC is late game based, so if Nexus can win the early game, then it could be better. Definitely, this is where the mid duo prio comes in place. You can already see the flicker being baited out from Super Zesco, and he's actually forced to retreat back and might just get taken down as the first blood in the game. Inferno picks it up, and now the Farsa will be at a disadvantageous position for the time being. But that's a good start for 7 IC Emporium. Giving the kill to Kimi can really help in the scaling from the mid lane itself quite early on. Exactly. So, and it's looking pretty decent for them here. And they are also actually creating the pressure of the laners with the Petrify already coming in. That's going to be a lot of damage being dealt onto the Arlot. But the Immobilize, he has to flicker out to escape from that, which means that the turret goal will be secured by Yuzhong, but he doesn't just go for it. He just wants the EXP crab here. Yes, for now the EXP grab is what he wants, but then again the neutral objective is gonna spawn really soon, so they need to actually maintain their position. They need to go for the setup here, but given the fact that the Grok already fell down once, it means that the level 4 will come a little bit late, so they need to actually have some alternative, either delay the turtle or just completely zone out the members of Team 7 IC's Emporium, especially the Hanzo. If they can lower his HP down, then that can really help them win this turtle fight. But then again, you can see the EXP presence, the Yuzhong, that can be a lot of problem for Team Nexus here. That's exactly what we see. The Super IC Feathered Airstrike special coming in already, launching those missiles and absolutely bursting down Mr. Yuzhong. He gets taken down. Hanzo's ultimate will be used up as well, which means that Team 7 IC will lose out in their important resources before the first turtle, because the Glue cannot single-handedly try and, focus onto that turtle here. They are trying to contest for it, but they can't really get it. That is going to be the main problem, as Need secures the first turtle of the game. Absolutely. As they get the first turtle of the game, this will help them get a little bit of lead, but then again, another kill, this time on towards the Glue. The Farsa actually trading back some kills. This will put Team Nexus Esports, Nexus a little bit on the lead and can make the damage scaling done even faster. Both the mid laners need this damage. They need those items to be back online quite early on so that they can actually put the pressure. But then again, looking at the items, do you see anything that stands out for you? As of right now, I don't really find it that special. I believe both the front laners for the side of Nexus are building up towards their Radiant Armor, while the Farsa is going in for an early Lightning Truck-in. So that's going to help them quite a lot to get that early burst which we are talking about. Meanwhile, the Arlot has the Dreadnought, but look at the top side. That's going to be another engage onto the Yuzhong. He can't sustain the burst coming in from the Arlot and the Farsa, but bot side as well. Grok is going to be caught out pretty low, and he might just get taken down. But no, the tech charge is going to definitely help them secure try and escape, but no, it is going to be a kill being secured by the Glue after all the flames. Oh no, Linux gets caught out, and that's going to be another kill being secured by Nexus.
Absolutely, but they're not stopping there yet. The glue once again mounted on towards the Fredrin, trying to pull him under the turret. You can see already the damage coming out from the Kimi. It's still not enough to take them down. The Feather Ezra onto the back end will take down Vampire Yuda, but again you can see Jackie. He takes down the Fredrin. Meat already down. And with this, it's going to be a 1-for-1 trade. But then again, Team Nexus, they're trying to find more pieces that they can actually get for their side before the start of the second turtle. This can put them into more of an advantageous position. But again, EXP lane will be a stalemate for now. Both the EXP laners will just try to clear the lane, get the farm up and rotate for the objectives. But once again, you can see the Croc trying to give the vision, trying to open up the map. For his team, does not have too much of a support. Should be careful not to overextend for too long. But then again, is doing the right thing by baiting out the skills, baiting out the the resources from Team 7 IC Emporium right before the second turtle. So this might be the turtle, but look at the reset coming out from him. That's the reason we were talking about, and definitely enough, these teams, they are going to be playing it quite safely for now because they know they need the Kimi and Claw to farm up, and they also need the Herrick to farm up, but he's already got the Starlium skin. Okay. So, and that's going to be an early easy turtle secure coming in from Meat. Once again, no contest whatsoever. Attraction pulse doesn't land on anyone. Blue gets caught up, tech charge as well as Arlott marking him down, and he will finally get taken down quite easily. Yeah, it definitely seems like the frontliners of Team 7 IC Emporium are not having the best time. But then again, onto the mid lane, the final slash on towards Inferno. He's able to flicker out, but then again, the Black Dragon already being used up by the side of Team 7 IC Emporium just for being, just to be in the safe place. But then again, you see the Claude is trying to push the bot lane, but then again, the rotation is quite quick from the far side, trying to chip down the HP. Just one more hit should do the work. Mikey, he picks up the kill. With this, the Harriet will have 2 kills on his back, able to, farm up much quicker with the lane being all for himself. But then again, the glue will be there for him to defend the lane. But we can see the pattern that is being broken down. This is being broken down from even bad to worse for Team 7 IC Emporium because they are not yet able to have a strong foothold into the map from where they can actually start going for the trades, because every time they try to take a engage, it just seems like Team Nexus, they have the better presence into those team fights. But then again, onto the bot lane, we can see the Claude already uses up the Blazing Duet, but the quick rotation coming out from the Grog will not be able to stop him for now. But the Glue still trying to poke him down, trying to, annoy the heck out of him. Goes for the mounted form on towards the Grog, but the Traction Pulse will just be missing out. But then again, Linex will get taken down. Inferno 2, a double kill for Mikey. And the Shadow form of the Hanzo will just get taken off. But then again, up top lane, a 1v1, it seems like the Arlott does have the advantage here. The Black Dragon form baited out already. And with this, you can see there's gonna be nobody getting taken down, but still the pressure being maintained. Again, onto the mid lane, the turret was what this Fredin was looking for. But Meat, can he actually get out of that harm's way? Because he's just getting lowered, he's getting his HP chipped down quite early on. But then again, the Black Dragon up in the top lane gets taken down with a quick rotation coming out from the far side here. Sarah, this is looking too good for Team Nexus Esports, because 7 IC Emporium, they are not getting too much to do. That's why they're not getting the space they would have wanted, that too because of the Fredrin and the Grog doing their job, and also Super Icy onto that Farsa, the blast damage already from his, he's got the Divine already, he's got the Lightning already, which means that he can technically just to blast the damage dealers. But look at that, the Grog gets targeted down by the Glue on his ultimate, but technically enough should be able to run off from that. No. And if he does manage to make it out alive, which he won't be able to, 2 members down though onto the hands of Team 7 IC, while Super IC 7 IC, okay, I see what they're doing here, but it's fine with whatever they are planning to do here. Technically speaking, both the teams, look at the instant replay. Yeah, I mean, the turtle fight started off good and it even went better, but then again, more fights are breaking out. The Black Dragon already being used up, but it will not be used to chase down Meat, who was already quite low on his HP, because they knew if they dive in more, then they will get thoroughly punished. There's the best of one already, but then again, he's looking too much in the control for Super Icy here. Again, the final slash being used up onto the back end. Inferno is the target, does not have the flicker, will get taken down, but the Glue mounted form already dealing so much damage. Super Jesus will get taken down. A good tech charge coming in.
line, and with that, the Yuzhong will get taken down. Already stunned up. The glue. Can he find an escape? But he gets the mounted at the right time. Brings the Grok under the turret, but not enough damage to take him down yet. Inferno still trying to, not Inferno, but the Yuzhong still trying to hit him down. But oh, one more hit. The flicker coming out, but it was not actually Inferno. It was not even the Yuzhong. It was the Claude at the end who got taken down. Exactly so. Absolute domination, I believe, at this point, coming in from the hands of Team Nexus, and that would already be putting them at so much of a lead. Despite their frontliners being targeted so much, they are actually doing so well right now. I believe that is one of the very big advantages they have of playing their comfort picks onto that mid lane, and that is exactly why they have been able to do so well. Like, you know, better than they would have expected to. But for now, let's see how it plays out towards late game. I don't know what is going to happen, but the Grok really low on HP, but able to get out, but get hits by Inferno. Good tech charge, not a tech charge, but an interaction pulse came in there, but it was not really enough. Mikey just too fed in this game, already with 7-0 and 3, dealing so much damage once he got his hand onto the Holy Crystal, the third item into his build. The damage has already, reached to the point where Team 7IC Emporium cannot really, sustain that. But then again, the final slash being used up, but it got purified out by Linex. Again, you can see the Hans are trying to go in for a little bit of damage, but not really finding the target he was looking for there. At the same time, Nexus Esports, they're walking onto the Lord, so this is going to be a completely uncontested Lord. Mind you, most of the first tiers have been taken down, and the second tier are already in a jeopardized position. But look at another engage both the teams want to look for. Black Dragon form being used up here, Sarah? Yep, that's a Black Dragon form just to escape, I believe. And that is actually one of the better situations to be in for the side of 7IC. Like, if you don't die, at least you can defend. So, technically speaking, it's not the best of situations. But look at that, the Hanzo trying to go in for a little bit of something, but he doesn't then have to sustain. Farsa! So, oh no, the Farsa! The damage output from her is just absolutely insane right now. That's the advantage of having so much farm as a Farsa. So let's just say Team Nexus, they've taken down one of the main frontliners, which means that they are going to be having an much easier time. So, this is just the best of situations to be in. So Jesus takes down the Claudia. Blue has latched onto the Grog with the base turret. The inhibitor is getting marked down by the side of Team Nexus. They are going to be able to take it down. The base getting targeted. Do they end it here is the question. Do they end it? And they do. The Hanzo trying to interrupt the Herrick is not going to be successful as Team Nexus take away a win. It was a very easily done victory that Team Nexus showed us, because it never felt, like they were struggling to play against the members. There were, of course, some times where they were getting pushed back, but overall, the gameplay from Nexus was quite clean, I would say, in terms of taking down the objectives, in terms of going for the zone, as well as the damage. They were quite in control. The Farsa as well as the Harith combination worked pretty well, even though Team 7IC Emporium, they got the first blood, but they were not really able to transition from the point where you can see the rotation started to come off quite quickly. And even though they were able to cut off some of the members, but the damage, it just got significantly lowered once the members of Team Nexus, they got their items, they got their power spike, and we saw how it fell off. Even with the Claude using his full combo with the full stack blazing to it, the damage was not being properly dealt. And in this game, you can already see they were pushed back so much that it actually shows even in the results screen. I'm quite surprised to see that it's a global 5 glue actually being played in this game. That's what, and unfortunate for him, I believe, that despite getting his comfort pick, he was actually single-handedly doing so much for his team. The Grok was unable to be in the most of the team fights just because of him alone. So I feel like despite him being one of the stars, it just wasn't enough, and Team 7IC couldn't keep up as much as they would have wanted to. And Team Nexus, that Farsa's 35% damage all by himself is just crazy off the charts. So she was the star of the show instead.
Absolutely. I think the way she was able to control and take down the squishy targets was what really led Team Nexus into the victory. But, ladies and gentlemen, we need to see what will lead the next teams towards victory, because the night isn't over yet. The night is still young, and so are the next matches. So we'll just wait for it to unfold. For now, this is going to be me, Shinryu, and Sarah, of course, with me. We'll take a short break from you guys, but we promise you that we'll be back after the break. So do stay tuned as we see you on the next site. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble.
My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap. The strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. नमस्कार दोस्तों, आज का ये समा यहाँ पे बैठा है और इस समा के साथ जुड़ेंगे। मैं हूँ आपका कास्ट राव, मेरे साथ को कास्टिंग करते हुए पहले से ही कर रहे थे शिनरू भाई, लेकिन उनके साथ आज मैं जुड़ूंगा। और आप देख रहे हैं अभी टॉप 16 का यहाँ पे जो चल रहा है, एलीट स्क्रीम्स वगैरह, और ये हो रहा है यहाँ पे अल्गैम्बो ई स्पोर्ट्स के द्वारा। और इसी यहाँ पे जो मैचेस होने वाले हैं उसके लिए आते हुए हम सभी के सामने, और आज के जो मैचेस होंगे ये दो टीम के सामने, M8 फ्यूचर चैंपियन और यहाँ पे दूसरी टीम जो उनके साथ लड़ेगी वो आपको बताएंगे शिनरू भाई। शिनरू भाई, क्या हालचाल है आपके? जी, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। सब कुछ बढ़िया होना भी चाहिए क्योंकि दोनों ही टीम काफी दूर तक आए हैं यहाँ पे, और काफी दूर तक मैं बोलता हूँ मतलब ये फर्स्ट राउंड है तो उतने भी दूर नहीं आए, बस मजाक था गाइस। बट खैर, जो बात है यहाँ पे शिनरा भाई, ये पिछला वाला जो मैच था वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि एक पैटर्न क्रिएट चल रहा है कि इधर गेम्स बहुत वन साइडेड हो रहा है या फिर कमबैक स्टोरी हो रहा है। जो मेरे को हमसे पहले जो कास्टिंग करके गए हैं उन सभी ने कहा है कि इधर गेम्स बहुत ही डोमिनेटिंग होने वाले हैं या फिर या फिर कमबैक स्टोरी। तो इस गेम पे क्या होगा वो थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। बट एक बार फिर यहाँ पे मॉर्टल हंटर के पास फर्स्ट पिक है, वो लोग यहाँ पे बैन करेंगे यहाँ पे करीटा को, और फ्यूचर M8 चैंपियंस के पास सेकंड पिक है। तो अभी भी बैन के हिसाब से बहुत कुछ यहाँ पे जाना जाएगा कि यहाँ पे बहुत कुछ हमें एक आइडिया मिलेगा कि टीम्स क्या पिक करना चाहेंगे, क्या डिनाई करना चाहेंगे। तो उस हिसाब से एक ड्राफ्ट का भी हम लोगों के पास एक आइडिया होगा। तो शायद से ड्राफ्टिंग से हम लोग गेस कर ले कि क्या होने वाला है गेम पे। जी बिल्कुल। और ड्राफ्टिंग की बात करी थी, देखिए यहाँ पे करीता बैन के साथ साथ फ्रिया बैन आता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़े से टूर्नामेंट में ऑब्वियसली बैन्स वगैरह होते हैं वो हमें आते हुए दिखेंगे यहाँ पे। और इसी के साथ कैरी यहाँ पे पहले बैन आता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो मोटर हंटर है वो थोड़ा यूटिलिटी जंगलर के साथ जाते हुए देख सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे टैंक मेल्टर को यहाँ पे जो है बैन जरूर किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या अगला पिक यहाँ पे एक और मीच के ऊपर यहाँ पे बैन आता हुआ दिख सकता है, या फिर जो है कि थोड़ा सेफ खेलते हुए जाना चाहिए। बात करें यहाँ पे फ्यूचर 8 जो है M8 चैंपियंस, यहाँ पे देखना पड़ेगा किस प्रकार से ये लोग खेलेंगे। और उसी के साथ सोरा बैन आता हुआ दिखिए। चलिए सोरा यहाँ पे देखिए एक तरीके से कहूंगा सेट प्ले मेकर रहते हैं, एक बढ़िया अगर सेट लगता है उनके द्वारा तो गेम चेंज पोटेंशियल अपने पास रखते, तो यहाँ पे उनको बैन आता हुआ दिखेगा। तो क्योंकि पहला पिक है, नहीं चाहते कि मॉडल हंटर के पास कोई ऐसा हीरो आए, तो इसलिए पहले यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा उनको ही। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तीसरे बैन की तरफ जाते हुए दिखेंगे, मॉडल हंटर की तरफ से थोड़ा टीम में सोच विचार होता हुआ दिखेगा। और
जैसे कि आप कह रहे थे सुनील भाई कि मैचेस जो है या तो एक साइड जाते हुए दिखेंगे या तो एपिक कमबैक आता हुआ दिखेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे कि छोटी टीम के स्तर पे जब टीम एज अ ग्रो करती है तो आपका जब पहला एक्सपीरियंस रहता है सामने वाली टीम के लिए, तो एकदम नई टीम होती है, आपको उनके नई हाव-भाव पता होते हैं, नई उनके आपके दाव-पेच पता होते हैं, किस प्रकार की किस स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगाते हुए जो टीम है, वो आगे जाती है, तो वो हमें देखने को मिलेगा। और चलिए यहाँ पे ड्रैगन को बैन किया गया है, तो कहीं न कहीं मेरा अनुमान यहाँ पे लग रहा है कि शायद वायसेस का आगमन ज़रूर हो सकता है, क्योंकि ड्रैगन को जब भी बैन किया जाता है, तो एक आपके पास अच्छा खासा अपॉर्च्युनिटी मिल जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे सबसे पहले ग्रॉक के ऊपर आत्म मारा गया है यहाँ पे, तो एज़ अ इनिशिएटर टेक्टोनिक चार्ज हमें आता हुआ दिखेगा ग्रॉक के द्वारा, तो एक सेट प्ले आता हुआ ज़रूर दिख सकता है। जी बिल्कुल, काफ़ी सारे डिसरप्टर जो है उनको बैन किया गया है, लेकिन जो इनिशिएटर अभी वो सारे ओपन है यहाँ पे। जो ग्रॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस मेटा पे, आप जंगल पे प्रेशर कर सकते हैं, जो जिस बात का मैंने ज़िक्र पिछले वाले गेम पे भी किया कि आप अगर चाहे तो यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं कि जितना हो सके एनिमी का फार्म लो कीजिए, रोटेशन रोकिए। और ग्रॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैंकी होता है, तो उनको अर्ली गेम पे भी पनिश करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो उनके लिए श्रेड डैमेज जो चाहिए था, जैसे कि कैरी हो गया, लूनॉक्स हो गया, ये सारे हीरोज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है, लेकिन वो सारे हीरोज़ अभी तक पिक नहीं किया गया। यहाँ पे ईसनशिन को लिया जाएगा टीम फ्यूचर 8 एमिट चैंपियन की तरफ से, और एक एलिस एलिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेनिंग फेज पे, और बहुत कम हीरोज़ है जो उनके अगेंस्ट लेन कर पाए या जीत पाए। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा एक फ्रंट लाइन भी काम करता है एलिस यहाँ पे। लेकिन ईसनशिन जो मैं बोलूँगा काफ़ी एक स्टैंडर्ड हीरो है, लेकिन फिलहाल हाल ही में हम लोग जो देख रहे हैं कि उनको गोल्ड लेन की तरफ भी खेला जा रहा है। तो ये शायद एक नया ट्रेंड आ रहा है बहुत सारी टीम पे, जो इनको फ्लेक्स करना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक अनुमान है कि, और मेरा एक मतलब एक आइडिया है कि अगर आप ईसनशिन को जंगल पे नहीं खेल रहे हो तो काफी ज्यादा पोटेंशियल आप वेस्ट कर रहे हो। जो एक फास्ट फार्मिंग के आपके पास एक जरिया है, उसको एक लेन पे स्टक करके आप काफी ज्यादा उसको लिमिट कर देते हो। जी, बिल्कुल। और उसी के साथ एक और सिक्योर करते हुए दिखेंगे हमें लियो मॉड के साथ एक अच्छा इनिशिएटर, जैसे कि आप बोल ही रहे थे, यहाँ पे एक और इनिशिएटर आते हुए दिखेंगे। उसके साथ-साथ पीछे से वो जो पोक डैमेज है, वो आता हुआ दिखेगा ज़ेतन के द्वारा। और यहाँ पे कहीं न कहीं मैप पे जो मैं कहूँगा एक मैप अवेयरनेस का एडवांटेज इमॉर्टल को जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इनको ईज़िली जो है उनके ज़ेतन के अल्टी के द्वारा पोज़ीशन पहले पता लग जाएगी, तो कहीं न कहीं जो है एम्बुश होने के चांसेस वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो एक सिक्योर जो है यहाँ पे बैलेंस ड्राफ्ट थोड़ा-सा मेरे को लग रहा है टीम मॉडल हंटर की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फ्यूचर एमेट उनके भी जो ड्राफ्ट है अच्छी खासे दिख रहे हैं। एलएस जैसे आपने कहा था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है यहाँ पे, और इसी के साथ पिक ऑफ करने के लिए उठाया जाएगा अकेलिया, एक स्ट्रॉन्ग पिक रहेगा। तो देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से यहाँ पे जाएँगी, और जिसको भी पिक ऑफ करती है पीछे अब इनको कोई ऐसा हीरो चाहिए जो बस्ट कर सके। बस्ट के तौर पे आप क्या उठाना चाहेंगे? लूनॉक्स से एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी रह सकता है, जैसे आपने कहा यहाँ पे मेल्ट टैंक मेल्टर के तौर पे। तो लूनॉक्स की तरफ अगर जाते हैं तो एक अच्छा स्थिति यहाँ पे रहेगा, क्योंकि एक्सपी पे आप एलएस खेल सकते हैं इजीली। और मैंने देखा भी काफी टाइम बहुत सारे लोग जो है उनको एक्सपी पे खेलना पसंद भी करते हैं। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो पूक के साथ साथ एक अच्छा खासा सस्टेन और एक अच्छा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पकड़ने के लिए लियो मॉड का आगमन हो गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पे पोक डैमेज प्लस एक मोबिलिटी जो आप कह रहे हैं वो काफी अच्छा प्रेजेंट है टीम मॉडल हंड्रेड की तरफ से। लेकिन जो एक दिक्कत होगी, अभी भी उनके पास मतलब एक लेन पुश करने का जरिया नहीं है, तो उनको एक पुश करने के लिए एक अच्छा हीरो चाहिए। शायद से एक मार्क्समैन की सख्त जरूरत है उनको। अगर ये लियोमॉड जंगल पे जा रहा है तो डैमेज तो काफी अच्छा रहेगा ही, लेकिन जो एक पुश कैपेबिलिटी होता है वो काफी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे टीम फ्यूचर एमिट चैंपियन के पास एक काफी अच्छा सेट पोटेंशियल है जिससे वो पिक ऑफ भी कर पाए मैप पे। अगर रोटेशन पे देखा जाए कि टीम मौजूद नहीं है आपके साथ, तो काफी आसानी से पनिश कर सकती है टीम फ्यूचर एमिट चैंपियन। तो इसीलिए उनको थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल, मतलब थोड़ा सा देख के रोटेट करना पड़ेगा। लेकिन जो जिस हीरो का हम लोग बात कर रहे थे, लूनॉक्स कैरी, दोनों ही यहाँ पे बैनिंग सेक्शन पे, तो जो फ्रंट लाइन है, जो ग्रॉक है, उनको मेल्ट करना काफी मुश्किल हो सकता है यहाँ पे टीम फ्यूचर एमिट चैंपियन के लिए। और अगर विजन की बात करें तो दोनों ही टीम के पास एक अच्छी यूटिलिटी पिक है। यहाँ पे ईसनशिन अपने माउंटेन शॉकर से भी विजन दे सकते हैं, और जो विजन कंट्रोल होगा वो काफी सेम ही रहेगा दोनों ही टीम के लिए, तो उस हिसाब से काफी अच्छा है। लेकिन फ्यूचर एमिट चैंपियन यहाँ पे कोशिश करे कि वो लोग गोल्ड लेन की तरफ थोड़ा अपना ध्यान रखे। वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हीरो दे कि जिससे उनको पनिश करना काफी मुश्किल हो। और अगर आप एक चीज देखोगे तो ये दोनों जो गोल्ड लेनर हीरोज है यहाँ पे, शिंडा भाई, ये दोनों ही ऐसे हीरोज है जो प्यूरीफाई ले सकते हैं। बाकी मार्क्समैन पे अगर आप प्यूरीफाई अगर लेंगे तो उस पर काफी दिक्कत हो जाता है, आपको रिपोजिशन करने में काफी दिक्कत होगा, और आपको वो सेम आउटपुट नहीं मिलता है जो आप इन दोनों हीरो पे प्यूरीफाई लगा के खेल सकते हो। जी बिल्कुल। और यहाँ पे आखिरी बैन आता हुआ दिखेगा मॉर्टल की तरफ से, और यहाँ पे एक अच्छा बैन आता हुआ दिखेगा। चलिए यहाँ पे पारसा को बैन किया गया, एयर स्ट्राइक यहाँ पे आते हुए हमें नहीं दिखी। ये एक बढ़िया पिक हो सकता था, एरिया कंट्रोल अच्छा खासा उनको मिल सकता था इस पिक के द्वारा।
और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव लेने में भी एक अच्छा खासा वो मिलता, क्योंकि अगर बात करें यहाँ पे किलिया वो पिक ऑफ करती तो पीछे से एयर स्ट्राइकर पड़ता, और कहीं ना कहीं बात करें लेन पुश की तो वो भी एडवांटेज इनको फारसा के साथ मिल जाता अच्छा खासा। और अगर डिफेंड करने की बात करें तो वहां पे भी तो फारसा एक अच्छा यहाँ पे बैन गएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 मेज यहाँ पे बैन किए गए हैं, तो एक तरीके से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन फ्यूचर एमएच के पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो देखना पड़ेगा किसकी तरफ जाना चाहेंगे। चलिए डीपीएस की बात करें, क्या यहाँ पे कौन से डीपीएस की तरफ जाना चाहेंगे। एमएम की बात करें तो ग्रेंजर भी जा सकते हैं, पोक करने के लिए इजी रहेगा, डेक्स नाटा से मार सकते हैं, लेकिन नहीं यहाँ पे डीपीएस के तौर पे किमी आएगा, और एक अच्छा पिक मैं कहूंगा किमी यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। मिडिल लेन पे जा सकते हैं इजिली, और जो कंटिन्यूस डैमेज रहता है इनका वो बढ़िया तरीके से रहता है, तो पोक करने के लिए वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी यहाँ पे आती हुई दिख रही है। उसी के साथ ट्रैक्शन पल्स अगर एक अच्छी तरह लगता है तो पकड़ने के लिए एक बढ़िया स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिखेगी। इमोबिलाइज हमें देखने को मिल सकता है। तो देखा जाए तो 4 पिक अभी हो चुके हैं, लेकिन मॉर्टल हंटर अभी इनको पिक करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे कि क्या पिक लाते हैं और इस ड्राफ्ट पे किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे शेड्यूल पर। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं ज़्यादा फैन नहीं हूँ कि आप डबल मार्क्समैन एक कॉम पे खेलें, क्योंकि आपको ज़्यादा रिसोर्सेस यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। तो अगर मिड पे 2 मार्क्समैन खेल रहे तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फार्म यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है इस टीम के लिए, टीम फ्यूचर एमएच चैंपियन के लिए। अगर ये गोल्ड लेन ईसनशिन है तो काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि उनको अपना रिसोर्स खुद मिल जाएगा। ये किमी अच्छे से रोटेट करके फार्म कर सकती है, लेकिन अभी भी जो ईएक्सपी लेन और गोल्ड लेन बाकी था मोर्टल हंटर की तरफ से, उन लोगों ने यहाँ पे एक ग्रैंजर और लापू लापू उठाया। दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग लीनिंग हीरोज है, स्टैंड अलोन हीरोज है। ये लोग अपना लेन खुद मैनेज कर सकते हैं और काफी ज्यादा गंदे सिचुएशन से भी बच के निकल सकते हैं। तो उस हिसाब से काफी अच्छा पिक रहा। और अगर ग्रैंजर पे अगर आज भी हाई यहाँ पे कलियर ने डाइव भी किया तो शायद से वो अपने आप को रिपोजिशन कर सकते हैं, या फिर प्यूरिफाई ले सकते हैं। लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि प्यूरिफाई लेंगे तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकता है एलिस से। और यहाँ पे अगर एक और डाइव हीरो आया, कोई अगर असासिन आया यहाँ पे टीम फ्यूचर एमेट के चैंपियन की तरफ से, तो काफी ज्यादा दिक्कत होगा। और असासिन की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, जॉय पिक होता हुआ। जी बिल्कुल, मोबिलिटी उसका फायदा यहाँ पे उठाते हुए दिखेंगे। जॉय आएंगे पीछे से साइड लगाते हुए, इलेक्ट्रीफाइंग बीट्स हमें देखने को मिलेंगी, और थोड़ी सी दिक्कत जैसे कि आपने कहा, थोड़ी तो नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पे हमें आती हुई दिख सकती है ग्रेंजर के लिए। अगर वो प्यूरीफाई के साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको समझौता करना पड़ेगा। अगर आप प्यूरीफाई के साथ जाते तो आपको कहीं ना कहीं अपनी मोबिलिटी जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और इसी के साथ ड्राफ्ट देखे तो देखिए दोनों का ड्राफ्ट मेरे को बढ़िया लग रहा है, लेकिन अभी बात करें यहाँ पे एग्जीक्यूशन की, क्योंकि एग्जीक्यूशन जिस प्रकार से होगा और उसी प्रकार से जो गेम है वो हमें आता हुआ दिखेगा। और चलिए एक बढ़िया लीन फ्रीज आता हुआ दिखा ग्रॉक की तरफ से, एक बढ़िया वॉल का इस्तेमाल होते हुए, तो लीन को थोड़ा सा डिले करने का प्रयास किया गया है, और यहाँ पे आते हुए दिखेंगे हम लैंड ऑफ डॉन में। जी बिल्कुल, यहाँ पे बेस्ट ऑफ 1 का एक मुकाबला रहेगा मोर्टल हंटर्स बनाम फ्यूचर एमेट चैंपियन का। देखते हैं कि कौन इस राउंड को लेके जाएगा। और शायद से यहाँ पे एक पॉज की दरखास्त की गई है, तो देखा जाएगा कि पॉज होगा कि नहीं। लेकिन फिर भी जो मिड टू का जो बात किया जाएगा यहाँ पे भाई शिनरा भाई, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ग्रॉक प्लस जीटीएन काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है। ग्रॉक के पास ऑलरेडी एक फ्रंट लाइन का प्रेजेंस होता है, जीटीएन के पास अर्ली गेम से वो पोक डैमेज होता है, जो किमी के पास थोड़ा लेवल अप होने के बाद ही मौजूद होता है। उनको थोड़ा यहाँ पे किल्स वगैरह चाहिए, जो डैमेज स्केलिंग उनको मदद करेगी, जो फ्रंट लाइन को भी वो पनिश कर पाए। लेकिन अर्ली गेम पे जो प्रेजेंस रहेगा, मुझे लगता है ये जो मिड ट्रियो है मॉर्टल हंटर के, उनके पास ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि उनके पास एक फास्ट रोटेशन है और एक पनिश करने का प्रॉपर जरिया भी है कि उनके पास टर्न है, टेक चार्ज है, प्लस उनके पास एक लियो मोड है जो जाके चीज भी कर पाए किल्स को। जी बिल्कुल, और इसी के साथ टेक्निकल पॉज हटता हुआ दिखेगा। गेम की बात करें तो गोल्ड लेन पे ही वाइसेस जाते हुए दिख रहे हैं हमको, और अली गेम से थोड़ा सा जो प्रेशर की आप बात कर रहे थे वो आता हुआ दिख रहा है अच्छे खासा यहाँ पे, और ली तो लेने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रयास असफल रहेगा। उसी के साथ वॉल लगाते हुए ग्रॉक थोड़ा सा यहाँ पे पोक करना चाहते थे, लेकिन अभी बात की जाए तो टीम अभी बिल्कुल संभल के खेल रही है, कोई अननेसेसरी फाइट नहीं ले रहा है, सिर्फ मिनियंस क्लियर कर रहे हैं। उनको भी पता है क्योंकि अभी टर्टल आने वाला है, और टर्टल के समय एक अच्छा सेटअप हमें आता हुआ दिख सकता है। बात करें टॉप लेन की तरफ तो वहां पे भी अच्छा खासा चल रहा है, बहुत ही सेफ खेला जा रहा है, और एक लग रहा है कि थोड़ी एक्सपीरियंस जो टीम है वो हमें देखने को मिलेगी। एक बढ़िया रोटेशन टॉप लेन की तरफ आता हुआ दिखेगा, लेकिन वाईएसएस अपने टावर के अंदर पहले ही जाते हुए और एक सेफ स्पेस लेते हुए दिखेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे जितना हो सके सेफ खेलना पड़ेगा दोनों ही टीम को। लेवल 4 के बाद ही शायद यहाँ पे फाइट लेना ज्यादा समझदारी की बात होगी, समझदारी होगी यहाँ पे। तो इस हिसाब से अभी उनको जितना हो सके फार्म बटोरना पड़ेगा मैप के, जहाँ पे भी पॉसिबल हो उनके लिए।
और जो टर्टल भी आ रहा है वो बॉट लेन की तरफ आ रहा है। अभी तक टीम मॉर्टल हंटर रोटेट नहीं करे, वो लोग गोल्ड लेन की तरफ ज्यादा प्रेशर दे रहे, तो वहां पे बस एक ही बंदा मौजूद है, तो यहाँ पे फ्लिकर बेट आउट होगा YSS का, तो उनको भी थोड़ा सा डिफेंसिव खेलना पड़ेगा। और ये काफी अच्छा मौका है ग्रैंजर के लिए, वो फ्री गोल्ड प्लेट से अपना फार्म यहाँ पे ले ले। लेकिन अगर मिडलैंड की तरफ बात करें, ऑलरेडी जोन आउट होते हुए टीम फ्यूचर एमिट चैंपियन, काफी तेज रोटेशन आता हुआ मॉर्टल हंटर्स का, और वो लोग कोशिश करें कि ये जो टर्टल है वो उस पे कोई भी कंटेस्ट ना आए टीम फ्यूचर एमिट चैंपियन की तरफ से। जी बिल्कुल, ब्रॉक यहाँ पे विजन प्रदान करते हुए दिखेंगे और उसी के साथ पोक करते हुए दिखेंगे कि मेरे को थोड़ा सा चेटना पड़ेगा। और उसी के साथ बात की जाए तो पोजीशन लेते ही देखिए टीम मॉर्टल हंटर के यहाँ पे पोक किया जाएगा टर्टल को। वायसेस पीछे आते हुए रहेंगे, लेकिन अभी भी लेवल 4 नहीं हुए हैं वो, तो मिड का जो फार्म है वो लेते हुए लेवल 4 होते हुए वो आएंगे। और अभी थोड़ी सी पोकिंग स्टार्ट होती हुई दिखेगी, एक अच्छा सा यहाँ पे जो है एक्सचेंज होते हुए दिखेगा इन्फॉर्मेशन। और उसके साथ एक बढ़िया यहाँ पे रेटरी आता हुआ दिखेगा, सेव किया जाएगा, एक बढ़िया सेटअप, फर्स्ट ब्लड लेते हुए उसी के साथ डबल किल यहाँ पे लिया जाएगा। लियो मॉड आते हुए 2 किल अपनी टीम के लिए, एक बढ़िया यहाँ पे जो स्टार्ट है वो होता हुआ मिलेगा। 3-0 का स्कोर, और उसी के साथ मॉर्टल हंटर यहाँ पे अपनी पकड़ बनाते हुए इस गेम में दिखेंगे हमको। जी बिल्कुल, यहाँ पे काफी अच्छा एक शुरुआत किया गया था टीम फ्यूचर एमिट चैंपियन की तरफ से टर्टल के लिए, लेकिन एक बार पोजीशनिंग देखिए ग्रॉक का, जो एंट्रेंस है जहां से दोनों ही टीममेट के जो डैमेज लड़वा सकते हैं उनको ब्लॉक किया गया। उसके बाद जो टेक चार्ज आया वहां पे इतना अच्छा, उसके मदद से टीम मॉर्टल हंटर ने काफी ज्यादा किल्स यहाँ पे बटोर लिए टर्टल के बाद, तो ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज उनके लिए। और हालांकि टीम फ्यूचर एमिट चैंपियन के प्लेयर के पास यहाँ पे फ्लिकर भी थे, तब भी वो लोग कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाए। यहाँ पे एक नॉकअप आता हुआ मिडलैंड की तरफ से, टाइटल स्ट्राइक की तरफ से, लेकिन मिरेकल जो है वो आराम से यहाँ पे बच के जाएंगे फ्लिकर के इस्तेमाल से। यही मैं कह रहा था कि जो ग्रॉक का सस्टेन है वो काफी ज्यादा है अर्ली गेम से, बिना किसी आइटम के भी। लेकिन अगर किमी की बात किया जाए तो उन्होंने अभी स्काई पियर्सर लिया, तो वो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा स्नोबॉल टाइप ऑफ गेम प्ले खेले। लेकिन क्या अभी स्नोबॉल पॉसिबल है जब वो ऑलरेडी गोल्ड पे पीछे है? जी बिल्कुल, ऑलरेडी यहाँ पे गोल पे पीछे चलते हुए देखेंगे। एक बढ़िया टेम्पो जो है टीम मॉर्टल हंटर ने अभी एस्टेब्लिश कर लिया, और उनको ये थोड़ा सा अभी ये संभाल के चलना पड़ेगा। स्नो बॉलिंग इनको जो है मेंटेन करके रखने की। किमी की बात करें तो उनको थोड़ा सा भरोसा जरूर रहेगा अपने ऊपर कि एक किल उनको मिल सकता है, और अगर किल मिलता है तो वो जो है स्टैक कर पाएंगे। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि फार्म की कमी होने के कारण वो चांस जो है वो बहुत कम मिलने वाला है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ग्रॉक को यहाँ पे उन्होंने जो है बहुत सारे अल्टीमेट वेस्ट करवाए हैं, और पोटेंशियल यही रहेगा हर बारी, मतलब कोशिश यही रहेगी ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पे अल्टीमेट और रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट करवाए। उसी के साथ एक और फाइट आती हुई दिखेगी, वॉल लगाते हुए थोड़ा पोक किया जाएगा, लेकिन पीछे हटेंगे यहाँ पे एलिस। और उसी के साथ मिडिलियन की तरफ थोड़ी सी टेंशन बढ़ती हुई हमें दिख सकती है, आने का प्रयास करेंगे लेकिन मिनियंस के लिए करते हुए पीछे हटेंगे। और उसी के साथ दोनों ही टीम अभी भागते हुए एक दूसरे को, और यहाँ पे जो है विजन का आदान प्रदान होता हुआ। जी बिल्कुल, यहाँ पे हालांकि टीम फ्यूचर एमिट के पास कलिया का पिक ऑफ है वो अभी तक इस्तेमाल ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी जो टीम फाइट्स थे वहां पे उनको ज्यादा एडवांटेज नहीं मिला है। सेकंड टर्टल जो है ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट किया गया, एलिस से अच्छा एक एंगेज आता हुआ, लेकिन यहाँ पे रिट्रीब्यूशन ब्रायन सी की तरफ से उनको टर्टल मिलेगा। लेकिन लियो मॉड यहाँ पे काफी अच्छा पनिश करेंगे। लियो मॉड के साथ यहाँ पे लापू लापी भी मौजूद है ब्रैक लाइन की तरफ, लेकिन देखिए जो मेंबर्स है उनके एचपी काफी ज्यादा लो एट है। यहाँ पे टीम फ्यूचर एमिट चैंपियंस 3 मेंबर को गवाएंगे। डबल किल फॉर इंसोमेनिया, यहाँ पे ग्रैंजर फ्री हिट करते हुए, गोल्ड बटोरते हुए, अपनी टीम को आगे ले जाते हुए। जी बिल्कुल, एक बढ़िया यहाँ पे आते हुए दिखा। टर्टल जरूर मिला, लेकिन ट्रेड ऑफ किया किल के साथ। इंस्टेंट रिप्ले पे यहाँ पे देखेंगे जगह अल्टीमेट आते हुए दिखेगा, ट्रैक्शन पल्स मारा जरूर था, लेकिन पीछे से यहाँ पे आते हुए लियो मॉड किलिंग स्प्री सीधा लेके गए। बहुत ही कम एचपी बचते हुए निकले, लापू ऑलमोस्ट किल हो गए थे, लेकिन पैसिव के द्वारा वहां पे वो बचे, शील्ड मिला उनको। और पीछे यहाँ पे ग्रेंजर वो आए, फ्लिकर का इस्तेमाल किया, डबल किल यहाँ पे बटोरे उन्होंने, और एक बढ़िया जो है फाइट हमें आती हुई दिखी। और उसी के साथ एक बढ़िया जो कड़ी यहाँ पे बनाती हुई 0-6, एक भी किल अभी अपने अपोनेंट को यहाँ पे नहीं दिया मॉर्टल हंटर ने। और एक बढ़िया यहाँ पे जो है स्नोबॉल आता हुआ हमें दिख रहा है टीम मॉर्टल हंटर की तरफ से। जी बिल्कुल, यहाँ पे ग्रैंजर को स्नोबॉल की सख्त जरूरत थी जो उसको मिली। यहाँ पे किमी को भी स्नोबॉल की जरूरत थी, जो एकदम अभी पॉसिबल नहीं होने वाला है। उनके पास हालांकि स्काई पियर्सर है, लेकिन जो एचपी बार से वो कभी उतना लो नहीं जाता कि वो स्काई पियर्सर ट्रिगर हो। क्योंकि अभी जब 0 स्टैक पे होता है तो वो ट्रिगर होने के लिए काफी कम एचपी होना पड़ता है। यहाँ पे ग्रैंजर की बात करें तो उनके पास अभी हंटर स्ट्राइक भी आ गया, तो मोबिलिटी प्लस डैमेज दोनों ही थोड़ा अभी स्केल अप होगा उनकी तरफ से। तो एक हिसाब से जो अभी गोल्ड लीड टीम मॉर्टल हंटर के पास है वो करीबन 1.6k की है, जो और भी बढ़ती जाएगी जो नेक्स्ट टीम फाइट्स होगा। क्योंकि नेक्स्ट टर्टल जो थर्ड टर्टल ऑफ द गेम है वो बाकी है। यहाँ पे 4-man रोटेशन आता हुआ टीम एमिट चैंपियन की तरफ, फ्यूचर एमिट चैंपियन की तरफ से मिडलैंड की तरफ, लेकिन अभी भी एक भी टरेट
इस गेम पे पुश नहीं किया गया है दोनों ही टीम की तरफ से, तो वो अभी भी वेट कर रहे। गोल्ड प्लेटिंग जो है वो अभी डाउन हो चुका है। यहाँ पे एक अच्छा सुनामी स्लैम आता हुआ, लेकिन फ्लिकर के इस्तेमाल से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे फ्यूरी ऑफ द फिनिक्स आता हुआ, लेकिन लियोमॉड अंदर जाना पसंद नहीं करेंगे, या फिर उनके पास अल्टीमेट है नहीं, इसलिए वो अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ पे टर्टल मौजूद है, तो अभी तक वो टर्टल स्टार्ट नहीं करेंगे, तो इंतजार थोड़ा रहेगा दोनों ही टीम की तरफ से, लेकिन देखना पड़ेगा ये टर्टल कौन सी टीम लेके जाएगी। जी बिल्कुल, दोबारा ग्रॉक के ऊपर वहां पे प्रहार किया था, अंदर लेके गए थे, सोच रहा था कि फिनिश ऑफ कर देंगे, लेकिन ग्रॉक को मारना जैसे कि आपने कहा इतना आसान नहीं होगा। ऑलरेडी यहाँ पे स्नोबॉल हो चुका है, आपकी टीम के पास एक भी किल नहीं है, और समय अगर आप सारा रिसोर्सेज टैंक के ऊपर वेस्ट करोगे तो यहाँ पे एक मैं कहूंगा आप फिर टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। तो टैंक को छोड़ के आप किसी स्क्विशी को पकड़िए तो ज्यादा यहाँ पे जो है आसार आपके बन सकते हैं। और उसके साथ एक्सचेंज होते हुए देखेंगे अल्टीमेट के साथ लापू पीछे, लेकिन यहाँ पे ग्रेंजर का डैमेज हुआ था, टेक्टोनिक चार्ज मार के 2 बंदों को नॉक ऑफ किया गया है, पीछे गए हैं। और इसी के साथ लियो मॉड यहाँ पे फिनिश ऑफ करना चाहते हैं, बहुत ही कम एचपी पे फर्स्ट में निकलेंगे जॉय, और इसी के साथ ओवर स्टैंड करते हुए यहाँ पे धाराशाही होंगे लियो मॉड, लेकिन उसका बदला यहाँ पे किया जाएगा। 3 बंदे धाराशाही होंगे एम8 की तरफ से, और सिर्फ 1 किल दिया है वो भी लियो मॉड का, और जो स्नो बॉलिंग है वो ऑलरेडी ग्रेंजर की तरफ से आ चुकी है। अब ग्रेंजर का जो डैमेज है ना वो और ज्यादा पोक करने लगेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक बार फिर से अगर देखेंगे इंस्टेंट रीप्लेस टर्टल फाइट का, तो बहुत ही अच्छे से पोजीशनिंग किया गया था टीम मॉर्टल हंटर की तरफ से। रेट्रिब्यूशन ऑन पॉइंट, उसके बाद जो पनिश था वो भी किया, ग्रैंजर को वापस से क्रिएट करने का मौका मिला, और ये टेक चार्ज इतना खूबसूरत था जो आया टीम मॉर्टल हंटर के रोमर की तरफ से, जिसकी मदद से उन लोगों को काफी ज्यादा एडवांटेज मिला। लेकिन जो फर्स्ट टर्रेट है इस गेम का वो मिड लेन की तरफ ऑलरेडी पुश हो चुका था, उसका जो ट्रेड ऑफ है, उसका जो एक ट्रेड बैक है वो टीम फ्यूचर एमेट चैंपियन टॉप का टियर 1 से करेगी। लेकिन अभी भी जो गोल्ड है उसको और भी वापस लेके आना पड़ेगा टीम फ्यूचर एमेट चैंपियन को। उनको 2 किल जरूर मिला है, जो गोल्ड था वो थोड़ा सा कभी हालांकि उतना ज्यादा घटा नहीं है, लेकिन अभी भी काफी कंट्रोल पे रहेगा टीम फ्यूचर एमेट चैंपियन की तरफ से, क्योंकि उनको अगर और ज्यादा किल्स मिले यहाँ पे तो जो बाउंटी का गोल्ड है वो वापस से मिलेगा। यहाँ पे एक टेक चार्ज का इस्तेमाल जरूर किया गया था, लेकिन वो किसी के ऊपर कनेक्ट नहीं होगा, इस वजह से एक पिक ऑफ का जो मौका था वो नहीं मिलेगा यहाँ पे टीम मॉर्टल हंटर को। लेकिन अगर बात किया जाए स्केलिंग की, जो बात किया जाए मोमेंटम की, वो अभी भी मॉर्टल हंटर के पास है। जैसा कि आपने कहा, यहाँ पे ग्रैंजर के पास स्नोबॉल काफी हद तक यहाँ पे समाप्त हो चुका है, उनका भी डैमेज जो है वो काफी अच्छा खासा आएगा। तो एक हिसाब से अगर ग्रैंजर को डाउन किया जा सके टीम फ्यूचर एमेट चैंपियन की तरफ से, क्योंकि उनके पास प्यूरिफाई नहीं है, कल अगर उन पे डाइव करे तो पनिश करना काफी पॉसिबल है, बट उसका भी तक एक रोटेशन, उसका भी तक एक कॉल शायद अभी तक नहीं आया है टीम फ्यूचर एमेट चैंपियन की तरफ से। लॉर्ड आता हुआ तो शायद उस वक्त पे कुछ कर पाए टीम फ्यूचर एमेट चैंपियन। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे बफ डिनाई करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन रेड ट्री यहाँ पे यूज हो गया है जॉय का, और ये एक अच्छा मौका रहेगा यहाँ पे लॉर्ड लेने के लिए। जी बिल्कुल, टीम जो है सीधा रोटेट करेगी लॉर्ड के समय, क्योंकि रेट्रिब्यूशन यहाँ पे हाइपर का यूज हो चुका है, तो चुराने के चांसेस और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। एक अच्छा खासा चांस यहाँ पे रहेगा, और लॉर्ड के साथ जो पुश यहाँ पे आता हुआ हमें दिख सकता है, और इसी के साथ कोशिश जरूर रहेगी। लापू मौजूदा है, एलिस अंदर जाना चाहती जरूर है, लेकिन उनको रोका जाएगा। एक अच्छा यहाँ पे जोन आउट आता हुआ दिखेगा, उसी के साथ जो लॉर्ड है वो आता हुआ दिखेगा। एलिस अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए रुकेंगे, यहाँ साथ सुनामी स्लैम आता हुआ, बॉडी स्लैम दिया जाएगा, टेक्टोनिक चार्ज आते हुए फिनिश ऑफ करेंगे। यहाँ पे ग्रेंजर पीछे की तरफ से अच्छा खासा हुआ, एलिस फिर भी सस्टेन करती हुई, लेकिन ग्रेंजर को भी यहाँ पे शट डाउन दिया जाएगा, और एक कमबैक आता दिखेगा फ्यूचर एमेट की तरफ से, लेकिन पीछे हटते हुए जाएंगे, बहुत कम एचपी पे बचते हुए निकले हैं। क्या यहाँ पे एक और किल निकलेगा? जी बिल्कुल, दोनों जंगलर यहाँ पे गेम को बदलते हुए दिखेंगे, और उसके साथ लियो मॉड एक और किल यहाँ पे लेते हुए जाएंगे टीम की तरफ से। लेकिन लॉर्ड मिला, लेकिन क्या फायदा यहाँ पे, क्योंकि लॉर्ड जो है वो मिडिल लेन पे ही खत्म हो जाएगा। जो फाइट हुआ, जो गोल्ड गैप था, वो पूरी तरीके से धाराशाही हो चुका है इस समय, और बात करें तो अब गोल्ड डिफरेंस बिल्कुल भी बराबर आ चुका है। जी बिल्कुल, और ये पूरा वक्त एक 4v5 था। यहाँ पे मॉर्टल हंटर के पास मैन एडवांटेज था, लेकिन जो डैमेज था वो जरूर टीम फ्यूचर एमेट चैंपियन की तरफ से आया। वो काफी अच्छा मैन मार्किंग किया गया था, एलिस से अच्छा एंगेज, पर एक बार फिर से एक और एंगेज आता, सुनामी स्लैम यूज किया गया लियोमॉड के अगेंस्ट, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे एक किल लेके जाएंगे। शायद यहाँ पे डबल किल का मौका नहीं, यहाँ पे एक किल मिलेगा ग्रैंजर को, उसको डबल बना दीजिए, उनके पास स्काई पियर्सर ऑलरेडी मौजूद है। इसी के साथ जो एडवांटेज था टीम फ्यूचर एमेट चैंपियन की तरफ से वो वापस से ले जाते हुए टीम मॉर्टल हंटर। और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे कि जो डैमेज है, जो अभी भी एक टीम फाइट का पॉसिबिलिटीज है, वो टीम फ्यूचर एमेट चैंपियन की तरफ से है, लेकिन जो ओवर एक्सटेंशन किया गया उनकी तरफ से यहाँ पे इस टीम फाइट पे, शायद ये बहुत ज्यादा नेसेसरी था, ये नहीं करना था यहाँ पे। इस गलती की वजह से शायद से वापस से जो एडवांटेज था वो टीम मॉर्टल हंटर के पास आ जाएंगे।
जी बिल्कुल, यहाँ पे ओवर एक्सटेंड किया गया। उन्हें लगा था कि शायद आउट नंबर कर सकते हैं, लेकिन लियो मॉड के पास वो सस्टेन रहता है इजीली, डैमेज देते हुए वो इजीली 3 बंदों को काफ़ी देर तक जो फाइट है ना, वो खींच सकता है। और इसी के साथ बात किए जाएँगे, यहाँ पे देखना पड़ेगा। लेकिन वेव मैनेजमेंट बात करें, फ्यूचर एमेट की तरफ से वो उम्दा आता हुआ दिख रहा है और ये दर्शाता है कि एक्सपीरियंस टीम यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने लेन को जो है जाने नहीं दिया, ज़्यादा से ज़्यादा टावर नहीं जाने दिए हैं। हमने देखा है कि अक्सर अगर जो कोई भी नई टीम होती है, उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो फिर टावर भी धड़ाधड़ गिरने लगता है, इस तरह का डोमिनेशन आता हुआ दिखता है। भले ही किल्स यहाँ पे टीम मॉडल हंटर के पास ज़्यादा हो, लेकिन मैप कंट्रोल की बात करें या लेन प्रेशर की बात करें, तो वो यहाँ पे फ्यूचर एमेट के पास यहाँ पे आता हुआ। जी बिल्कुल। और यहाँ पे अगर फिर से एक बार आइटम्स की बात करें, डैमेज की बात करें, ग्रैंजर के पास 55 स्टैक है और उनका जो पैसिव स्टैक है वो 492 है। तो जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा उसको कूलडाउन मिलेगा। लेकिन एक बार फिर से कल यहाँ पे एंगेज करने की कोशिश, शायद यहाँ पे अटक जाएंगे, लेकिन फिर भी सुनामी स्लैम का इस्तेमाल किया, एक जन को लेके आए, बट उनको तराशाई किया जाएगा। यहाँ पे ग्रैंजर की तरफ से एक और किल, यहाँ पे जॉय गिरते हुए, लेकिन यहाँ पे एलिस भागने की कोशिश, लेकिन पूरा नाकाम कर देंगे यहाँ पे ये ग्रैंजर। इंसोमेनिया और भी आगे जाने की कोशिश, लेकिन उनके पास फ्लिकर मौजूद नहीं था, ऑलरेडी यूज कर लिया था, लेकिन और चेज नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 मार्क्समैन बचा है टीम फ्यूचर इमेज चैंपियन की तरफ से, लेकिन बाकी सब यहाँ पे गिर चुके हैं। लॉर्ड आता हुआ 5 सेकंड पे, तो शायद से यहाँ पे टीम मॉर्टल हंटर एक सिचुएशन पे आ पाए कि वो लोग इस गेम को एंड कर पाए, जहां से उनको एक मौका है कि गेम वापस से थ्रो ना करे। लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा कि जो डेड टाइमर से वो वापस से आता हुआ, वो समाप्त होता हुआ, और जो टीम मेंबर्स है वो वापस आते हुए टीम फ्यूचर एमेट चैंपियन की तरफ से, तो शायद से ये लॉर्ड 50-50 हो सकता है। लेकिन जो टीम फाइट का जो प्रेजेंस है, और या फिर जो टीम फाइट का जो डोमिनेंस है, वो अभी भी मॉर्टल हंटर की तरफ से आता हुआ। कलिया का जो सेट आ रहा है, उस पर कुछ भी फॉलो अप या फिर कुछ भी कन्वर्शन यहाँ पे नहीं होता हुआ शिनरा भाई। जी बिल्कुल, देखिए कईए के साथ यही दिक्कत रहता है कि अगर आपकी टीम के पास वो डैमेज ही नहीं है, आप पिक ऑफ करके भी क्या करोगे? आप तो सीधा जो है फूड बन जाओगे सामने। और यहाँ पे आते हुए दिखेंगे बॉडी स्लैम, जरूर दिया गया ग्रॉक को, लेकिन बढ़िया तरीके से रोका भी जाएगा उनको। बात करें यहाँ पे जोन आउट करने का प्रयास किया जाएगा और इजीली जो है पोजीशन यहाँ पे पता कर ली जाएगी एनिमीज की, और उनको जो है पीछे यहाँ पे जोन आउट करने का प्रयास किया जाएगा। अल्टीमेट का इस्तेमाल करेंगे लियो मॉड, यहाँ पे फैंटम स्टीव आता हुआ और उसके साथ लॉर्ड सिक्योर हो चुका है और जाएंगे सीधा अब जो है लेन मैनेजमेंट की तरफ। बात करें वाईएसएस, मौके का फायदा उठाते हुए वो लेन प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं और एक अच्छा खासा जो है टॉप लेन की तरफ से जो लेन का जो प्रेशर है वो आता हुआ दिखेगा और उसको समाप्त करने के लिए ग्रॉक उस तरफ मुड़ते हुए जाएंगे। लेकिन मिनियंस वो आगे बढ़ते हुए बॉटम लेन की तरफ एक बैटल जो है हमें छिड़ती हुई दिख सकती है। थोड़ा समझ के रहना पड़ेगा। ग्रेंजर बढ़िया पोजीशन पीछे लेते हुए यहाँ पे देखेंगे और इसके साथ लॉर्ड वो आएगा टॉप लेन की तरफ से मार्च करते हुआ, और लॉर्ड के साथ आने वाले हैं इनहैंस मिनियन, और इस इनहैंस मिनियंस को रोकना थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है अगर संभल के नहीं खेला तो। सोच समझ के यहाँ पे जो है आपको सोच बूझ के यहाँ पे जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको जो रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपके रिसोर्सेज गए फिर आप सीधा जो है यहाँ पे टेक्टोनिक चार्ज आता हुआ दिखेगा ग्रॉक की तरफ से, और जो है यहाँ पे गेम है वो समाप्त हो सकता है। जी बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज का हमें जो ध्यान रखना पड़ेगा कि टीम फ्यूचर एमेट चैंपियन के पास अभी होली शील्ड जो है वो मौजूद नहीं है, जो होली डिफेंस होने वाला है वो मौजूद नहीं होने वाला। तो अभी भी वेव्स का प्रेशर उनकी तरफ बरकरार रहेगा, उनको सारे लेन्स जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन जो सेकंड टीयर्स है वो काफी जल्दी गिरते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना शायद यहाँ पे पॉसिबल ना हो टीम फ्यूचर एमेट चैंपियन के लिए। बट जो जंगल है वो काफी ज्यादा डिनाई करते हुए टीम मॉर्टल हंटर, वो नहीं चाहते कि इससे ज्यादा फार्म टीम फ्यूचर एमेट चैंपियन को मिले। अभी भी बॉट का जो सेकंड टीयर है वो गिरता हुआ, इसी के साथ जो मैप का जो एक्सपेंशन है वो टीम मॉर्टल हंटर की तरफ ज्यादा है, उनके पास ज्यादा मैप प्रेशर है, और वो अगर चाहे तो यहाँ पे अभी भी एक तरीके से मिनियंस डिनाई कर सकते ताकि गोल्ड ना मिले। यहाँ पे लियोमॉट के ऊपर एक सुनामी स्लैम का इस्तेमाल एचपी लो होते हुए, लेकिन फ्यूरी ऑफ द फिनिक्स स्टन मिलता हुआ, यहाँ पे काफी अच्छा रोटेशन आता हुआ, यहाँ पे थोड़ा द रूइंस का इस्तेमाल, लेकिन डैमेज कम होने की वजह से कुछ नहीं कर सकते। ब्रायंस की यहाँ पे लियोमॉट को गिराते हुए, लियो आपके लापू लापू आते हुए डाइव करते, लेकिन उनके पास अल्टीमेट का जो स्लैशेस है वो मौजूद नहीं रहेगा, तो फ्लिकर बस वापस इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद पनिशमेंट नहीं मिला एक भी मेंबर को टीम फ्यूचर एमेट चैंपियन की तरफ से, लेकिन शायद से यहाँ पे एक और कमबैक की स्थिति बन सकती है फ्यूचर एमेट चैंपियन के लिए। जी बिल्कुल, और यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी का जो पहिया है वो घूमता हुआ दिखेगा, अंदर जाने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन पीछे हटते हुए एक अच्छा खासा डीपीएस यहाँ पे किमी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, और पोक आता हुआ ब्लू बफ की तरफ टीम जाती हुई दिखेगी। वो लेना चाहने का प्रयास यहाँ पे करना चाहती है, और एक अच्छा पोक आता हुआ दिखेगा केलिया की तरफ से।
अब बात करें यहाँ पे जो डीपीएस, वो बढ़िया किमी का यहाँ पे आ रहा है, तो लेन जो है तुरंत क्लियर हो जा रही है और उसी के साथ जो मैप का जो प्रेशर है वो फिर दोबारा से यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो एक तरीके से जो मैप है ना, गेम जो है एक तरफ झुकता है, फिर दूसरी तरफ से गलती होती है तो वहां से जो है गेम पूरी तरीके से पलटता हुआ दिखता है। उसी के साथ टॉप लेन की तरफ जाना चाहते थे, प्रयास रहेगा, वॉल लगाया जरूर है, कोशिश रहेगी, लेकिन सही समय पे पीछे हटेंगे। और यहाँ पे एक बढ़िया रिसोर्सेज यूज हो गया है, यहाँ पे फ्लिकर का इस्तेमाल कर दिया गया है, तो किमी के पास बचने का थोड़ा सा जो है आसार उनके कम हो सकते हैं अगर एक अच्छा गैंग आता हुआ दिखता है। लेकिन लॉर्ड, उनका आगमन भी हो चुका है और इस लॉर्ड के लिए जो टीम है मॉर्टल हंटर वो जरूर जाना चाहेंगी। तो एक अच्छा सेटअप के लिए सबसे पहले एक अच्छी पोजीशन लेनी पड़ेगी और उसी के लिए जो ग्रॉक है वो आगे जाते हुए दिखेंगे हमें। जी बिल्कुल, यहाँ पे ग्रॉक को मैनेज करना काफी मुश्किल होने वाला है टीम फ्यूचर एमएट चैंपियन के लिए। अभी जो लॉर्ड है, लॉर्ड डांस यहाँ पे शुरू करते हुए वो लोग, लेकिन अभी भी जो पोजीशनिंग है वो ज्यादा रिवील नहीं होता हुआ, तो अगर फ्रंट लाइन भी आगे जाके कोशिश करेगी तो यहाँ पे डैमेज दे सकते हैं। यहाँ पे माउंटेन शॉकर का इस्तेमाल पोजीशन रिवील करने के लिए, लॉर्ड का एचपी काफी लो, ट्रैक्शन पल का इस्तेमाल, लापो थोड़ा लो होते हुए यहाँ पे फ्यूरी ऑफ द फीनिक्स आता हुआ, लेकिन जो रेट्रीब्यूशन है यहाँ पे लियो मोड लेके जाएंगे, डैमेज अभी भी काफी अच्छा आता हुआ टीम मॉडल की तरफ से, वो 2 मेंबर गवाएंगे यहाँ पे, लेकिन डैमेज काफी ज्यादा रहने की वजह से उनको 3 मेंबर गवाना पड़ेगा। ट्रिपल किल, दोनों ही टीम 3 मेंबर को गवाएंगे, मेज और यहाँ पे गोल्ड लेनर बचेगा दोनों ही टीम के लिए। लेकिन कौन सा टीम यहाँ पे ज्यादा एडवांटेज लेके जाएगा वो बात है। लॉर्ड आता हुआ टीम मॉर्टल हंटर की तरफ से, ये लॉर्ड जो है टीम फ्यूचर एमएट चैंपियन को डिफेंड करना पड़ेगा, लेकिन काफी अच्छा एक प्रयास था टीम फ्यूचर एमएट चैंपियन के, लेकिन उनको लॉर्ड नहीं मिला और उन लोगों ने मेंबर भी गवाया, लेकिन ट्रेड ऑफ काफी इक्वल था, तो इस हिसाब से शायद से उनको फायदा भी हुआ। लेकिन अभी भी लॉर्ड डिफेंड करना बहुत ज्यादा जरूरत है उनको, अगर डिफेंड नहीं करेंगे तो इनहिबिटर जाएगा, तो इनहिबिटर गया तो मिनियंस का प्रेशर ज्यादा रहेगा उनके ऊपर। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर देखिए लॉर्ड का फायदा उठाना है तो किमी को आपको सबसे पहले मारना पड़ेगा, क्योंकि किमी के पास वो डीपीएस है, वो लॉर्ड को जो है बहुत इजीली गला देता है और जो मिनियन है उनको भी बहुत इजीली यहाँ पे गला दिया जाता है, तो वो जो है बेस तक पहुंच ही नहीं पाता है। और हर बारी जो है टीम फ्यूचर एमएट इसी चक्कर से यहाँ पे जीत रही है बार बारी, तो उनको जो है ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, किसी तरीके से किमी को पहले टारगेट किया जाए या किमी को पकड़ा जाए, या और वाइसेस, इन दोनों का अगर टीम मॉर्टल यहाँ पे धाराशायी कर देती है तो फिर उसके बाद इजी रहेगा उनके लिए इस गेम को जीतने के लिए। और कहीं ना कहीं उनको भी पता है, तो किमी यहाँ पे एक बढ़िया पोजीशन लेके चल रहे हैं, उनको पकड़ना भी थोड़ा दिक्कत रहता है क्योंकि देखिए उनके पास काइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी खासी है, तो किमी को पकड़ना वो भी दिक्कत का सामना है। लेकिन एक सरप्राइज अगर हमें टेक्टोनिक चार्ज आता हुआ दिखता है, एक सरप्राइज गैंग अगर हमें आता हुआ दिखता है, तो मॉर्टल हंटर के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पे आती हुई दिख सकती है। जी बिल्कुल, और हमें एक चीज बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, किमी के पास स्काई पियर्सर है, उनके पास अभी 6 किल है, शायद थोड़ा 60 स्टैक्स ना हो बट काफी करीब होगा, नहीं 60 स्टैक ही है उनके पास, तो ये स्टैक जो है अगर वो मेंटेन कर पाए, अगर उनको 2 किल और मिले, अगर उनके पास फुल स्टैक है, तो इवन अगर ग्रॉक या फिर लापू फुल एच में अगर उनके पास एचपी लो हो गया उनका, तो वहां पे दिक्कत होगा। लेकिन एक और स्काई पियर्सर जो मौजूद है वो मॉर्टल हंटर की तरफ से 80 स्टैक के साथ, तो ये भी काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकती है टीम फ्यूचर एमएट चैंपियन के लिए। यहाँ पे सिर्फ एक चीज का जो डिफरेंस होने वाला है कि वो एंगेज कौन पहले करेगा और उसका फायदा कौन ज्यादा ले पाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से वापस वॉल बनाते हुए ग्रॉक, लेकिन अभी भी टेक चार्ज को अपने लिए रख रहे हैं यहाँ पे ट्रैक्शन पल का इस्तेमाल, लेकिन डैमेज काफी नहीं होने की वजह से वो लोग पनिश नहीं कर सकते। और ग्रॉक के ऊपर जैसे कि आपने कहा अपना रिसोर्सेस वेस्ट करना काफी बेवकूफी की बात होगी यहाँ पे। और एक और चीज बात है कि लॉर्ड आता हुआ 30 सेकंड पे, तो शायद से ये लॉर्ड इस गेम को एक स्टेलमेट से बाहर लेके जा पाए, क्योंकि ये एक इवॉल्व लॉर्ड होने वाला है। हम लोग 18 मिनट का वो पॉइंट पार कर चुके हैं, तो इवॉल्व लॉर्ड के साथ गेम अंत करना काफी आसान हो जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे अब देखिए एक जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी है वो मॉर्टल हंटर ये इस्तेमाल कर सकती है कि आप इंगेज मत करिए, आप पीछे रहिए, सामने वाली टीम को इंगेज करने दीजिए। कहीं ना कहीं केलिया जो है वो आके जरूर अंदर घुसेंगी और उसका जो है फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हर बारी हम देख रहे हैं मॉर्टल हर बारी इंगेज कर रहे हैं, फाइट हो रही है, लेकिन इन दी एंड किमी जो है किल लेके उस फाइट को जो है बराबर ही कर दे रही है। यहाँ पे जो ट्रेड ऑफ है वो यहाँ पे बराबर हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो स्थिति का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी के साथ लॉर्ड डन स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, टीम जो है पीछे से आएंगी, पिकअप किया जाएगा, एक बढ़िया बंदे यहाँ पे दर्शाएंगे, फीनिक्स का अल्टीमेट आता हुआ दिखेगा। और उसके साथ यहाँ पे लॉर्ड के लिए फाइट होती हुई, लॉर्ड अभी भी खाली है, प्रयास किया जाएगा ये लॉर्ड लेने का, 3 बंदे धाराशायी हो चुके हैं, लेकिन लॉर्ड सिक्योर कर लिया गया है। यहाँ पे 3 बंदों के बदले लॉर्ड, क्या यहाँ पे ये आ रही है जो मैं कहूंगा यहाँ पे ये जो फाइट थी, ये जो ट्रेड ऑफ था, क्या यहाँ पे सफल हुआ? क्योंकि लॉर्ड जरूर मिल गया, लेकिन 3 बंदे यहाँ पे धाराशायी हो चुके हैं। और इसके साथ इंस्टेंट रिप्ले शिनुर भाई।
जी बिल्कुल, यहाँ पे काफी अच्छा टेक चार्ज, लेकिन उससे भी अच्छा यहाँ पे थ्रोन ऑफ द रूइंस का इस्तेमाल एलिस की तरफ से फॉलो अप के लिए मौजूद जरूर था टीम, लेकिन किमी यहाँ पे फ्री हिट करते हैं, उनका स्काई पियर से ट्रिगर होते हैं, ट्रिपल किल आसानी से मिलता हुआ टीम फ्यूचर एमेट चैंपियन को। लेकिन अभी भी फाइट खत्म नहीं हुआ, एक और मेंबर डाउन करेंगे यहाँ पे, लेजेंडरी किमी को मिलता हुआ, और बस एक ही मेंबर बाकी है टीम मॉर्टल हंटर की तरफ से जो डिफेंड कर पाए, लेकिन उनके पास यहाँ पे फ्लिकर मौजूद नहीं है, उनके पास यहाँ पे कोई जरिया नहीं है यहाँ पे बचने का, उनको वापस लेके आया जाएगा और उनको धराशायी किया जाएगा। मिड लेन का इनिबिटर टूटता हुआ, लेकिन डेथ टाइमर जो है वो वापस आता हुआ। किमी को यहाँ से शायद बाहर निकल जाना चाहिए, अगर ज्यादा लंबे ठहरे वहां पे तो पनिश कर सकते हैं टीम मॉर्टल हंटर, लेकिन अभी भी गेम बचता हुआ। मॉर्टल हंटर काफी करीब थे इस गेम को हारते हुए। जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट वहां पे पिक ऑफ हुआ था, मेरे को लगा था गेम खत्म हो जाएगा, लेकिन वो डेथ टाइमर जैसे आपने कहा वहां पे सही समय पे जीवन दान मिला उनको, या जीवन दान नहीं, पुनर्जन्म हुआ उनका वहां पे, और अपनी टीम के लिए यहाँ पे गेम को बचाते हुए जाएंगे। इस समय सबसे बड़ी जो संकट बनी हुई है वो किमी बनी हुई है टीम मॉर्टल हंटर के लिए, तो कहीं ना कहीं किमी को किसी प्रकार से पकड़ना पड़ेगा। अब उनके पास आई थिंक और भी किल मिल गए हैं उनको, तो इजीली जो है 80 स्टैक उनके अब बन चुके हैं, तो स्काई पियर्सर का डैमेज और ज्यादा होने पड़ेगा। अगर उनके सामने हल्के से भी आप लो एचपी हो गए तो सीधा आप जो है यहाँ पे डिलीट हो जाओगे, और इसी बात का जो फायदा है टीम फ्यूचर एमेट इजीली उठाती हुई दिख रही है, और कहीं ना कहीं वो दिक्कत आती हुई मॉर्टल हंटर को उनको वापसी करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी कि किसी तरीके से स्कीमी को सबसे पहले उड़ाया जाए, या फिर फाइट इस तरीके से हो कि आप आइसोलेशन वाले अगर कोई भी बंदा अलग घूम रहा है उसको पहले पिक ऑफ करे या उसको पहले करे, क्योंकि आपका आउट नंबर अगर ज्यादा होगा उसी तरीके से आप जीत पाओगे, उससे पहले आप नहीं जीत पाओगे। बात करें यहाँ पे दोबारा से एक और इंगेज आता हुआ दिखेगा ग्रॉक की तरफ से, और पूरी तरीके से यहाँ पे मेल्ट करने का प्रयास किया जाएगा बॉल लगाते हुए, परंतु वो यहाँ पे किमी इजीली काइट ऑफ होते हुए निकल जाएंगी, और लॉर्ड वो फिर दोबारा से कुछ देर में आएगा और एक बार फिर से लॉर्ड के लिए जो टीम है यहाँ पे स्क्रमिश करते हुए दिखेंगी हमें। जी बिल्कुल, 4 लॉर्ड टीम फ्यूचर एमेट डिफेंड कर चुकी है, 5वां लॉर्ड रहेगा इस गेम का। क्या ये लॉर्ड वो अपने तरफ ले पाएंगे या फिर एक बार फिर से डिफेंड करने की परिस्थिति आ जाएगी उनके ऊपर? अभी भी उनके पास यहाँ पे एक अच्छा एडवांटेज, उनके पास डैमेज काफी ज्यादा और गोल्ड भी उनके पास ज्यादा है। हालांकि अभी गोल्ड ज्यादा मायने नहीं रखता है इस पॉइंट पे आके, जब हम लोग 24 मिनट पे आ चुके हैं गेम के, तो अभी बस यहाँ पे कौन पहले पिक ऑफ होगा, कौन पहले यहाँ पे शट डाउन कर पाएगा एक दूसरे को, उसके ऊपर निर्भर है ये गेम। लेकिन एक बार फिर से देख सकते हो जो पोक डैमेज है वो आता हुआ, अभी भी मिनियन का प्रेशर बरकरार करते हुए दोनों ही टीम, लेकिन यहाँ पे ग्रॉक अभी भी काफी आगे है, उनको अगर पनिश किया जाएगा तो जो फ्रंट लाइन टीम मॉर्टल हंटर के पास है वो काफी कम होता रहेगा। लेकिन अभी भी लॉर्ड जो है उसको अटैक नहीं करते हुए कोई भी टीम, उसको अभी तक उसका जो एचपी है उसको लो नहीं करते हुए, लेकिन अभी भी मिनियन का जो स्लो पुश है वो यहाँ पे मॉर्टल हंटर को शायद ज्यादा यहाँ पे फायदेमंद रहेगा। जी बिल्कुल, और उसी के साथ वो जो डैमेज है वो आता हुआ दिखेगा किमी की तरफ से, एक बढ़िया इंगेज आता हुआ पूरी तरीके से जोन आउट किया जाएगा मॉर्टल हंटर की टीम को, उनको लॉर्ड के पास आगे आने नहीं दिया जाएगा, और यहाँ पे लॉर्ड ऑन स्टार्ट हो चुका है, लॉर्ड लेने का प्रयास, एक अच्छा खासा यहाँ पे जोन आउट ऑलरेडी मिल चुका है टीम फ्यूचर एमेट को, और वो जितना ज्यादा हो सके जोन आउट करना चाहेंगे। लापो वहां पे मौजूद रहेंगे, ग्रॉक वहां पे मौजूद है, एक टेक्टा चार्ज हमें आता हुआ दिख सकता है। जी बिल्कुल, हमारा जरूर जाएगा, और उसी के साथ यहाँ पे निकल करके दिखा दिया है, और यहाँ पे लॉर्ड अपनी टीम के लिए चुरा लिया है। इस समय टीम मॉर्टल हंटर को पीछे हटना पड़ेगा, बिल्कुल जितना समय हो सके पीछे हट जाइए, और यही मौका रहेगा आपका कमबैक करने का। जल्दी से जल्दी लॉर्ड आएगा, उसके साथ यहाँ पे पुश करिए, और ये एक आखिरी गेम चेंजिंग हमें आता हुआ दिखा। ग्रॉक खुद को सैक्रिफाइस किया, लेकिन जाते जाते अपनी टीम के लिए वो लॉर्ड यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। उसी के साथ यहाँ पे एक बढ़िया फ्रीज आता हुआ दिखेगा लियोमॉर्ड की तरफ से, क्या यहाँ पे बच पाएंगे, कोशिश रहेगा। इमॉर्टलिटी पॉप ऑफ हुआ है दोनों का, बहुत ही कम एचपी बचते हुए निकलेंगे, लेकिन वो किमी का पीछे से स्काई पियर्सर आता हुआ, वो डैमेज आता हुआ, और उसी के साथ यहाँ पे धराशायी हो जाएंगे लियोमॉर्ड। लॉर्ड जा चुका है टॉप लेन की तरफ से, लेकिन मिनियंस उनको रोक दिया जाएगा मिड लेन की तरफ ही, और एक बढ़िया यहाँ पे स्ट्रेटेजी आती हुई दिखेगी टीम फ्यूचर एमेट की तरफ से। मिनियंस ऑलरेडी आ रहे हैं बेस की तरफ, और मिनियंस को डिफेंड करना थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, यहाँ पे देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही फिनिश ऑफ करने के लिए पिकअप किया जाएगा ग्रेंजर को, जैसे लगातार डैमेज आता हुआ किमी का, और यहाँ पे गेम एंड होगा। मिरेकल ने कोशिश बहुत अच्छी करी थी ग्रॉक के द्वारा, लेकिन जो डीपीएस था और जो एक एडवांटेज था यहाँ पे लेन क्लियरिंग एबिलिटी जो टीम के पास थी, वो यहाँ पे एमेट के पास, और उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए लास्ट तक गेम को अपने नाम बनाते हुए, इस मैच को अपने नाम बनाते हुए, और एक बढ़िया जो है गेम प्ले आता हुआ, बढ़िया मैच यहाँ पे आता हुआ दिखा। शिनरू भाई मजा आ गया, ग्रॉक ने जिस प्रकार से वो जो अल्टीमेट वहां पे लगाया था और वो जो लॉर्ड चुराया, एकदम उम्दा मूवमेंट यहाँ पे बनता हुआ। जी बिल्कुल, हालांकि यहाँ पे टीम मॉर्टल हंटर्स ने 5 लॉर्ड लिए थे, लेकिन
एक भी लॉर्ड इस गेम को अंत करने में सक्षम नहीं हुआ। और ये शायद से एक एपिक कमबैक ही बोल सकते हैं हम लोग फ्यूचर एमेट चैंपियन की तरफ से, क्योंकि उनके पास काफी यहाँ पे डिसएडवांटेज था अर्ली गेम से। वो लोग काफी पीछे थे, उनके पास गोल्ड नहीं था, उनके पास किल्स नहीं थे, 0-6 का अंक था पहले ही कुछ मिनट्स पे गेम का। तो उस हिसाब से यहाँ तक पहुंचना ही एक काफी ज्यादा मिरेकल रहेगा। लेकिन जो असली मिरेकल था, आपने वही सही कहा कि क्रॉक ने करके दिखाया था वहां पे, लेकिन उसको कन्वर्ट यहाँ पे पूरी टीम नहीं कर पाई। तो शायद से यहाँ पे ग्रॉक भाई थोड़ा तो गुस्सा होंगे, लेकिन एक काफी अच्छा गेम प्ले आता हुआ फ्यूचर एमेट चैंपियन की तरफ से। काफी पेशेंट गेम प्ले कहूंगा, और काफी एक प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड गेम प्ले था कि उनको पता था कि उनको कहाँ पे एडवांटेज मिल सकता है और कब उनको फाइट लेनी थी। लेट गेम पे वहां पे उन्होंने फाइट लिया, उन्होंने काफी लॉन्ग गेम खेला, हालांकि उनको वो ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिल रहा था वहां पे, लेकिन वो जो पिक ऑफ्स था वो काफी अच्छी तरीके से उन लोगों ने सिक्योर किया था। यहाँ पे मार्क्समैन वर्सेस मार्क्समैन का मैच था, यहाँ पे ग्रैंजर वर्सेस किमी का था। यहाँ पे किमी लास्ट तक ज्यादा उभर के आ पाए, तो इसी वजह से उनके टीम को वो कैरी कर पाए इस गेम पे। लेकिन मैं कहूंगा कि काफी करीबी मामला था दोनों ही टीम के लिए, कोई भी जीत सकता था। लेकिन जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का जो गेम प्ले था लास्ट तक, वो टीम फ्यूचर इवेंट चैंपियन यहाँ पे अपनी तरफ लेके चली गई। जी बिल्कुल, एकदम बेहतरीन गेम प्ले आता हुआ दोनों ही टीम ने, जैसे कि आपने कहा कांटे की टक्कर थी, एक तरफ से पुश आ रहा था दूसरी तरफ से, लेकिन जो यहाँ पे हुआ वो लेट गेम तक खिंच गया। और लेट गेम में किमी उनका जो है वो गेम आता हुआ, आइटमाइजेशन उनके पास आ चुके थे, और बात करें यहाँ पे स्काई पेसर उनके स्टैक आ चुके थे, और कहीं ना कहीं वो जो गेम प्ले आता हुआ दिखा, वहां पे आइटम स्विच भी हमने देखने को मिला लियोमॉड की तरफ से। पहले फ्रीज आया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका इमोर्टिलिटी आया, बढ़िया आइटम स्विच भी हमें देखने को मिले थे। तो गेम जो था बहुत ही बेहतरीन तरीके से, दोनों ही टीम को मैं यहाँ पे कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। भले जीती एक है, लेकिन दोनों ने अपना जो गेम है इस पूरी सीरीज पे अपना एक छाप जरूर छोड़ा है यहाँ पे। और इसी के साथ देखिए सज्जनों, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं बिल्कुल छोटे से एक ब्रेक के बाद एक नए मैच के साथ। Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
The strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. हेलो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका इस साथ आप सभी का स्वागत होता हुआ। जी बिल्कुल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी नेक्स्ट मैच की तरफ आगे बढ़ेंगे। पिछला वाला गेम काफी जी बिल्कुल, पिछला वाला मैच काफी अच्छा जाता हुआ दिखा था हमको और कांटे की टक्कर थी दोनों ही तरफ से। लेट गेम आते आते जो मैच है वो पूरा यहाँ पे पलटता हुआ हमें दिखा था और उसी के साथ दूसरा जो मैच है यहाँ पे होते हुए दिखेगा। एक साइड रहने वाली टीम क्लच कॉर्ड, दूसरी तरफ यहाँ पे होने वाली है मेटारू और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम क्लच करके जाएगी और दूसरी तरफ कौन सी जो टीम है वो यहाँ पे मेटा दिखाती हुई जाएगी। क्या मेटारू यहाँ पे अपना मेटा स्टैब्लिश करती हुई जाएगी या फिर टीम क्लच कॉर्ड यहाँ पे जो है क्लच करते हुए इस मैच को अपने नाम लेते हुए जाएगी।
जी, अगर क्लच की बात करें तो ग्रॉक शायद एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पिक रहेगा कोई भी टीम के लिए, क्योंकि जो उनका प्रेज़ेंस है, जो उनका एक टीम फाइट पे कैपेबिलिटी है, जो सेट मेकिंग कर पाए, तो उस हिसाब से काफ़ी सही रहता है वो हीरो। तो अगर चाहे तो उसी से एक क्लच मोमेंट बना सकते हैं टीम क्लच गॉड, लेकिन आई थिंक मेटारो को भी पता है कि उनको यहाँ पे फ्री में कुछ हीरोज़ नहीं देना है, यहाँ पे कुछ हीरोज़ को डिनाई करना है, जिससे उनका रोटेशन या फिर जो प्रेशर रहेगा मैप पे वो कम रहे, और उनको फार्मिंग एंड रोटेशन जो साइड लेन्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो यहाँ पे दे पाए। तो उस हिसाब से एक बार देख सकते हैं कि क्लच गॉड वही है जो फर्स्ट बैन करते हैं। यूजुअली ये रेड साइड बैन होता है, ब्लू साइड बैन नहीं होता है, तो ये काफी अलग किस्म से बैन कर रहे हैं। बट जो रेड साइड बैन है यहाँ पे, जो जूशिन है, उसको जरूर बैन करते हैं मेटारू। तो वो लोग नहीं चाहते कि डिसरप्शन जो हो मिड लेन की तरफ से आए, या फिर जो एक सेट मेकिंग, नॉट सेट मेकिंग नहीं बोलूंगा, बट एक डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ना मिले टीम क्लच गॉड को, वो जरूर डिनाई करते हुए वो लोग। जी बिल्कुल, और यहाँ पे लैंसलॉट आता हुआ दिख रहा है मेरे को, क्या शायद से रिस्पेक्ट बैन आता हुआ दिख रहा है शिनरू भाई। जी बिल्कुल, हो भी सकता है यहाँ पे, क्योंकि कुछ प्लेयर्स हैं मेटारो की तरफ से जो ये हीरो को काफी अच्छे से खेल सकते हैं। तो आज देखना पड़ेगा कि कौन जंगल खेल रहा है। यहाँ पे 2 जंगलर है उनके पास, हालांकि दोनों ही काफी अच्छे मैकेनिक्स है उनके पास, लेकिन इस गेम पे कौन खेलेगा वो देखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम मैं जिस चीज का काफी ज्यादा जिक्र करता हूँ यहाँ पे, आपको पता है ना, मिड डुओ का जो प्रायो होता है यहाँ पे, आप कौन से हीरोज को देना चाहेंगे मिड लेन पे, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक सेट मेकिंग हीरो चाहिए आपको, तो अभी भी काफी अच्छे हीरोज ओपन है, जैसे कि हिल्डा हो गया, जैसे कि कलिया हो गया। तो कई हीरोज फर्स्ट पिक पे आप लेना पसंद करेंगे एज अ फर्स्ट पिक, अगर आप ब्लू साइड पे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए आप पिक जरूर करेंगे, आप पिक करते हैं यहाँ पे तो सामने वाले को आप 2 पिक दे देते हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा पिक करना पड़ेगा आपको जो सेफ भी रहे आपके हिसाब से, और अगर सामने वाला 2 पिक उठाता भी है तो उसके बावजूद आप एडवांटेज पे रहे, तो ऐसा कुछ पिक करना जी पड़ेगा इनको अगर जीतना है तो क्लच गॉड को। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा वो पिक आता हुआ दिखेगा। तीसरा बैन आता हुआ हमें दिखने वाला है मेटारू की तरफ से, थोड़ा सोच विचार करते हुए टीम के साथ। शिनूरू भाई क्या लगता है? चलिए। पता चल गया हमें, यहाँ पे ईसन शिन को बैन किया जाता हुआ टीम मेटारो की तरफ से, लेकिन इसी चक्कर में यहाँ पे सोरा को गवा देंगे, सोरा एज अ फर्स्ट पिक। लेकिन मुझे लगता है सोरा जितना दिक्कत देता था कुछ हफ्तों पहले, अभी उतना डिफिकल्ट नहीं है इस हीरो को काउंटर करना, क्योंकि काफी ज्यादा वेज या फिर काफी ज्यादा यहाँ पे जरिया है उनको काउंटर करने का। यहाँ पे कोई भी टीम के लिए, चाहे वो वैलेंटीना पिक करके हो, या फिर आप ईएक्सपी लेन पे फोवियस पिक करे, तो दोनों ही एक अच्छा काउंटर होता है। लेकिन जो कलिया का मैं जिक्र कर रहा था वो बिल्कुल भी देना पसंद नहीं करेगी टीम मेटारू। आफ्टर क्लच कॉर्ड ने यहाँ पे सोरा पिक कर लिया, तो काफी अच्छा स्टील, काफी अच्छा डिनाई रहेगा यहाँ पे, स्टील नहीं कहूंगा, डिनाई है यहाँ पे। और क्लॉड को काफी अर्ली पिक किया गया, लेकिन आई थिंक इट्स काइंड ऑफ वर्थ इट, क्योंकि क्लॉड का जो रोटेशन एंड प्यूरीफाई है उससे आप काफी ज्यादा इन एंड आउट कर सकते हैं कोई भी टीम फाइट पे। जी बिल्कुल, डीपीएस के तौर पे यहाँ पे लॉक इन किया जाएगा, और हालांकि अब फाइटर एम्बलम रिवैम्प होने के बाद तो हमें पता है कि जिस तरीके डीपीएस एमएम है वो काफी ज्यादा मेटा पे चल रहे हैं, जो अटैक स्पीड एमएम है जी जी। बेसिकली वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि अभी जो है फाइटर एम्बलम के साथ आपको जो है यहाँ पे हाइब्रिड लाइफ स्टील मिलता है, तो बेसिक अटैक के साथ साथ स्किल पे भी आपको जो है यहाँ पे लाइफ स्टील मिलता है, तो एक बढ़िया यहाँ पे स्ट्रेटेजी आती हुई दिख रही है, और एक बढ़िया जो है डीपीएस वो सिलेक्ट करते हुए दिखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ पे आते हुए दिखेंगे कटोत कचा, एक बढ़िया सेट यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है मेरे को, और इसके साथ उस सेट को कंप्लीट करने के लिए जेतियन यहाँ पे आती हुई दिख रही है। और जेतियन हालांकि अभी देखा जाए तो रिसेंटली बहुत ज्यादा पिक होने लगी है टूर्नामेंट। जी बिल्कुल, क्योंकि उनके पास काफी अच्छा एक टूल किट है, उनके पास एक पैसिव भी है जो काफी फायदेमंद होता है कोई भी टीम के लिए। और अगर जो जी फर्स्ट 3 पिक्स है टीम क्लच गॉड की तरफ से, काफी ज्यादा एओई स्किल बेस्ड है, काफी ज्यादा सेट पोटेंशियल भी उनके पास, अगर प्रॉपरली टाइमिंग किया जाए तो इन तीनों हीरो से एक टीम फाइट वाइप आउट हो सकता है। तो उसको थोड़ा देके खेलना पड़ेगा। मेटारू यहाँ पे यूजोंग लेंगे जो काफी अच्छा काउंटर कर सकते हैं इस मेज को, एंड इन ऑल्सो जनरली एक काफी स्ट्रॉन्ग टीम फाइट प्रेजेंस होता है, एक डाइव भी मौजूद होता है आपके पास, कि अगर आप चाहे तो जोन आउट कर सकते हैं टीम फाइट पे, काफी फायदेमंद रहते हैं। आप अगर ऑब्जेक्टिव टेक की बात करें उस वक्त पे भी, तो इस हिसाब से अच्छा पिक आता हूँ मेटारो की तरफ से। दोनों ही टीम काफी अच्छा ड्राफ्ट करते हुए, लेकिन अभी आप क्या डिनाई करना चाहेंगे? यहाँ पे गोल्ड लेन पिक हो चुका है, जंगल दोनों ही टीम ने नहीं लिया है, और मिड लेन टीम मेटारो के लिए बाकी है। तो शायद मेटारो यहाँ पे जंगल डिनाई करे, या क्लच कॉर्ड यहाँ पे मिड लेन को थोड़ा बैन करे। जी बिल्कुल, यहाँ पे मिड लेन की तरफ बैन जरूर करना पड़ेगा। देखिए अब उनको गलाने के लिए यहाँ पे बात करें यूजोंग को, तो है नहीं कैरी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती थी, लेकिन क्लच गॉड ने वो पहले ही यहाँ पे बैन कर दिया है।
तो उनके पास वो ऑप्शन नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं लूनॉक्स आप गोल्ड अगर जाना चाहें तो एक बार को सोच सकते हैं जाने के लिए, लेकिन वो फिर बात हो जाएगी कि गैम्बल करेंगे आप उसके ऊपर पूरी तरीके से। जी तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके। और दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे लापू लापू बैन आते हुए दिखेंगे एज अ फ्रंट लेनर, हमें देखने को नहीं मिल सकते हैं। गोल्ड लेन पे भी जा सकते थे। बात की जाए सोरा, सोरा भी यहाँ पे देखिए गोल्ड लेन पे खेला जा सकता है अगर खेलना चाहे तो, परंतु बहुत ज्यादा एक मैं कहूंगा एक दाव लग जाता है उनके ऊपर अगर आप जाएंगे गोल्ड लेन सोरा तो। जी, यहाँ पे सोरा अगर गोल्डन खेलेंगे तो आपको यहाँ पे वैलेंटीना जरूर बैन करना चाहिए। मैं थोड़ा मुझे थोड़ा उम्मीद थी कि अगर अभी बैन आता हुआ तो वैलेंटीना की बैन आएगा, क्योंकि हम लोग मिडलेन को डिनाई करने की बात कर रहे थे क्लच गॉड की तरफ से। अभी भी वैलेंटीना का बैन नहीं आता, वो लोग जंगलर डिनाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो जंगलर डिनाई करना सही है, बट क्या वो अभी जरूरत है? लियो मोड बैन आफ्टर यू ऑलरेडी हैव दिस काइंड ऑफ ड्राफ्ट, आई डोंट थिंक कि उतना ज्यादा फायदेमंद होने वाले आप उस सबको बैन करके। लेकिन डाइव को डिनाई करना सही रहेगा यहाँ पे। लेकिन अगर अभी भी गोल्ड लेन पे सोरा को भेजोगे तो वहां पे उनके अगेंस्ट पे होगा क्लॉट, लेकिन क्लॉट को पकड़ना काफी मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत स्लिपरी होते हैं कोई भी टीम फाइट पे। काफी अगर लेनिंग भी कर रहे तो वो आराम से आके ब्लेजिंग डुएट इस्तेमाल करके लेन क्लियर करके चले जा सकते हैं। अर्ली गेम पे उतना ज्यादा डैमेज नहीं रहता, तो आप लेन क्लियर करने के लिए यूज कर सकते हो स्किल को। और बाकी जो बात है कि मिड लेन की तरफ आपने जो लूनॉक्स का जिक्र किया था, वो भी आ सकता है टीम मेटारू की तरफ से। बर्स्ट डैमेज, वो मिड टू वो कॉम्बो जो होता है कलिया प्लस लूनॉक्स कॉम्बो, वो काफी अभी भी पॉपुलर है काफी बहुत सारे टीम्स में। और पॉसिबिलिटी भी है कि टीम मेटारू उसको पिक करे आप। जी बिल्कुल, अगर आएगा तो एक बढ़िया तरीके से यहाँ पे ब्रिलियंस का इस्तेमाल करते हुए बच सकते हैं। दूसरी साइड पे मेरे को लगे रहा था कि शायद से हायाबुसा बैन आता हुआ दिख सकता है, और वो आता हुआ दिखेगा क्योंकि नहीं चाहेंगे कि बैकलेन की तरफ कोई आए शैडो किल लगाते हुए आपको जो है पीछे मेज को अगर अकेले पकड़ लेंगे हायाबुसा तो दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। तो चलिए एक अच्छा सा यहाँ पे आता हुआ दिखे, लेकिन अभी भी नोनॉक्स पिक ओपन है पूरी तरीके से। और बात करें गोल्ड लेन की तरफ तो मेरे को लग रहा है कि अगर आप क्लॉट के अगेंस्ट ऐसा क्या जाएं कि आपके साथ जो है अच्छा खासा एक डीपीएस भी आ जाए आपके पास, और एक लेनिंग आपकी जो है वो स्ट्रांग बन जाए, तो किस तरीके का पिक हो सकता है यहाँ पे शिनरो? अगर आप रैंक खेल रहे तो आप यूजुअली प्रेफर करेंगे आप लेस्ली जाए, बट शायद से यहाँ पे यूशोंग और कलिया के साथ वो काफी मुश्किल हो सकती है। जो दूसरा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे शायद से ग्रैंजर हो। हाँ, लीडिंग पे विनिंग नहीं होता, लेकिन टीम फाइट पे काफी अच्छा प्रेजेंस रहता है। अगर अर्ली गेम स्नोबॉल भी मिल जाए तो आप आराम से पनिश कर सकते हो। लेकिन हम लोगों ने लास्ट गेम पे भी देखा था कि अगर आपके पास प्यूरिफाई नहीं है तो आप इजीली मार्क हो सकते हो कलिया से। और यहाँ पे चौथा पिक जो है टीम मेटारो की तरफ से वो आता हुआ बाक्शा, और फ्रंट लाइन को ऐड करते हुए और एक एंटी हील भी आता हुआ, ताकि जो हीलिंग कैपेबिलिटीज है जो सोरा के पास होता है वो थोड़ा सा और कम हो जाए। और आप लूनॉक्स गोल्ड की बात कर रहे थे, शायद यहाँ पे काफी अच्छा रह सकता है टीम क्लच गॉड के लिए, क्योंकि उनको एक मेल्ट डाउन हीरो चाहिए और लूनॉक्स से बेहतर और दूसरा कुछ हीरो मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे मिल सकता है उनके लिए। जी बिल्कुल, यही मौका है इस समय। फटाफट से अगर लूनॉक्स को लॉक इन किया जाए क्लच गॉड की तरफ से तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे तीन बंदे यहाँ पे रहने वाले हैं सामने, ठीक है। यूजोंग अपना अल्टीमेट मार के आएंगे सामने की तरफ, उसके साथ साथ बादशाह वहां मौजूदा रहेंगे फ्रंट लेन पे। पीछे से फ्री हिट यहाँ पे क्लॉड को मिलेगा, और क्लॉड को जितना रूम मिलेगा वो इतना जो है यहाँ पे इजिली फार्म होते हुए वो टीपीएस प्रदान करेंगे टीम की तरफ। और यहाँ पे लॉक इन किया जाएगा सीसी को, और सीसी जरूर आएंगी। चलिए थोड़ा ब्रॉल की तरफ जाती हुई दिख रही है टीम क्लच गॉड। आपके पास ब्रॉल अच्छा है, लेकिन फिर दोबारा से यहाँ पे वही दिक्कत आएगी। देखिए लेन क्लियरिंग एबिलिटी बहुत कम है यहाँ पे। अगर लेन बहुत सारी आती है तो आप क्लियर कैसे करेंगे? कटोत्कचा वहां पे मौजूदा जरूर रहेंगे, मेज वहां पे मौजूदा जरूर रहेगी, लेकिन इतनी जल्दी आप इतने सारे मिनियंस को क्लियर मेरे ख्याल से तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीसी भी जो है लेन क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ खास हीरो नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप मुझे पूछते कि कौन सा दो हीरो में प्रेडिक्ट करता, मैं बोलता कि लूनॉक्स एंड एक्सबॉर्ग शायद सबसे बेस्ट रहता है यहाँ पे टीम क्लच गॉड के लिए। उनके पास वेव क्लियर भी होता है और उनके पास ये बागजिया के साथ डील करने के लिए भी अच्छा हीरो रहता। और यहाँ पे टीम मेटा की तरफ फारसा आता हुआ, लाइक रेंज वाइज अच्छा है, लेकिन आप 3 काउंटर के अगेंस्ट पे खेल रहे हो, वो आपको याद रखना चाहिए। जो फ्यूरी ऑफ द फीनिक्स है वो इंस्टेंटली फेदर एस्ट्रा को कैंसिल करता है, फिर एक गटोट काचा है जो आपके ऊपर डाइव करने वाला है। तो फारसा शायद से सबसे बेस्ट पिक ना रहे इस ड्राफ्ट पे, लेकिन फिर भी ये रिस्क टीम मेटारू जानते हुए भी ले रहे हैं, तो शायद से ये एक हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाला पिक रहेगा उनकी तरफ से। लेकिन आपकी क्या राय है इस ड्राफ्ट को देख के? जी बिल्कुल, मैं भी आपकी तरह थोड़ा सा निराशाजनक हूँ, क्योंकि लूनॉक्स पूरी तरीके से ओपन था। आप लूनॉक्स उठा लेते तो आपके पास एक और प्लस पॉइंट हो जाता है इजीली विदाउट। अगर घटोत्कचा भी यहाँ पे डाइविंग करते आपके पास तो बिलियंस मार के आप इजीली निकल सकते थे, और फिर वहां से जो है अपने डैमेज अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हो, वहां पे डैमेज इजीली आप जो है यहाँ पे दे सकते थे और हील कर सकते थे खुद को। तो
फारसा के साथ जाना देखिए एक तरफ से मैं कहूंगा कहीं ना कहीं वो माइक्रो प्ले भी आता है उनकी तरफ, वो कंफर्ट पिक की तरफ भी आता है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप लूनॉक्स प्ले लेके भी उतना अच्छा नहीं खेल सकते जितना आप जो है फारसा लेके खेल लेंगे। इवन आपके सामने काउंटर है, लेकिन आपको अगर अपने ऊपर भरोसा है, आपको अपने माइक्रो पे भरोसा है, तो व्हाई नॉट। जी बिल्कुल। और एक और चीज जो फारसा के साथ ऐड होता है वो फास्ट रोटेशन। उनके पास ऑलरेडी यहाँ पे बाक्सिया है, तो फारसा के साथ वो रोटेशन और भी ज्यादा उनके लिए आसान हो जाता है कि वो जाके टीममेट्स को यहाँ पे हेल्प कर पाए, एड कर पाए, जो शायद जरूरत है टीम मेटारो को यहाँ पे अपने साइड लेनर्स को फार्म अप करने के लिए। उनके पास एक क्लॉड है और एक यूशोंग है। यूशोंग तो अपने आप लेन कर सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा इस गेम पे क्या स्थिति आके हो खड़ी होगी, क्योंकि बेस्ट ऑफ वन है टीम क्लच गॉड बनाम टीम मेटारो। तो देखते हैं कौन इस राउंड को क्लियर करेगा और अगले राउंड पे बढ़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एल्गैम्बो ई स्पोर्ट्स प्रेजेंटिंग द एलीट 16 स्क्रिम्स। तो मैं हूँ शिनरयू और मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ पे शिनरा भाई, जो आप हम लोग रहेंगे इस गेम की वॉइस। तो इसके साथ देखते हैं कि क्या होने वाली इस गेम की अर्ली रोटेशन और अर्ली 5 मिनट्स पे जो रोटेशन होने वाली है, और कौन सी टीम ज्यादा प्रेशर पे रहेगी। यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिल रहा है कि पोक डैमेज आता हुआ दोनों ही टीम की तरफ से, लेकिन यहाँ पे मेटारो शायद थोड़े से एडवांटेज पे है, बट कितने देर के लिए। जी बिल्कुल। और इसी के साथ सुई के ऊपर प्रहार यहाँ पे होता हुआ जाएगा, लेकिन डिनाई किया यहाँ पे लीथो वॉन्डर यहाँ पे लेके जाएंगे बादशाह। और इसी के साथ एक अच्छा मैं कहूंगा यहाँ पे रोटेशन वो आते हुए दिखा, लीथो सिक्योर करते हुए सीधा जाएंगे अपने बफ की तरफ लेवल 4 होने के लिए। दूसरी तरफ देखा जाए तो बॉटम लेन की तरफ थोड़ा सा पोक करते हुए दिखेंगे सीसी, और अच्छा खासा लेन को जो है फ्रीज करते हुए फार्म डिनाई किया जा रहा है क्लॉड का, और थोड़ा लेट किया जा रहा है कि जितना लेट होगा उतना बढ़िया, और मजबूर किया जा रहा है कि क्लॉड आगे आके खेले। दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत ही सेफ खेल रहे हैं सोरा। उनको भी पता है कि क्योंकि अर्ली गेम में जब तक आपका लेवल 4 नहीं आता तब तक सोरा जो है उनको सेफ खेलना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और अगर हम स्पेल्स की भी बात करें यहाँ पे, तो 2 वेंजेंस लेके आए हैं टीम क्लच गॉड। यहाँ पे रिवाइटलाइज आप यूजुअली प्रेफर करते हो अगर आप गडुड काचा खेल रहे हो, लेकिन वेंजेंस भी काफी अच्छा है क्लॉड को यहाँ पे बर्स्ट डाउन करने के लिए। लेकिन एक और जो चीज है यहाँ पे जो दिक्कत दे सकती है कि आपने ऑलरेडी एक वेव क्लियर का बात जिक्र किया था यहाँ पे। हाँ, आप जीटीएन से वेव क्लियर कर सकते हो, लेकिन गडुड काचा पे शायद से यहाँ पे कंकर्सिव ब्लास्ट लेने से वेव क्लियर और भी ज्यादा आसान रहता। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा रोटेशन आता हुआ बागजे की तरफ से, लेकिन टर्टल यहाँ पे मौजूद है। उसके पहले क्या हुआ, एक फाइट लेना पसंद करेंगे यहाँ पे। जी बिल्कुल। टीम आई जरूर थी, लेकिन अभी पोजीशन लेती हुई दिखेगी। थोड़ा सा जो है उनको भी पता है कि यहाँ पे सुयू आके उनके पास अच्छे खासे चांसेस रह सकते हैं चुराने के टर्टल, तो पीछे हटेंगे अभी। और पीछे यहाँ पे हटते हुए बात की जाए तो टॉप लेन की तरफ से अच्छा खासा रोटेशन आता है। उसके साथ ड्रैगन यहाँ पे आएंगे ब्लैक ड्रैगन फॉर्म में आते हुए अंदर की तरफ जाते हुए एक बढ़िया अल्टीमेट फर्स्ट ब्लड यहाँ किया जाएगा। और उसके साथ जंगलर यहाँ पे दारा जाए, जिससे कल्टेड गोल्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, ये स्ट्राइक का इस्तेमाल, और उसके साथ वेंजेंस पॉप अप होगा। और एक और यहाँ पे रिसोर्स जो है इंपॉर्टेंट रिसोर्स यहाँ पे जो है वो यूज करवा दिए गए हैं। शिनिरो जी बिल्कुल, 1 for 1 ट्रेड था यहाँ पे, लेकिन जो टर्टल है उस वजह से मेटारू को यहाँ पे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। थोड़ा सा गोल्ड उनके तरफ ज्यादा रहेगा, करीबन 1000 तो नहीं कहूंगा, लेकिन करीबन 1000 के करीब ही यहाँ पे। तो उस हिसाब से शायद से उनको एक एडवांटेज मिले यहाँ पे। उनको यहाँ पे स्केलिंग चाहिए। क्लॉड हालांकि मौजूद नहीं थे टीम फाइट पे, लेकिन उनको काफी अच्छा स्पेसिंग मिल गया था यहाँ पे, क्योंकि जो रोटेशन था वहाँ पे सीसी को जाना पड़ा मिडलैंड की तरफ, तो उस वजह से उनको थोड़ा सा यहाँ पे फार्म करने का ज्यादा मौका मिला, स्पेस मिल गया। तो उस वजह से उनको शायद यहाँ पे आइटम का जो नीड है वो जल्दी वो फुलफिल हो जाए। लेकिन एक बार अच्छा रोटेशन आता हुआ विंग्स बाय विंग्स से फारसा यहाँ पे बॉटलिंग की तरफ थोड़ा जाके प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन जो टीम क्लच गॉड का रोटेशन है वो थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन शायद यहाँ पे जो टीम फाइट पार्टिसिपेशन जो होगा, लेकिन उस पर ज्यादा प्रेजेंस जीटीएन का रहता है और गडुड काचा का रहता है इन कंपैरिजन टू एक कलिया प्लस फारसा का, क्योंकि उनके पास सिंगल टारगेट हीरोज है वो लोग। बट ये तो उन्होंने जो हीरो होते हैं वो मल्टीपल टारगेट को साथ में हिट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से टीम फाइट पे यहाँ पे क्लच गॉड ज्यादा फोकस करना चाहेंगी। मेटारू शायद पिक ऑफ ड्राफ्ट खेले यहाँ पे, जितना रोटेशन कट ऑफ कर सकते हैं, जितना मेंबर्स को वो लोग ऑफ टारगेट ऑफ पोजीशन पे पकड़ पाए उतना ज्यादा पनिश करना पसंद करे। लेकिन एट द सेम टाइम हम देख सकते हैं कि वो लोग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके खेल रहे हैं, ज्यादा बेकार के फाइट नहीं ले रहे थे। लेकिन वो कहते यहाँ पे एक अच्छा सुनामी स्लैम आता हुआ तुषार को एक बार फिर से आउट किया गया। लेकिन लुक दैट फ्लिकर फारसा की तरफ से अच्छा क्लच आता हुआ। गडुड काचा ने वहां पे जंप किया था, लेकिन उसी मोमेंट पे उन्होंने अपना पोजीशन चेंज करके उसको डॉज कर लिया। तो यही है जो माइक्रो प्ले जो आप जिक्र कर रहे थे। जी बिल्कुल, भाप लिया था। उनको पता था कि यहाँ पे जरूर अल्ट मार के कूदेंगे, और एक बढ़िया फ्लिकर का इस्तेमाल आते हुए हमें दिखा। और इसी के साथ ही
देखिए टर्टल फिर दोबारा से आ रहा है, यूजांग ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हैं वहां पे, कटोट कच्चा मौजूदा जरूर है, वो विजन जरूर दे रहे हैं टीम के लिए, और इस बार ये टर्टल थोड़ा सा टीम क्लच कॉर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा से वही बात रहेगी, एडवांटेज अभी भी मिटारो के पास है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज जो है ना वो बहुत अच्छे खासे रिसोर्सेज है। फारसा के साथ आप जो है यहाँ पे एयर स्ट्राइक देते हुए अच्छा खासा पोक के साथ साथ जोन आउट भी कर सकते हैं। फिर बात करें यहाँ पे ड्रैगन की, तो वो आते हुए दिखेंगे। उसी के साथ जो टीम है यहाँ पे पोजीशन लेते हुए शिनरू। जी बिल्कुल, अभी टर्टल जो सेकंड टर्टल है गेम का, उसको दोनों ही टीम में से किसी ने भी लिया नहीं है, तो अभी स्टार्ट जरूर करेंगे। यहाँ पे मेटारो अच्छा जोन आउट आता हुआ ब्लैक ड्रैगन से, लेकिन क्या यहाँ पे टर्टल स्टील कर पाएंगे? यहाँ पे अच्छा रिट्रीब्यूशन आता हुआ काइलर की तरफ से, वॉर सिक्योर करेंगे, एओजी का इस्तेमाल, यहाँ पे फारसा को डाउन किया जाएगा, उनके पास फ्लिकर मौजूद नहीं था। और इसके साथ जो फाइट स्टार्ट हुआ था अच्छा टीम क्लच गॉड के लिए, वो काफी बेकार काफी गंदा जा रही है, उनको पनिश किया जाएगा। यहाँ पे 3 मेंबर को डाउन किया जाएगा, 1-4-3 ट्रेड, बट उसके साथ वो टर्टल को भी गवाएंगे यहाँ पे, तो फिर 4 को काउंट, यहाँ पे 4 विक्ट्री रहेगा उनके लिए, 4 पॉइंट पे वो लोग जीत है। तो इसी के साथ जो टर्रेट है टॉप लेन के, और शायद से उसको भी निकाल पाए, और जो प्रेशर है उसको भी ज्यादा मेंटेन कर पाए, क्योंकि जो मैप एक्सपैंड करने की वजह से जो रिसोर्सेस वो डिनाई कर पाएंगे, उस वजह से शायद क्लच कॉर्ड का जो स्केलिंग अप होने वाला है वो काफी स्लो होने वाला है। यहाँ पे फिर से सुनामी स्लैम का इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन वो मौजूद नहीं, तो उनको रोकना पड़ेगा यहाँ पे। जो बिल्कुल पीछे से आते हुए अल्टीमेट का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा, रोकने का प्रयास, और इसी के साथ पूरी किट यहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी सूरज के द्वारा, लेकिन पिक ऑफ करते हुए टावर के अंदर से बाहर खींचा जाएगा। सोचा नहीं था यहाँ पे, सोरा चाहते थे कि वो टावर से चिपक जाए, लेकिन यहाँ पे किल लिया उन्होंने, बोला ऐसे कैसे, आपको टावर से ही बाहर निकाल के मारा जाएगा, और वहां पे उनको जो है धाराशायी किया गया। जी बिल्कुल, अभी भी अगर बात करें तो टॉप लेन का वो टावर मिला उनको, लेकिन उसके बाद भी जो गोल्ड है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फेदर स्ट्राइक का इस्तेमाल, ओ एक और हिट, उसके साथ यहाँ पे तुषार को एक बार फिर से डाउन किया जाएगा। तो जो जंगलर है और ईएक्सपी लेनर है, यहाँ पे दोनों ही को यहाँ पे काफी ज्यादा पनिश करते हुए टीम मेटारू, तो उनको एक वीक लिंक की तरह वो लोग प्रस्तुत करें, ताकि उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ना मिले। एक बार फिर से डाइव आता हुआ खले की तरफ से, लेकिन यहाँ पे सुनामी स्लैम मौजूद नहीं, लेकिन मिड लेन का टावर देखिए यहाँ पे शिनरा भाई, वो शायद गिर जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे मिड लेन का टावर यहाँ पे गिरता हुआ दिखेगा, उसके साथ बैक ड्रैगन आते हुए देखेंगे अपने अल्टीमेट फॉर्म में, उसी के साथ सोरा यहाँ पे थंडर क्लाउड का इस्तेमाल करते हुए रोकेंगे, लेकिन उनको पिक अप किया जाएगा और उसी के साथ फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा। बात करें जोसेफ की, तो यहाँ पे अल्टीमेट इस्तेमाल किया जाएगा स्ट्राइक द्वारा, और मेनियल्स जो थे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। 3 किल अपनी झोली में भरेंगे टीम मेटारू। इस समय टीम क्लच गॉड को यहाँ पे अच्छा खासा डोमिनेट करती हुई जा रही है, 2-10 का स्कोर हो चुका है। बात करें यहाँ पे स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे जो बढ़त हासिल होती हुई दिखेगी मिडिल लेन की तरफ से। और यहाँ पे देखिए ब्लैक ड्रैगन अल्टीमेट फॉर्म में आए यहाँ पे, और सोरा जिस तरीके से यहाँ पे थंडर फॉर्म में यहाँ पे जो है इस्तेमाल हुए, वो खुशी हो जाते हैं उस समय। और उसी समय यहाँ पे पिक ऑफ किया गया, एक बढ़िया प्रदर्शन आता हुआ, और एक बढ़िया जो सिनर्जी है वो हमें आती हुई दिखी टीम मिटारू की तरफ से। जी बिल्कुल, यहाँ पे इसी वजह से उनको ज्यादा यहाँ पे स्केलिंग मिलेगा। और एक और चीज जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो क्लॉड है वो फ्री फार्म करे, और एक टाइम बॉम्ब की तरह है, वो एक टिकिंग बॉम्ब की तरह है, उनको जितना फार्म मिलेगा उतना मुश्किल होगा। एक बार फिर से सुनामी स्लैम का इस्तेमाल, और यहाँ पे सोरा को एक भी मोमेंट का रेस्ट नहीं मिलता, उनको हर बार पनिश किया जाएगा, उनको 0-4-1 के स्कोर पे भी रोका जाएगा। और इसके साथ फिर से देखें तो डाइव आता हुआ, वो लोग फिर भी वेट करें, उनके पास सुनामी स्लैम रेडी नहीं, उनके पास फेदर एयर स्ट्राइक रेडी नहीं, तो वो लोग वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे। वो लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि उनको फिर से वो अपॉर्चुनिटी मिले कि वो लोग पिक ऑफ कर पाए। जो पिक ऑफ ड्राफ्ट यहाँ पे लेके आई है टीम मेटारू, उसका काफी अच्छा यहाँ पे वो लोग यूज कर रहे हैं। और इसके साथ टीम क्लच कॉर्ड काफी ज्यादा बैकफुट पे, उनके पास ना गोल्ड है ना उनके पास टर्रेट्स है मैप पे, जिससे वो लोग ज्यादा कुछ कन्वर्ट कर पाए। और लॉर्ड ज्यादा दूर नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट का वेट होने वाला है, उसके बाद लॉर्ड भी आ जाएगा। तो शायद से टीम क्लच कॉर्ड को यहाँ पे कुछ क्लच मोमेंट जरूर निकालना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अभी देखिए पीछे रह के खेलना पड़ेगा। कोशिश ये रहेगी कि किसी तरीके से मेटारू जो है वो एक गलती करे और उसका फायदा उठाए यहाँ पे, और उसी समय देखना पड़ेगा अल्टीमेट यहाँ पे यूज हो जाएगा, और सीसी गलत पोजीशन में होंगी, पीछे हटना पड़ेगा उनको, लेकिन वो टावर वो गंवाना पड़ेगा और पीछे हटते हुए जाना पड़ेगा इस समय। और एक बढ़िया डिसीजन, क्योंकि देखिए आप टावर दे दीजिए, अपना किल मत दीजिए। टावर देखिए आप जो है एक तरीके से अगर आप टावर दे देते हैं, किल नहीं देते, तो किल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अगर किल देते तो आप एनिमी को जो है यहाँ पे स्नो बॉलिंग का मौका और ज्यादा देते हैं आप।
जी बिल्कुल, यहाँ पे जितना हो सके अपने मैप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब आपके अगेंस्ट पे एक कले वो एक और मेंबर को लेके आएंगे, इसके साथ डाइव आता हुआ गटुट काचा का, लेकिन कितना देर तक वो सस्टेन कर पाएंगे क्योंकि डैमेज बहुत ही ज्यादा थीजन। उनको एक किल मिलेगा, ब्लैक ड्रैगन अंदर डाइव करते हैं, उनको पैसिव यहाँ पे ट्रिगर होना चाहिए, यहाँ पे एक और किल बटोर लेंगे वो स्ट्राइक उनके शारे सिर की वजह से, और यहाँ पे 4 मेंबर डाउन होता हुआ टीम क्लच कॉर्ड की तरफ से, और जो मिड का जो होली डिफेंस पे है वो डाउन होता हुआ। यहाँ पे लॉर्ड लेने की एक अपॉर्चुनिटी है टीम मेटारो के पास, और वो जरूर वो लेंगे क्योंकि अभी जो टीम फाइट उसका एक रिप्ले में देखने को मिल रहा है। और आप देखिए यहाँ पे कितना अच्छा स्टार्ट किया था, उसके बाद पनिश का जरिया देखिए यहाँ पे जो टीम को यहाँ पे स्प्लिट किया गया, यहाँ पे कितना अच्छी तरीके से ब्लैक ड्रैगन वहां पे अंदर जाके वो एक सिचुएशन क्रिएट किया। जी बिल्कुल, बढ़िया तरीके से जोन आउट किया यहाँ पे 3 बंदों को, और फिर पीछे जाते हुए वहां पे फिनिश ऑफ किया। अब लॉर्ड का आगमन हो चुका है और सीधा जाएंगे लॉर्ड की तरफ, और यहाँ पे लॉर्ड भी सिक्योर कर लिया गया है टीम मेटारो की तरफ से। टीम क्लच गॉड यहाँ पे बहुत ही मुसीबत में इस समय। बात करें सोरा, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे डाउन होते हुए दिख रहे हैं हमको। 0-5-1 का स्कोर उनका चल रहा है सबसे ज्यादा टीम में। और उनके बाद यहाँ पे तुषार हुए, तुषार यहाँ पे कहीं ना कहीं वो स्नोबॉल उनको मिला नहीं सुयू के साथ, और अगर सुयू को स्नोबॉल नहीं मिलता है तो फिर वहां से टीम को कैरी करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, अगर आइटम्स की भी बात करें यहाँ पे काफी पीछे है। अगर गोल्ड देखें तो यहाँ पे 5000 के अगेंस्ट 7000 के गोल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो काफी ज्यादा डिसएडवांटेज। और यहाँ पे जो सुयू है उनके पास बस 4000 का गोल्ड है, उस गोल्ड से वो ज्यादा आइटम्स अभी भी ले नहीं पाए। उनके पास डैमेज स्केलिंग जो आप कह रहे हैं कि जो स्नोबॉल का एक मौका था वो बिल्कुल भी नहीं मिला उनको। एक बार फिर से कले अंदर जाने की कोशिश, लेकिन फ्लिकर बेट आउट होता हुआ यहाँ पे। फिर दोबारा अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए रोका जाएगा, लेकिन ब्लैक ड्रैगन यहाँ पे अंदर की तरफ जाएंगे। टावर का अल्टीमेट यहाँ पे पड़ेगा, लेकिन वो डैमेज है वो आता हुआ, लेकिन मेनियक यहाँ पे लिया जाएगा। और उसी के साथ जो डीपीएस आता हुआ क्लॉड की तरफ से, वो टीनेटी बिल्ड और टीनेटी बिल्ड के साथ यहाँ पे समाप्त करेंगे इस क्रिस्टल को, और मेटारो इस मैच को अपने नाम करते हुए सीधा जीतेगी इस मैच को। बढ़िया यहाँ पे आते हुए दिखे, एक बढ़िया अल्टीमेट, बढ़िया कॉम्पोजिशन, और उसी के साथ इस सीरीज के दौरान ये मेनियक हासिल करते हुए। आई थिंक पहला मेनियक है यहाँ पे इस सीरीज का, शिनरू भाई। जी बिल्कुल, एकदम पहला मेनियक इस पूरे टूर्नामेंट का अभी तक। और ये बिल्कुल यहाँ पे देखिए जिस तरीके से रोटेशन आता हुआ दिखेगा, जोन आउट करते हुए दिखेंगे। ड्रैगन अंदर की तरफ गए थे और सुयू को यहाँ पे पिक ऑफ किया गया था किलिया के द्वारा बहुत ही खूबसूरती से, और फिर दोबारा यहाँ पे रोका गया, सुयू को भी डबल किल यहाँ पे लिया गया। और उसी के साथ देखिए ये अल्टीमेट यहाँ पे आया था, 2 बार भापा था, और ये माइक्रो प्ले दिखाता है, आपका काउंटर सामने होने के बावजूद दिखाता है कि आप कितना कॉन्फिडेंस इस हीरो पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे फारसा काफी रिस्की पिक था, जैसे कि मैंने कहा था, हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाला पिक था, और उन्होंने वो रिस्क लिया और वो रिवॉर्ड भी उनको मिला। काफी अच्छा कंपोज गेम प्ले खेला यहाँ पे टीम मेटारू, और उन्हें बिल्कुल भी यहाँ पे रश नहीं किया। उन्होंने काफी स्ट्रेटेजिकली अपना मूवमेंट्स प्लान किया, जो ऑब्जेक्टिव है उस पर फोकस किया, और ज्यादा बेकार के फाइट्स नहीं लिए, और जितना ज्यादा हो सके, जितना कम हो सके उतना कम किल्स टीम क्लच गॉड को दिया। तो उस हिसाब से काफी कम वेस्टेड मूवमेंट्स थे, और लास्ट टीम फाइट पे पूरा वाइप आउट होता हुआ, और एक जो मेनियक था थीजन जो पूरे गेम फार्म कर रहे थे, उनका जो डैमेज आ गया था उस टीम फाइट पे, उसको डॉज करना काफी मुश्किल होने वाला है। और जो 2 लेनर्स को उन्होंने टारगेट किया था, जंगल एंड ईएक्सपी, वो दोनों को कभी उन्होंने एक बार ऑनलाइन भी आने नहीं दिया, उनको कुछ करने ही नहीं दिया मैप पे। तो इस वजह से उनको पूरा गेम यहाँ पे बिना फार्म का गुजारना पड़ा। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे स्कोर 0-7-1, 0-6-1। ये केडीएस आप यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि आप जब खेल रहे ऐसे हीरो जो कैरी करने वाले हीरोज होते हैं, तो उन पे आपको परफॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे काफी अच्छा एक रीड आता हुआ कैसे ड्राफ्ट को एक मतलब पनिश कर पाए मेटारो की तरफ से। जी बिल्कुल, और बढ़िया वन साइड डोमिनेशन हमें देखने को मिला, कैलकुलेटेड फाइट्स और उसके साथ एक बढ़िया स्ट्रेटेजी आते हुए, और टीम यहाँ पे जीतती हुई दिखेगी। लेकिन अगले मैचेस वो भी तड़कते भड़कते आते हुए दिखेंगे। तो दर्शकों का मत चाहिए, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और तब तक के लिए अपने स्नैक्स वगैरह रिफिल कर लीजिए। मैं था कास्टर आपका शिनरू, मेरे साथ कास्ट कर रहे थे मेरे प्रिय 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 मित्र और मेरे भाई शिनरू। तब तक मिलते हैं आपको एक नए मैच के साथ। I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
The strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Gaze upon me. Become me. I see desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. तो देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका यहाँ पे एक और बार नए मैच के साथ एल्गामो ई स्पोर्ट्स की तरफ से इलाइट 16 स्क्रीम्स। आप सभी का स्वागत है। और नीचे दर्शक लोग पूछ रहे थे कि आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो गाइस सोशल हैंडल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे जाके पेज को फॉलो करो और आगे होने वाले और भी स्क्रीम्स के जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगे सीधा इंस्टाग्राम या फिर डिस्कॉर्ड हैंडल्स पे। और जितने भी सोशल मीडिया है उन सबको फॉलो करके रखो। उसी के साथ आज का ये मैच होता हुआ दिखेगा हमें अनुराई स्पोर्ट्स वर्सेस कंगलेई, और मैं हूं आपका कास्टर शिंद्रा, मेरे साथ करते हुए दिखेंगे आज आपको एलिसिया। वेलकम, स्वागत है आपका कास्टिंग डेस्क पे। शुक्रिया सिंद्रा जी इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। तो अभी फिलहाल आज का सेकंड लास्ट होगा, तो देखते हैं कैसा जाएगा दोनों टीम्स के बीच में, क्योंकि दोनों ही टीम बहुत इंटरेस्टिंग है एंड वो लोग कैसा गेम प्ले हमको दिखाएगा इस मैच पर। तो देखते हैं। अभी तो पहले तो ड्राफ्टिंग होगा और उनका हीरोज पिक्स होगा, तो कैसा मेटा हीरो पिक करेगा वो लोग और उनका कॉम्पोजिशन कैसा होगा, चलो देखने के लिए चलते ड्राफ्टिंग फेज पर। बिल्कुल, और ड्राफ्टिंग फेज की बात करें तो पहला ही बैन आता हुआ हमें दिखेगा फेडरन की तरफ। तो यहाँ पे यूटिलिटी जंगलर को सबसे पहले बैन किया जा रहा है और दूसरी साइड पे देखा जाए तो वहां पे क्रॉक को बैन किया जाएगा। इनिशिएटर वर्सेस यूटिलिटी जंगलर यहाँ पे हमें बैन होते हुए दिखेंगे। आगे के और बैन हमें जरूर आते हुए दिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो टीम अरुणा स्पोर्ट्स है वो नहीं चाहती है कि सामने कोई भी यूटिलिटी जंगलर्स ज्यादातर आए। तो वो नहीं चाहती कि कोई चेन सीसी या फिर लेयर सीसी वाले हीरोज उनको आगे परेशान करें। और अभी तो हम देख सकते हैं कि कैरी भी बैन कर दिया, जो बहुत अच्छा बात है। अगर आप लोग थोड़ा टैंकी वाला लाइनअप में जा रहे हैं, जैसे कि आप थोड़ा यूजोंग लेगा और फिर बाद थोड़ा रक्षा टाइप का हीरोज जो आपका ज्यादातर सस्टेन करेगा, तो कैरी होगा तो लेट गेम में आप लोगों का तो बैन तो बचेगा ऑब्वियसली, क्योंकि कैरी का डैमेज अर्ली में भी है, पर वो और भी खतरनाक हो सकते हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत आ सकता है। और दूसरा बैन देखा तो इधर एलिस भी बैन है, जो बहुत डैमेज ऑब्जर्व करती है। तो बैन्स तो अभी फिलहाल अच्छे जा रहे हैं दोनों ही तरफ से। मेटा हीरोज बैन देखते हुए हमको दिख सकता है बैनिंग पैनल पर। जी बिल्कुल, और मेटा बैन्स की बात करें तो देखिए एलिस यहाँ पे बैन होती हुई दिखेगी, उसके साथ साथ सोरा यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा। तो एक सारा प्ले नहीं आता हुआ दिखेगा और थोड़ा सस्टेन हीरोज की तरफ यहाँ पे निशाना लगाती हुई दिख रही है। दोनों ही टीम नहीं चाहती है कि दोनों ही तरफ से जो फाइट्स है वो ज्यादा लंबी खींचे, इसलिए यहाँ पे जितने भी सस्टेन हीरोज है उनको बैन किया जा रहा है। और आखिरी बैन जरूर रहेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा जो बैन है वो तीसरा बैन आता हुआ दिखेगा। उसी के साथ पहला पिक यहाँ पे अरुणाई स्पोर्ट्स इनको मिलेगा। तो पहला पिक किसकी तरफ यहाँ पे जाना चाहेंगे, कौन सा हीरो ऐसा पिक करेंगे, क्योंकि उसके बदले आप दो हीरो सामने वाली टीम को देते हुए दिखेंगे। अभी सोरा भी बैन हो चुका है, कैडिटा ओपन है, और जितना मेरे को पता है यूफोरिया जो उनकी मेज है वो बहुत अच्छी प्लेयर है। शी प्लेस कैडिटा बहुत अच्छे से खेलती है, शी इज रियली गुड। एंड मेरे को जितना हो सके लगता है कैडिटा आ सकता है, पर जुशिन वो लोग कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, प्रायोरिटी जुशिन पे रहेगा। ये बहुत खूबसूरत लेडी जुशिन, वो अपने लैंटर्न के साथ जो इरिटेशन देती है ओपोनेंट्स को, वो अच्छी बात है। अगर वो लोग ऐसा टाइप का हीरो जो गैटर कचा होगा, हाईलस होगा, या फिर ज्यादा वो टैंकी हीरो लेगा, तभी भी वो उसको बहुत इरिटेट करेगी। तो जुशिन बहुत अच्छा पिक है। और फिलहाल अभी फ्रेया ओपन थी, तो फ्रेया को हाथ में लेते हुए और साथ में मीन्स तो दिखाई देंगे किंग्स कॉलिंग और फ्रेया का जो डैमेज पड़ने वाला है उन पर वो भारी होगा। तो उनको एक अच्छा सा हीरो लेना पड़ेगा कि जो सस्टेन कर सके और इनके आगे अच्छे से टिक सके।
जी बिल्कुल, यहाँ पे डिसंगेज हीरोज़ की यहाँ पे माँग रहने वाली है अरोरा स्पोर्ट्स की तरफ से, तो अकाई एक अच्छा काउंटर हो सकता है। फ्रेया को वो पीछे यहाँ पे हेवी स्पिन के द्वारा पीछे फेंक सकते हैं। उसके साथ-साथ यहाँ पे मिन्सितार के अल्टीमेट किंग कॉलिंग्स को वो पूरी तरीके से यहाँ पे एक तरीके से डिस्ट्रॉय तो नहीं, यहाँ पे मैं कहूँगा यूज़लेस बना सकते हैं अपने अल्टीमेट के द्वारा। तो अकाई एक अच्छी यहाँ पे स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जाना चाहेंगे मिनोटॉर के साथ और पीछे से यहाँ पे आएँगे सपोर्ट करने के लिए ब्रेव फाइटर फोर्स के साथ लापू लापू का आगमन होगा, तो एक सेटअप हमें आता हुआ दिख सकता है। देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे जो मिन्सितार है वो रोम जाना चाहेंगे, एक्सपी जाना चाहेंगे या फिर गोल्ड लेन भी। इवन गोल्ड लेन पे भी मिन्सितार हमें देखने को मिलते हैं काफी टाइम पे। फ्रेया एक्सपी भी जा सकती है और गोल्ड लेन भी जा सकती है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल पिक की बात करें तो वो बहुत ज्यादा है। उसी तरह से देखा जाए तो फ्रेया अभी आ गई है, तो वो एक कहेंगे हम जो दूर से यहाँ पे काफी एरिया कवर कर लेती है फ्रेया अपनी एयर स्ट्राइक के द्वारा, तो एक अच्छा अल्टीमेट हमें आता हुआ दिख सकता है। तो देखा जाए दोनों ही टीम बढ़िया तरीके से सेटअप लगाती हुई जा रही है और एक अच्छे-अच्छे जो है यहाँ पे अल्टीमेट हमें आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से उस अल्टीमेट को यूटिलाइज किया जाता है अपनी टीम के फायदे के लिए। और 3-3 बैन अभी जो है यहाँ पे होते हुए हो गए हैं, 3 पिक भी हो गए, लेकिन 2 बैन यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या लगता है टेली से यहाँ पे 2 बैन आखिरी किसकी तरफ आते हुए हमें दिख सकते हैं? अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो आखिरी 2 बैंड्स होंगे वो जाएँगे हमारे जंगलर की तरफ और गोल्ड लेनर की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि फ्रेया तो मुझे लगता है कि 100% वो तो गोल्ड लेन में जाने वाली है, क्योंकि मिन्स्टर ईएक्सपी लेन जाएगा। तो वो लोग ऐसा करेंगे कि ओरोनाई का हीरो पूल अभी देखा जाए तो उनका जंगलर और गोल्ड लेनर नहीं, तो वो लोग वो बैन कर सकते हैं। और इधर का दूसरा टीम का उनका भी जंगलर नहीं है और रोमर नहीं है, तो वो लोग बैन कर सकते हैं। फिलहाल देख सकते हैं कि गैटोकोचा को बैन कर दिया है, जो बहुत अच्छा है, जो सेट दे सकता है अपना और टीम में सस्टेन भी कर सकता है। तो उन लोगों ने एक थ्रेट हटा दिया। और इधर क्लिंट भी बैन तो हो गया। अब क्लिंट का डैमेज बहुत हाई होता है अर्ली गेम में और उसका पोजीशनिंग भी आप मेंटेन कर सकते हो, तो अच्छी बात है। पर फिलहाल अभी मुझे लग रहा है कि वही जंगलरी बैन कर दिया और वाईएसएस जो उनको विजन प्रोवाइड कर सकता है और जिसका फार्म अच्छे से हो जाए अर्ली गेम में, वो तो लेट गेम में अच्छे से सबके बचाएगा ऑब्वियसली। तो उन लोगों ने वाईएसएस बैन कर दिया और लास्ट बैन ओरोनाई से होगा, वो है डिगी। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, फिर भी हाँ डिगी अच्छा हो सकता है रोम में। जी बिल्कुल, डिग्गी को यहाँ पे डिनाई कर दिया जाएगा। काफ़ी दिन बाद यहाँ पे डिग्गी बैन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे यहाँ पे देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर ईएक्सपी पे यहाँ पे मिन्सितार जाते हैं तो रूम के ऊपर बहुत सारे ऑप्शन जो आपके पास खुले रहेंगे और उसी ऑप्शन का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे एटलस का आगमन हो चुका है। और एटलस जब आते हैं तो वो स्लो आपको मिलता है टीम के साथ, तो अच्छा खासा स्लो आने वाला है, तो जूशिन को निकलने में और ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है और एक अच्छा सेटअप यहाँ पे लगता हुआ दिख सकता है। क्योंकि एटलस जब आएँगे अपने तो चेन टुगेदर के इस्तेमाल करते हुए वो 3 से 4 एनिमीज़ को अगर पकड़ते हैं, उसके बाद अगर मिन्सी फ़ॉलो अप करते हैं पीछे, तो निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और स्लो डाउन इतना पड़ेगा कि आपको जो है यहाँ पे अपने रिसोर्सेज़ जो है वो निकालने पड़ेंगे और फ्लिकर का भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि मिन्सितार वहाँ पे मौजूदा रहेंगे फ़ॉलो अप करने के लिए एटलस के पीछे। अभी एटलास जी हमारे ऑक्टोपस लैंड ऑफ डॉन के आ चुके, तो उनका तो अल्टी तो भारी पड़ने वाला है उनके ऊपर। जो आएगा उसका फेटल लिंक्स वो साथ में पकड़ सकते हैं, पर सेट भी देना उनको, पोजीशनिंग अपना वो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो मिस हो जाएगा तो बर्बादी हो जाएगी उन लोगों का सेट। तो इधर दिख सकता है तो ऑडिट नहीं, ऑब्सिडिया है गोल्डन पर और यूनिवर दिखेंगे अपनी स्पेशल माइग्रेशन और वॉलेट ट्रिकिंग के साथ, जो जंप करके उनके ऊपर चढ़ेगी, स्पेशली फार्सा के ऊपर। उसको निकलने में दिक्कत हो सकता है और ऑब्सिडिया जब एक पे मार्क करती है तो उसका डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। पर फिलहाल हमको दिखेगा कि एक्सबर्ग जाएंगे जंगल पोजीशन में। एक्सबर्ग का जो ट्रू डैमेज पड़ता है वो फ्रंटलाइनर्स फाइटर स्पेशली जो सस्टेन कर सकते हैं उनको बहुत दिक्कत दे सकता है। तो मिनोटोर को दिक्कत दे सकता है एक्सबर्ग की, वो लास्ट इंसानिटी वो चला देगा तो एटलस मर सकता है, सॉरी एटलस नहीं मिनोटोर मर सकता है, तो उनका टैंक को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। पर दोनों का लाइनअप बहुत अच्छा है, उन लोगों के पास सेट मेकर है, उनके पास डैमेज डीलर है, उनके पास रेंज भी है। तो देखते हैं दोनों का अच्छा हीरो कॉम्पोजिशन मिला है तो कैसे वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं गेम पर। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए जैसे कि आपने कहा कि सेट मेकर यहाँ पे बहुत सारे हैं और सेट मेकर के ऊपर जो है पूरा गेम डिपेंड करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे बात वही होगी, अगर फाइट लेंगे तभी जो टीम है यहाँ पे वो जीतती हुई दिखेगी। दूसरी तरफ अरोरा स्पोर्ट्स है, उनको थोड़ा-सा
संभाल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक सेटअप पे फंसे तो पीछे फ्रेया वो मौजूदा रहेगी पूरी तरीके से। उनका जो बेसिक अटैक है हमने देखा है जिस प्रकार से आता है, और स्क्विशी इसको बहुत ही इजीली यहाँ पे मेल्ट कर देता है, और अच्छा खासा जो सस्टेन उनको मिलता है अपनी फर्स्ट किल के साथ, जो शील्ड उनको मिलता है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। टीम फाइट में जितना ज्यादा अंदर भी जा सकते हैं उसके साथ साथ वहां पे बाहर भी निकल सकते हैं, तो एक अच्छा यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेट अगर उनके सारे अल्टीमेट वेस्ट हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पे करेंगे स्पोर्ट्स के पास यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं पड़ने वाला है, तो उनको थोड़ा समझ के खेलना पड़ेगा और एक अच्छे खासे जो सेट है वो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपका एक भी सेट मिस होता है तो उसका फायदा यहाँ पे अरुणा स्पोर्ट्स वो जरूर उठाएंगे। उसी के साथ मैच का जो स्टार्ट यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। बॉटम लेन की बात करें तो थोड़ा सा पोक हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन मिड लेन की तरफ से जूशिन बुली करती हुई दिखेंगी फारसा को। अच्छा खासा डैमेज पूरी तरीके से फार्म जो है यहाँ पे डिनाई किया जा रहा है मिड लेन की तरफ। हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर। जुशिन तो बनी है उसके लिए कि वो अर्ली गेम में आपको बहुत इरिटेट करे, आपका दिमाग खराब कर दे कि आप अच्छे से फार्म नहीं कर पाए। वो अपना काम अच्छे बखूबी निभा रही है मिनोटर के साथ अच्छे से। उधर मिनोटर विजन भी दे रहा है अपने मैच को, और देख सकता है तो फ्रेया जंगल में लगता है हमको। हाँ, वो फ्रेया जंगल में है, तो फ्रेया का डैमेज और भी ज़्यादा पड़ने वाला है। अगर उसका डैमेज बढ़ गया तो वो तो नहीं रुकने वाली, वो अपना तलवार अपना शील्ड सब लेके मुंह पे चढ़ने तो वाली है उन लोगों की। तो उनको थोड़ा फ्रेया का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो वो लोग निकाल सकते हैं आराम से। तो फिलहाल ये अर्ली गेम में तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, दोनों तरफ से फार्म होगा। पर देखो ऑक्टोपस जाते हुए मिड लेन पर पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उधर पर मिनोटोर के ऊपर, और यूनिवर्स जंप करते हुए उधर से देते हुए, और फर्स्ट ब्लड फारसा को निकाल दिया, और फ्रेया भी उधर मर चुकी है। मिड लेन पे 2 निकल चुके हैं फर्स्ट स्टार्ट में, और नाइक को 2 पॉइंट्स मिल गए। जी बिल्कुल, अंदर गई थी फ्रेया, बहुत ही ज्यादा अंदर चली गई टरेट के अंदर। सोचा नहीं था, अल्टीमेट मार के बाहर आने का प्रयास करना चाहती थी, लेकिन टावर का वो ट्रू डैमेज इतना ज्यादा पड़ा कि वो निकल ही नहीं पाए बाहर। और उसी के साथ इसमें रिप्ले की तरफ एक बार नजर चाहती हुई हमें दिखेगी, और ये फाइट यहाँ पे छिड़ती हुई दिखेगी। बिल्कुल अंदर की तरफ आई थी, डैमेज देते हुए ऑक्टोपस मौजूदा थे वहां पे एटलेस, और स्लो डाउन करते हुए जा रही थी। फ्रेया अंदर की साइड गई, और लेकिन वो जो वहां पे क्रिम्सन बेकन के द्वारा वो नॉकडाउन आया, तो फ्रेया का जो डैमेज है उनको जो है ट्रेट का वो डैमेज ज्यादा तरीके से पड़ा। दूसरी साइड पे देखा जाए तो टर्टल यहाँ पे सिक्योर कर लिया जाएगा, कैरी मौजूदा रहेंगे। अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे वेलकारी डिसेंड मारा जाएगा, और यहाँ पे वेलकारी का इस्तेमाल करते हुए अंदर की तरफ गए थे, लेकिन पर्याप्त डैमेज ना होने के कारण पीछे हटना पड़ेगा। और एक बढ़िया जो है गैंग वो थोड़ा सा पीछे हटते हुए, और बात करें यहाँ पे टीम करेंगे तो उनको थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा अभी, क्योंकि अब जो है स्नोबॉल पोटेंशियल उनके पास नहीं रहा है। 2-0 का स्कोर हो चुका है। अरुणा स्पोर्ट्स उनके पास अच्छा खासा अभी जो बढ़त है वो आ चुकी है। हाँ जी, और नाइक को 2 पॉइंट्स मिल गए, उनको कछुआ महाराज भी मिल चुके हैं, तो उनको तो अभी एडवांटेज मिल चुका है। और सिंद्रा जी, आपने जो देखा उधर जब टर्टल फाइट हो रहा था, वो लोग टर्टल ले रहा था, तो फारसा ने पूरी कोशिश की थी, फ्लेम शॉट से उन्होंने चुराने का कोशिश किया, पर बखूबी वो नाकामयाब हो गया, तो उनको नहीं मिला टर्टल। पर कोशिश तो बहुत बढ़िया थी। पर अगेन हम देख सकता है कि ये जूशिन अपना लैंटर्न से इरिटेट करते हुए फारसा पंछी बन चुकी, पर पंछी को उन्होंने धासात कर दिया, उधर मरते हुए। अब देख सकते फैटल लिंक्स मिनोटोर का हमला उधर, और देख सकते फ्लिकर विद दैट ब्रेवेस्ट फाइटर लापू लापू जाते हुए, पर लापू लापू को किल नहीं मिला, पर गिवनीवर ने किल उठा लिया। अगेन उन लोगों को 2 किल मिल चुके हैं भाई साहब। और नाई क्या कर रहा है, हमको लग रहा था कि दूसरा टीम अच्छे से करेगा, पर मिनसेटर ने एक हुक किया मिनोटोर के ऊपर, और टाइल के अंदर लेके मार दिया, और ऊपर देखते गिवनीवर जंप करते हुए, उनको किल नहीं मिला क्योंकि उन्होंने एक्सप्लोर के ऊपर किया, पर वो जंप बहुत बढ़िया था। जी बिल्कुल, कांगली जो यहाँ पे स्पोर्ट्स है मैं बता ही रहा था, यहाँ पे पूरी तरीके से सेट है। अगर एक सेट लगा उस पे अगर किल मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर वो पूरी तरीके से सेट जो है बेकार हो जाएगा। उसी के साथ लापू यहाँ पे 3 बंदों का अल्टीमेट टैंक करेंगे। पीछे बात करें तो जूशिन यहाँ पे मुसीबत बढ़ती हुई, और उसी के साथ यहाँ पे उनको ताराशाही कर दिया जाएगा। पीछे बात करें तो यहाँ पे मिनोटोर वो यहाँ पे सेक्रीफाइस हो जाएंगे टीम के लिए, और अभी भी जो मैप प्रेशर है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। बॉटम लेन की तरफ सितार के ऊपर हमला होता हुआ रोकने का प्रयास करेंगे। गुनीवर मौजूदा है वहां पे, उसी के साथ किंग कॉलिंग इस्तेमाल किया गया, डर के मारे यहाँ पे मिन सितार अपना जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस वहां पे वेस्ट होता हुआ दिखेगा, और उसी के साथ एक बढ़िया जोन आउट होता हुआ दिखेगा इस टर्टल के लिए।
हाँ जी, जो उन्होंने अल्ट इस्तेमाल किया, डर के मुकाबिक उन्होंने वो इस्तेमाल किया, अच्छा ही था। और टर्टल फिर से हमारे अरुणाई को मिल चुका है उधर, उनको टर्टल 2 बार मिल चुके हैं, तो उनका स्टार्टिंग भी अच्छा है। उनके खाते में 5 अंक है, पर उधर गैंगलाइंस भी थोड़ा, उनका टीम का नाम थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे को लेने में, तो आई विल जस्ट से शाह टीम जो अच्छे से कोशिश तो कर रहा है उन लोगों का, पर जो अरुणाई जो अपना बरकरार गेम रख रहा है, वो लोग अच्छे से विजन ले रहा है, वो लोग अच्छे से मैप पे कंट्रोल है हाथों पे। देखो मिनोटोर और मैच अच्छे से रोटेशन देते हुए थोड़ा इजी पर मून बैक सिचुएशन में फेदर स्ट्राइक पड़ते हुए और लापू लापू फ्रेया की मदद से मर चुके हैं, पर फास्टर को उधर अभी पनिशमेंट मिलेगा। और जूर सिंह लैंटर्न के साथ जाते हुए बीच में किंग्स कॉलिंग इस्तेमाल किया है, पर जूर सिंह तो उधर रुकने वाली नहीं, लैंटर्न से सबको उठा उठा के पटक पटक के मार रही है। और यूनिवर ने फ्रेया को फिर से मार गिराया और फ्रेया का बफ भी चुरा ले गए वो लोग। जी बिल्कुल, आप मिन्सी तार को आप ऐसा कर सकते थे कि मिन्सी तार को आप गोल्ड लेन भेज देते तो मिन्सी तार गोल्ड लेन पे इजीली यहाँ पे कर सकता था बजाय एक्सबॉक्स के। और यहाँ पे देखिए जिस तरीके अल्टीमेट का इस्तेमाल किया गया था, पीछे से किंग कॉलिंग भी इस्तेमाल किया गया, उसके बाद वेलकैरी फायर तो यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए आई थी फ्रेया। कोशिश अच्छी खासी थी डैमेज देते हुए, लेकिन वो क्रिंसिम बेकन का डैमेज आता हुआ उसी के साथ वो सीसी लगातार देती हुई। अब बात करें यहाँ पे एमएम की, तो देखिए वो भी अच्छा खासा फार्म हो रहे हैं, और जैसे जैसे लेट गेम जाएगा, लेट गेम में फिर उनके जब बोन शॉट पूरी तरीके से कलेक्ट हो जाएंगे तो फिर लेट गेम में वो और ज्यादा दिक्कत देंगे। लॉर्ड के साथ गेम एंड करने के लिए वो टावर फिर नहीं बचेंगे यहाँ पे ऑब्सीडिया के सामने, क्योंकि ऑब्सीडिया ऐसी हीरो है ना जो बहुत ज्यादा डैमेज जो है वो आपको देती है। बेसिक के तौर पर अटैक स्पीड उनके पास अच्छा खासा रहता है, और उसी के साथ अगर टावर हो सामने तो टावर भी मेल्ट हो जाता है यहाँ पे। तो पूरी तरीके से जो टीम शाह स्पोर्ट्स है वो कहीं ना कहीं वो कोशिश यही करना चाहती है कि वो एक बहुत बड़ा गैम्बल खेल रही है यहाँ पे, कि वो सेट लगाएंगी, और सेट अगर लगा तो तभी यहाँ पे उनका फायदा रहेगा। लेकिन वो सेट लगाने के लिए आगे जाना पड़ेगा, और वो आगे जाने के लिए डिनाई कर रही है किंग्स बेकन के द्वारा ये मे जूशिन। इसको ओपन अगर आप छोड़ दोगे तो पूरे मैप पे ये आपको सबसे ज्यादा अनॉय करती है, और सबसे ज्यादा बैन होने वाला टूर्नामेंट में हीरो ये यही है। और आपने इसको ओपन छोड़ के बहुत बड़ी गलती यहाँ पे कर दी है, और इसी बात का फायदा जो है टीम अनुराई स्पोर्ट्स उठाती हुई अभी दिख रही है। हाँ जी, फायदा तो वो लोग बहुत अच्छे से उठा रहे हैं, क्योंकि उनको हर एक बार में किल्स भी मिल रहे हैं, उनको टर्टल, उनको ऑब्जेक्टिव्स भी मिल रहे हैं। तो अभी जा सकता है कि बॉटम लेन में उन दोनों की तरफ से टर्रेट तो घिर चुके हैं, और ऊपर ऑब्सिडिया लेन क्लियर करते हुए टर्रेट निकालने की कोशिश, पहला टर्रेट सब ओर से उन लोगों के घिर चुका है। सेकेंड टियर टर्रेट से स्टैंड कर रहे हैं टीम शाह का, तो अभी फिलहाल उनको थोड़ा समझ के खेलना पड़ेगा। और फिर से मेगा किल सिक्योर करती हुई गिवनीवर फारसा के ऊपर जैसे चढ़ी और उसको अल्टी करके मार दिया उधर पर, और गिवनीवर उधर टॉप लेन पे है। बॉटम लेन में थोड़ा गैंग हो सकता है, लापू लापू और फ्रेया वो उधर अकेले, तो लापू लापू फ्रेया को मार करने का कोशिश कर सकते हैं, पर फ्रेया के भी डैमेज है तो उनको थोड़ा रुकना पड़ेगा और अपना टीम का इंतजार करना पड़ेगा। पर टीम का बैकअप आ चुका है, बुश पे जूस लैंटर्स अगेन जाते हुए फ्रेया को पकड़ने की कोशिश, पर फ्रेया उधर बचते हुए, पर उधर मिन स्टार भी है तो मिन स्टार से थोड़ा उनको बच के रहना पड़ेगा। पर फिलहाल एक्सबॉक्स उधर मरते हुए यूनिवर के हाथों से, और ऊपर से एक टर्रेट भी उन लोगों का निकल चुका है। फेदर एयर स्ट्राइक फारसा की पड़ते हुए डैमेज बहुत ज्यादा है, पर मिनोन फ्यूरी के साथ उधर किंग्स कॉलिंग और ऑब्सिडिया का जो डैमेज पड़ रहा है, फ्रेया उधर घिरते हुए, और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग रिटालिएट कर सके, पर मिनसिटर लो एचपी में बचते हुए फारसा बच चुकी है, पर उन लोगों का 2 प्लेयर्स उधर पर मरते हुए, और उनको टर्रेट्स भी मिल गया। जी बिल्कुल, 14-3 का स्कोर होता हुआ। इस रिप्ले की तरफ जाते हुए देखेंगे, यहाँ पे एटलस मौजूद है, जरूर है चेन टुगेदर मारा, लेकिन वो 2 बंदों के बीच में मारा था। एयर स्ट्राइक अच्छे से आया था, फॉलो अप हुआ था, लेकिन लापू अंदर की तरफ डाइव किए, ब्रेव फाइटर फोर्स का इस्तेमाल करते हुए दाराशाही किया गया, और ये यूफोरिया यहाँ पे अच्छा खासा जो है किंग्स बेकन के द्वारा जो है बार बार नॉकअप दे रही थी, जिसके कारण यहाँ पे एक और फाइट हमें छिड़ती हुई दिखेगी। मिड लेन की तरफ देखा जाएगा तो अल्टीमेट के इस्तेमाल होते हुए डबल किल यहाँ पे ऑब्सीडिया को मिलेगा। लापू अंदर की तरफ गए थे, बढ़िया तरीके से टैंक किया, सोकअप किया पूरा डैमेज। अब बात करें यहाँ पे फार्म डिफरेंस की, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, 10K का फार्म डिफरेंस यहाँ पे आ चुका है, और इस समय अरुणाई स्पोर्ट्स वो यहाँ पे डोमिनेट करती हुई जा रही है इस गेम को। 17-4 का स्कोर होता हुआ। अब बात करेंगे यहाँ पे स्काई पेसर की, तो देखिए यहाँ पे इजिली जो है 30 का स्टैक हो चुका है ऑब्सीडिया के ऊपर। अब जैसे जैसे इनको किल मिलेंगे वो स्काई पीसर और स्टैक अप होते जाएंगे, और ज्यादा जो है यहाँ पे डैमेज वो आता हुआ दिखेगा। हाँ जी, स्काई पेसर में जितना डैमेज आएगा उतना तो उनको पड़ने वाला है, और जूसिन को लॉट मिलते हुए गेम का पहला लॉट उनको मिल चुका है। टावर्स तो सारे के सारे शाह लोग के घिर चुके हैं, और सिर्फ होली ब्लेसिंग्स बचे पड़े हुए, तो उनको थोड़ा कोशिश करना
पड़ेगा कि वो लोग अच्छे से अभी खेल सके और कोई भी गलती ना करे, क्योंकि अगर एक गलती हो गया और अरुणाई को थोड़ा सा भी मौका मिल गया तो वो तो घुस के अच्छे से उन लोगों को पिटने वाले, क्योंकि उनके पास डैमेज है, उनके पास सब कुछ है, तो वो तो घुसेंगे और आराम से मार के वो लोग गेम खत्म करने का तो पूरा का पूरा 100% कोशिश तो करेंगे। और इसके साथ लॉर्ड मिड लेन से जाते हुए वो लोग मिनियन क्लियर करे कि वो मिनियन सिंक कर सके, और जूशिन आगे हमेशा रहती हुई और अनॉय करती कि वो लोग अंदर से बाहर ही अच्छे से निकल ना सके और रोटेशन ना दे पाए। और अभी लॉर्ड है तो टीम शाह को ये लॉर्ड उनको सेव करना पड़ेगा, उनको डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये डिफेंड नहीं हो पाया तो गेम एंड हो सकता है और ये उनके लिए बहुत बुरा चीज़ हो सकता है। और होली ब्लेसिंग्स नहीं है तो लॉर्ड मिडलैंड पे जाएगा, तो टरिट उधर गिरने का कोशिश है, तो उन लोग को 2 साइड का इनहेबिटेड तो बचाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कोशिश यहाँ पे होती है के साथ एटलेस कोशिश करना चाहते हैं, यहाँ पे उठाना जरूर चाहेंगे, लेकिन क्रिम्सन बेकन पीछे से आता हुआ नॉक अप दिया जाएगा पूरी तरीके से, अल्टीमेट इस्तेमाल करने से पहले ही उनको यहाँ पे मिट्टी के द्वार पे पहुंचा दिया जाएगा। उसी के साथ एक बढ़िया कंटिन्यूस डैमेज आता हुआ लॉर्ड को इस तरीके से रोकने का प्रयास, फिर दोबारा से नॉक अप होते हुए किंग कॉलिंग का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा, लेकिन वो पर्याप्त डैमेज नहीं आते हुए अनस्टॉपेबल लेते हुए जाएंगे। और उसी के साथ ये पूरी तरीके से जो टीम है वो कोलैप्स होती हुई अलगांबो स्पोर्ट्स बढ़िया तरीके से इस मैच को डोमिनेट करते हुए क्रिस्टल यहाँ पे खत्म किया और इस मैच को अपने नाम करते हुए एक बढ़िया जो स्ट्रेटेजी में आती हुई दिखी, और उसी के साथ एक बढ़िया विन आती हुई टीम अलगांबो स्पोर्ट्स को। हाँ जी, मैच बिल्कुल बढ़िया था, दोनों टीम्स में अच्छे अच्छे हीरो थे, इतना अच्छा हीरो था उनके दोनों के टीम में, सेट मेकर्स थे, ऑक्टोपस था, बुफेलो था, सब कुछ था, फिर भी अरुणाई ने अच्छे से खेला। उनका जोसिन जो था यूफोरे, उन्होंने इतना अच्छा खेला, हर एक टाइम पर वो थी, अनोय कर रही थी, उन लोगों को फार्म करने का अच्छे से मौका नहीं दिया, जो एटलास को विजन प्रोवाइड करने बनाने का उन्होंने एक चांस भी नहीं दिया, उसकी वजह से उनको उनका अर्ली गेम उन्होंने जीत लिया। तो उनकी वजह से हमारा जो दूसरा टीम था वो अच्छे से बैकअप नहीं कर पाए। वो लोग कोशिश तो बिल्कुल कर रहा था, वो लोग सेट निकालने का, किसी को मार्क करने का कोशिश कर रहा था, पर अरुणाई ने एक छोटा सा तिनका सा मौका भी नहीं दिया और उन्होंने जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं नहीं हो सकते कि 2 लोग जीत। जी अच्छा था, बढ़िया मैच था, कांग्रेचुलेशंस अरुणाई को नेक्स्ट राउंड के लिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं थोड़ी सी ड्राफ्टिंग पे मैं कहूंगा थोड़ी वर्क करने की जरूरत है। अगली बार आप जो है थोड़ा सा ड्राफ्टिंग अपना सुधारेंगे तो आगे और बढ़ेंगे, तो इस टिप को जरूर लीजिएगा, ड्राफ्टिंग में थोड़ा फेर बदल कीजिए। आप इजी जो है ड्राफ्टिंग की तरफ जा सकते थे, आपने सेट मेकर उठाए बहुत सारे और बहुत सारे सेट मेकर के चक्कर में यहाँ पे जो गेम है वो आप लॉस करते हुए गए। उसी के साथ सज्जनों कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नया मैच जो है, एक आखिरी मैच यहाँ पे आने वाला है और वो तड़कता भड़कता मैच होने वाला है, तो कहीं मत जाइए, मिलते हैं हमें एक बिल्कुल छोटे से ब्रेक के बाद। The strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. Desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise, the weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel.
Desperation. I come to crush my enemies. I reap the strong rise. The weak crumble. My will is absolute. The abyss shall kneel. वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका यहाँ पे अलगामो स्पोर्ट्स और इसी के साथ प्रेजेंटेड यहाँ पे इलाइट 16 स्क्रीम्स। आप सभी का स्वागत है और इसी के साथ आज का आखिरी मैच होता हुआ जाएगा और ये आज का आखिरी मैच आप सभी के सामने स्क्रीन के सामने आता हुआ दिखेगा। नाइट हॉक्स वर्सेस राइजन एक्स, ये दो मैचेस, ये जो टीम है आपस में लड़ेंगी और बेस्ट ऑफ 1 की सीरीज चल रही है गाइस, तो एक ही मौका मिलेगा आप लोगों को। और इसी के साथ यहाँ पे आएंगे हम ड्राफ्टिंग फेज की तरफ। तो टेलिसिया यहाँ पे बैन की तरफ हम आते हुए, और क्या लगता है यहाँ पे क्या क्या बैन हमें आते हुए दिखेंगे? अभी तो ड्राफ्टिंग फेज स्टार्ट हुआ है। दोनों तरफ से अच्छा अच्छा हीरो तो हमको दिखाई दे रहा है। वो बैनिंग पैनल पर एक खतरनाक वाला ताकतवर लड़की को उड़ा दिया है, वो होगा हमारा हिल्डा। जो हिल्डा बहुत खतरनाक है, वो तो अपना वो बड़ा सा हथौड़ा लेके जाके ब्लैक लाइनर को मार्क करती है और स्पेशली जंगलर को भी बहुत दिक्कत देता है अर्ली गेम में। तो उसकी वजह से उन लोगों ने बैन कर दिया और वो मेटा में चल रहा है, पूरा सीजन ही चलेगी, वो दूसरा सीजन भी चल सकती है। एंड जो कैरी है ये तो हर एक बार में बैन ही हो रही है, क्योंकि कैरी अगर टीम में होगा आपको चाहिए जो बल्कि जो सस्टेन वाला हीरो चाहिए। अगर ये ओपोनेंट को मिल गया तो वो तो आपको लेट गेम में अच्छे से खेलने का मौका तो बिल्कुल नहीं देके आते आते आपको एक मिठाई की तरह मेल्ट कर देगी और आपका एचपी लो होगा तो कोई तो आपको मारेगा ऑब्वियसली। और इधर जोशियन मिनोटोर फ्रेया का जो डैमेज है, अगर आप उसे अच्छे से यूटिलाइज कर पाए और उसे डैमेज लेने का मौका मिल जाए, वो बहुत खतरनाक हो सकती है और आपको थोड़ा सा अच्छा से हीरो लेना पड़ेगा उसे काउंटर करने के लिए। और जोशियन वो फ्रंट लाइनर्स को दिक्कत देती है, तो आप फ्रंट ही जाओगे तो आपको दिक्कत देगा ही देगा। और मिनोटोर उसका सस्टेन, उसका हील भी है, वो तो ऑल इन वन है, ताकतवर भी है, वो आपको हील भी करता है प्यार से, वो आपको सेट भी देता है। तो उन लोगों ने वो भी उड़ा दिया है और देखते हैं क्या क्या हीरो अब उड़ने वाला है। और अभी पिक्स देखा जाए तो यूजोंग हमारा ब्लैक ड्रैगन जो ईएक्सपी का महाराज है वो आ चुके हैं। वो उड़ उड़ के ड्रैगन बन के, वो तो स्पेशली बैकलाइनर को दिक्कत देता है। तो इस मैच पे आपको फास्टर ले लिया तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो मैच सोच समझ के लेना चाहिए कि उसके पास मोबिलिटी है और वो यूजोंग से मार्क ना हो पाए। और पहले ही टाइम पे उन लोगों ने क्लॉट को प्रायोरिटी रख लिया, क्योंकि क्लॉट कैरी ये जो भी हीरोज एमएम पर है वो लोग अच्छे से मेटा पे चल रहा है और वो लोग रोम पे अभी सोप जी जाएंगे खलीद। तो देखते हैं नेक्स्ट पिक्स क्या होगा। और पिक ऑफ के लिए पिक ऑफ लेते हुए हमारी प्यारी सी एक खतरनाक सी लड़की जो आराम से आपको पकड़ के उधर डिफरेंट तरफ ले जा सकता है, स्पेशली मेज और एमएम को पकड़ के ले जा सकता है। और यूजोंग भी है तो उन लोगों को थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, स्पेशली उनका जो पोजीशन है फाइट पे उसे वो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो नहीं किया तो नजर हटी और दुर्घटना घट जाएगी। जी बिल्कुल, एक अच्छा खासा कॉम्प आता हुआ दिख रहा है। पिक ऑफ के लिए लिया था यहाँ पे और उसी के साथ पोक करने के लिए राइजन एक्स की तरफ से यहाँ पे ईव का आगमन होगा। चलिए ईव जरूर उठाया है लेकिन यूजोंग वहां मौजूदा रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर आप अल्टीमेट लगाएंगे वहां पे आरडब्ल्यूएम तो यूजोंग वहां पे इजीली आपको जो है काउंटर करने के लिए मौजूदा रहेंगे। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो अच्छा खासा पोक करने के लिए यहाँ पे एक मेज बढ़िया जरूर रहेगा। डीपीएस के लिए यहाँ पे क्लॉड जरूर उठा लिया गया है और खलीद आए हैं तो मोबिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है टीम में, तो रोटेशन जो है वो फास्टर्स होंगे एज अ रोमर, तो वो देखने में काफी मजा आएगा। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो 3-3 पिक यहाँ पे हो चुके हैं और उसी के साथ अब बारी रहेगी बैन की। बैन सेक्शन की तरफ यहाँ पे देखा जाएगा कडिता को पहले यहाँ पे बैन किया जाएगा क्योंकि एज अ सेशन यहाँ पे एम्बुश के तौर पे दिक्कत दे सकती है और इजी काउंटर भी रहता है यहाँ पे ईव का, तो इसलिए अपने ही काउंटर को यहाँ पे बैन करना एक बढ़िया स्ट्रेटेजी। और उसी के साथ नाइट हॉक यहाँ पे उनकी तरफ से बैन आता हुआ दिखेगा। एलिस
एक अच्छा यहाँ पे रहने वाला था। अगर एलएस यहाँ पे रहता तो इजीली सस्टेन कर सकता था वो यूजोंग को भी, उसके साथ साथ लियोमॉड को भी काफी देर तक जो है फाइट वो ओवर स्टैंड कर सकता था। तो इसलिए यहाँ पे एलएस को इनको बैन कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ से यहाँ पे टैंक मेल्टर यानी कि लूनॉक्स, इनको बैन किया जाएगा। तो 2 टैंक मेल्टर यहाँ पे बैन हो चुके हैं, वो है कैरी और लूनॉक्स। उसी के साथ आखिरी बैन नाइट हॉक की तरफ से। क्या लगता है टेलिसा, यहाँ पे क्या आ सकता है? अभी मेरे को जितना हो सके ऐसा लग रहा है कि वो लोग जंगलर बैन कर सकता है। वाईएसएस बैन होने का चांस। वाईएसएस जो है वो विजन भी देते हैं और उनको अगर अच्छे से फार्म मिल गया, स्नोबॉल मिल गया, तो लेट गेम में तो वो तो पकड़ पकड़ के उड़ाने वाले हैं। माउंटेन शकर की वजह से उनको डैमेज भी पड़ेगा, स्टन भी दे सकता है, डैमेज तो हाई है उनका, प्लस विजन भी मिल सकता है, तो हो सकता है। पर उन लोगों ने नहीं, उनने फेड्रेन उड़ा दिया। फेड्रेन सस्टेनेबल हीरो है, सस्टेन बहुत देता है, दिक्कत भी देता है। अगर उसको मिल नहीं कर पाया तो आपको बादशाह या फिर एक्सबॉक्स टाइप का हीरो लेना पड़ेगा कि वो जंगल में उन्हें दिक्कत दे सके। तो उन लोगों ने ये हीरो निकाल दिया है। तो लास्ट 2 पिक्स आएंगे 2 डिफरेंट टीम से, तो देखते हैं क्या पिक करेंगे। उनके पास मेज है जो अच्छे से उनको सेट दे सकता है, आरडब्ल्यूएम से उनका मोमेंट को रोक सकता है, स्टन दे सकता है। और अभी फिलहाल उनको जरूरत है एक जंगलर और ये एक्सपी लेनर का। अभी लापू खुला है तो लापू जा सकता है यूजंग के अगेंस्ट में, और एक्सबॉक्स भी खुला है तो वो लोग ये भी जा सकता है। तो देखते हैं क्या हीरो लेंगे। और जंगल में नाइट हॉक्स ने लियोमर्ड लिया, तो अभी वाईएसएस ओपन है फिलहाल, लैंसलॉट भी ओपन है। पर इधर फिर से दिखेंगी बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत प्रिटी लेडी यूनिवर्स अपने स्पेशल और वॉयलेट रिक्वेम का डैमेज लेकर। और फिलहाल यूनिवर्स देख सकता है जंगल में, यूनिवर्स बहुत अच्छा सेट देगा। और अभी इधर छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा हैरिट होगा, वो हो गए गोल्ड लेन में। हैरिट के पास मोबिलिटी भी है और उसका डैमेज जितना अब लेट गेम में जाएगा, अर्ली गेम में भी उनका है, पर जो लेट गेम में उनका होता है मोबिलिटी, डैमेज पड़ रहा है उधर से उनका मोबिलिटी, तो उनको पकड़ने में दिक्कत हो सकता है। तो अगर हैरिट गोल्ड लेन में तो वो तो बहुत दिक्कत देने वाले हैं। और जेटिन पिक में आते हो वाईएसएस होंगे। जेटिन का डैमेज अभी मैं बोलूँ तो उनका जो फर्स्ट स्किल का डैमेज पड़ता है ना, ऐसे मुंह पे जैसे चाटू की तरफ 1 2 3 इतना हाई डैमेज पड़ता है। और ऊपर से उनका सेकंड स्किल का डैमेज हाई है, वो विजन भी देती है। उनका अल्ट ग्लोबल अल्ट है जिससे स्टन भी मिलता है। उस टाइम पर जब विजन स्टन मिलता है, अगर आप 3-4 एक साथ स्टन कर सके, एक अच्छा सा सेट दे सके, तो यूजम डाइव इन करके वो लोग उनको पकड़ सकते हैं। और उनके पास तो कैरियर भी है तो अच्छा सेट बनेगा। पर इधर फैन ही आते हुए अपने रस्सियों के साथ अब रस्सियों का खेल दिखाएंगे इस मैच पर। फैनी को अर्ली स्नोबॉल मिल गया तो वो रस्सियों के मदद से वॉल पे उछलते खेलते हुए सबको बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है। तो ये कोशिश रहना चाहिए कि फैनी को अर्ली गेम ज्यादा ना मिले और स्नोबॉल वो ना कर पाए। जी बिल्कुल, फैनी यहाँ पे अगर अच्छी फैनी रहेगी तो केबल का इस्तेमाल करते हुए आ सकती है। अर्ली गेम पे स्नो बॉलिंग बढ़िया तरीके से कर सकती है और अपनी टीम के लिए जो है एक बढ़िया गेम आता हुआ दिख सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें गेम लेट की तरफ जाता है तो जमान 4 का इस्तेमाल करते हुए हैरिट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बनने वाले है, क्योंकि उनकी तरफ से जो पोक डैमेज आने वाला है वो बहुत ज्यादा आने वाला है। उसकी तरफ अगर बात की जाए तो क्लॉड को अच्छा खासा काउंटर कर सकते हैं वो अपने डैश के थ्रू, डैमेज के थ्रू। तो पोक भी अर्ली गेम में अच्छा खासा किया जाएगा उनको। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थिति खराब हो सकती है। अगर फैनी को एक अच्छा स्नोबॉल मिलता है तो टीम राइजन एक्स से एक अच्छा खासा यहाँ पे जो इम्पैक्ट वो ला सकती है बैटलफील्ड की तरफ। लेकिन वो सब डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन के ऊपर कि आप लोगों का एग्जीक्यूशन किस प्रकार से यहाँ पे होता हुआ दिखेगा और रोटेशन किस प्रकार से आता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे खलीद सीधा जाएंगे और यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन लेके आ चुके ऑलरेडी, जो है विजन यहाँ पे दे चुके हैं। मिडिल लेन की तरफ बात करें तो थोड़ा सा पोकिंग आता हुआ दिखेगा और पोकिंग के साथ मीनिंग क्लियर करने का प्रयास रहेगा। उधर की साइड देखा जाए तो फैनी को अभी ब्लू मिल चुका है और सीधा जाएंगे अपने रेड बफ की तरफ। हाँ जी, फैनी अपना बफ लेते हुए अपना रेड बफ लेंगी। और अभी तो फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं चल रहा है, पर खाली थोड़ा जंगल एरिया में घुसते हुए, जंगल में मंगल करते हुए नाइट हॉक्स की तरफ से थोड़ा दिक्कत दे रहे हैं लियोमर्ट को। और वो तो उनका काम ही है, वो तो हमेशा करते रहते हैं, पर वो अच्छी बात है कि आप दिक्कत दे रहे हो। और जेटिन उधर डैमेज देते हुए लेन क्लियर कर रही, तो अर्ली गेम में दोनों टीम ही लेन क्लियर करेंगे। मिनियंस लेंगे कि उनको थोड़ा सा कुछ आइटम मिल सके, उनका डैमेज स्पाइक हो सके, तो दोनों फोकस रहेंगे। पर इधर खाली थोड़ा बहुत ही ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं नाइट हॉक्स को और यूजोंग को। अभी तो यूजोंग एक स्पिल पे आए है तो थोड़ा देर में गैंग होने का कोशिश हो सकता है उनके ऊपर।
कि बिल्कुल प्रयास यहाँ पे रहेगा और जो रोटेशन मैं बोल रहा था वही रोटेशन यहाँ पे आता है। देखिए मोबिलिटी मिल जाता है खलीद के साथ आपको अच्छा खासा, और वो बार-बार जो है खलीद बैटलफील्ड में प्रेजेंट होके अच्छा खासा जो है इन्फॉर्मेशन अपनी टीम के लिए यहाँ पे दे रहे हैं और विजन यहाँ पे अच्छा खासा प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी के साथ फैनी यहाँ पे टॉप लेन की तरफ अच्छा रोटेशन जो आता हुआ दिखेगा। 3 बंदे ऑलरेडी यहाँ पे टॉप की तरफ है, तो हैरियत के ऊपर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बात करेंगे यहाँ पे बॉटम लेन की तरफ 4 बंदों का रोटेशन आता है और उसके साथ फ्लिकर यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया गया है। 4 सेकंड में टर्टल आने वाला है और इस समय फ्लिकर इस्तेमाल कर देना एक बड़ी बात है और उसी के समय एक बढ़िया यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे एडवांटेज मिलता हुआ नाइट हॉक्स को, क्योंकि यहाँ पे फ्लिकर जो है एक अच्छा खासा जो रिसोर्सेज है वो यहाँ पे यूज करवा दिया गया है। लेकिन पोजीशन की बात करें तो अच्छा खासा पोजीशन अभी लेके बैठी है टीम राइजन एक्स। तो यहाँ पे कोशिश जरूर है कि स्पेशल माइग्रेशन आया जरूर था, लेकिन बढ़िया तरीके से डॉज किया और उसी के साथ पूरी तरीके से रिसोर्सेज जो है गुनिविर का वो यूज करवा दिया गया है और इस समय अच्छा खासा मौका इनके पास रहेगा ये टर्टल लेने का। हाँ जी, यूनिवर्स का तो 2 रिसोर्सेस अभी उड़ चुका है, उनका अल्टीमेट और उनका फ्लिकर भी नहीं है, तो उनका तो रिसोर्सेस नहीं है तो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। वो स्टन दे पाएंगे उनका सेकंड स्किल से स्पेशल माइग्रेशन से, पर उनको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। और अभी हम देख सकता है कि रिवर एरिया पर दोनों टीमें कंट्रोल लेने का पूरा कोशिश कर रहा है और हमारे ड्रैगन जाते हुए जेटिन ने अल्ट कर दिया है। फैनी केबल के साथ आ रहे RWM का खेल शुरू है और फर्स्ट ब्लड फैनी को मिलते हुए लियो मर चुके हैं। टॉक्सिन को भी उन लोगों ने निकाल दिया है। 2 प्लेयर जो इंपॉर्टेंट थे, उनका जंगलर और उनका जो एक्सपी जोन करना था वो निकल चुके थे, उनको ये टर्टल थोड़ा इजीली मिल सकता है। जी बिल्कुल, राइजन एक्स का एक बढ़िया दाव आता हुआ उसके साथ यहाँ पे 2 बंदों को धराशायी किया और टर्टल में बढ़त हासिल करते हुए और इसी के साथ सीधा यहाँ पे इन्वेड करने के लिए आएंगे गुनिवर। एक बढ़िया रोटेशन आता हुआ उनकी टीम की तरफ से खलीद मौजूदा है, कहीं ना कहीं वो फार्म जितना ज्यादा डिले हो सके वो करवाना चाहते हैं टीम का और उसमें वो सक्षम भी है। दूसरी तरफ अगर बात करें टॉप लेन की तरफ तो थोड़ी सी स्थिति यहाँ पे खराब होती हुई, लेन फ्रीज पूरी तरीके से किया जाएगा। ब्लेजिंग डो का इस्तेमाल और केबल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आएंगे और हैरिथ बहुत ही कम एचपी बचेंगे, लेकिन जमान 4 का इस्तेमाल करते हुए टावर का डैमेज अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन खलीद सेकंड स्किल इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हील हो जाएंगे। अकेले बचे हुए हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ज्यादा देर नहीं टिक पाए, कोशिश करना चाहते थे लेकिन जो फॉलो अप है वो नहीं आया टीम की तरफ से, वो बहुत ज्यादा लेट हो गए जिसके कारण उनको यहाँ पे डिलीट होना पड़ा और थोड़ी दुखद बात है। यहाँ पे अच्छा खासा गेन बना सकते थे लेकिन वो बढ़त वो जो है स्नोबॉल पोटेंशियल उनके हाथ से जाता हुआ। बात करें टीम नाइट हॉक, वो अभी 0-3 से पीछे चलते हुए यहाँ पे जा रही है। हाँ जी, उनका 0-3 और थोड़ा गोल डिफरेंस देख सकता है। फिलहाल तो 2000 गोल डिफरेंस है 2 टीम में और टीम राइजन एक्स उनके पास थोड़ा एडवांटेज है। उनके पास अभी किल्स भी अभी डैमेज से पड़ रहा है, पर फैनी अपने केबल्स के साथ कोशिश कर रही है कि वो बैकलाइनर को मार्क कर सके, पर अभी देख सकता है कि कलिया अपना सुनामी इस्लाम मारते हुए एक शॉट लिमिट की तरफ से और फैनी उधर मरते हुए कोशिश बहुत बढ़िया थे घुस के जेटन को मारने की, पर थोड़ा कोशिश उनके ऊपर ही भारी पड़ गया क्योंकि उनका रोमर ने उनको पकड़ लिया, उनका कर लिया और उधर उनको मौत का खेल दिखा दिया। यहाँ पे बात करें टीम नाइट हॉक्स को तो उनको थोड़ा सा पीछे रह के खेलना पड़ेगा। उनको मौके का इंतजार करना है कि एक सही समय पे जो है फाइट ले और कहीं ना कहीं उनको इस बात पर इंतजार करना पड़ेगा कि सामने वाली टीम राइजन एक्स कोई गलती करे और उसको यहाँ पे वो पनिश किया जाए। उसके साथ एक बढ़िया रोटेशन आता हुआ खलीद एक जो है यहाँ पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं टीम की ओर से, एक बढ़िया जो है प्रेशर वो आता हुआ दिखेगा। फिर दोबारा टीम यहाँ पे आएंगी पोजीशन लेते हुए और उसी के साथ टर्टल को पोक करके वो पोजीशन रिवील कर दी गई है, एक बढ़िया स्ट्रेटेजी। उसी के साथ देखना पड़ेगा और यूजोंग मौजूदा रहेंगे। भाप लिया था कि उधर हो सकते हैं स्पेशल माइग्रेन का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अल्टीमेट ब्लैक ड्रैगन इस्तेमाल करते हुए आएंगे और ये चर्चल के समय यहाँ पे आना पड़ेगा। टीम जो है ऑलरेडी मौजूदा यहाँ पे रहने वाली है तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। यूजोंग जाना जरूर चाहिए, RWM का इस्तेमाल जरूर होगा। उसके साथ फिनिक्स अल्टीमेट आता हुआ दिखेगा पीछे से, यहाँ पे देखिए डैमेज आता हुआ, एक बढ़िया डैमेज आता हुआ, लेकिन 3 बंदे ताराशाही हो चुके हैं नाइट हाउस के। क्या यहाँ पे 400 बंदा भी ताराशाही हुआ? जी बिल्कुल, डबल किल यहाँ पे फैनी के हाथ में आता हुआ और जिस यहाँ पे स्नोबॉल की बात कर रहे थे वो टीम राइजन एक्स को यहाँ पे मिल चुका है और पूरी तरीके से टीम नाइट हॉक्स जो है वो यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। 4 बंदे उनकी तरफ से मृत्यु के द्वार को यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं और उसके साथ देखिए ये इंस्टेंट रिप्ले आता हुआ जिस तरीके से RWM लगाया गया था। पीछे से बात करें फैनी वो केबल इस्तेमाल करते हुए आई और पहले लियो को निकाला, फिर उसके बाद पीछे यहाँ पे MM की तरफ से डैमेज देते हुए आए थे और उनको जो है यहाँ पे डिलीट किया।
और यहाँ पे देखिए फिर दोबारा से जो फाइट है वो आती हुई, लेकिन बात करें टीम राइजन एक्स, वो बढ़िया तरीके से गेम प्ले दिखा रही है, वो डोमिनेशन दिखा रही है इस मैच में। टीम नाइट हॉक जो है अभी भी लड़खड़ा रही है, कहीं ना कहीं वो कमबैक करने के लिए कोशिश करना चाहती है, लेकिन उनको वो ओपनिंग नहीं मिलती हुई दिख रही है। हाँ जी, नाइट हॉक्स का कोशिश तो बहुत है। फिर से फैनी घुसते हुए पर स्टारफिश को किल मिलता है, कलिया को मार दिया और जेटन अपना अल्ट इस्तेमाल करते हुए लियोमर टीम फाइट में घुसते हैं और ब्लैक ड्रैगन अपने फॉर्म में जाते हुए और खलीद को निकाल दिया है। ड्रैगन बैकलाइनर को मार्क करते हुए अभी पूरा कोशिश है कि वो एक बैकलाइनर को पकड़ पा सके, पर ये दे दे और ड्रैगन को मार दिया। लो एचपी पर उन्होंने एक किल निकाल दिया, बहुत बढ़िया पोजीशन था उनका टीम फाइट पे और सोप ने लिमिट को गिरा दिया। नाइट हॉक्स का पूरा कोशिश, उनको 2 किल मिले पर उनके 2 आदमी भी निकल गए। अभी फिलहाल यूनिवर्स डबल किल मिलते हैं उनको हैरिथ के ऊपर। यूनिवर्स लो एचपी पे कलिया ने सुनामी स्लैम मार दिया उनके ऊपर, फैनी बैकअप के लिए आते हुए पर जेटिन को 1 किल मिल चुका है, पर जेटिन को भी किलिंग स्प्री देते हुए पनिशमेंट रिवेंज ले लिया। और डैमेज क्लॉट का देखो पूरा डैमेज जाता है उनका मोबिलिटी से, उन्होंने कलिया को निकाल दिया बेसिक अटैक पर। यूजोंग फिर से घुसते हैं और उन्होंने क्लॉट को भी निकाल दिया, बहुत बढ़िया था। कोशिश पूरी थी, 4 किल्स मिला पर फिर भी उन लोगों का 2-3 आदमी निकल गया। तो राइजन एक्स स्टिल उनके पास एडवांटेज है, वो लीड पे है और नाइट हॉक्स भी बहुत कोशिश कर रहा है, पर उनको थोड़ा टीम फाइट में उनको सोच के लेना पड़ेगा, उनको पोजीशन देखना पड़ेगा कि उनके बंदे भी ना गिरे और उनको थोड़ा एडवांटेज मिल सके। पर जो फैनी आई जो घुसी और क्लॉट जो अपने मोबिलिटीज जाके उन्होंने मारा और फर्स्ट बैट निकाला, बहुत अच्छा था, डबल किल हाथों में मिला। और जो सुनामी स्लैम था कलिया का वो भी बहुत खूबसूरत था, पर फैनी जो खेल रही है वो बहुत अच्छा खेल रही है। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया केबल का इस्तेमाल करते हुए सही समय पे फाइट के दौरान मौजूद होते हुए। और गुनीवर की भी बात करें तो उनकी तरफ से एक बढ़िया माइग्रेशन आता हुआ दिखा, फ्लिकर का इस्तेमाल करते हुए वहां पे पकड़ा। तो हर कोई अपने रोल पे 100% यहाँ पे दे रहा है टीम राइजन एक्स की तरफ से। बात करें नाइट हॉक्स की तो वो थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई, वो उनको एक मौके का इंतजार है, लेकिन फार्म डिफरेंस अभी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 5 के ऑलमोस्ट हो गया है। और अगर एक और फाइट यहाँ पे होती है तो और ज्यादा जो फार्म डिफरेंस है वो आता हुआ दिखेगा। बात करें स्कोर की तो 4-13 का स्कोर यहाँ पे हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एमएम को निकाला गया, क्लॉड को स्वर के द्वार पे भेज दिया गया। इस बार बॉटम लेन की तरफ से गुनीवर वहां पे मौजूदा रहेंगी और वो जो है एक स्ट्रक्चर के ऊपर बढ़त हासिल करते हो। तो मैक्रो पे यहाँ पे ट्रेड ऑफ कर लिया गया है, क्रॉस ट्रेड ऑफ यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो किल के बदले एक और टावर यहाँ पे ले लिया गया है, लेकिन लॉर्ड वो आ चुका है इस समय। और इस समय कोशिश भी ये रहेगी कि ये लॉर्ड को लेके प्रेशर जो है, मैप प्रेशर जो है दोबारा से यहाँ पे क्रिएट किया जाए टीम नाइट हॉक्स के ऊपर। हाँ जी, वो तो दिख रहा है कि राइजन एक्स वही कोशिश कर रहा है कि उनको अच्छे से मैप कंट्रोल ना मिल सके और उनका वो बढ़िया चल, उनके पास डैमेज भी है, वो लोग पूरा मैप कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे हैं कि राइजन एक्स को कुछ एडवांटेज ही ना मिल सके, वो लोग उनका यूज ही नहीं करें। उनका बुशेस भी राइजन एक्स को मिल चुके हैं। नाइट हॉक्स को बहुत दिक्कत है, फिर ग्यूनी पर जंप करती है, हैरिथ को उधर लो एचपी पे मारते, पर ब्लैक ड्रैगन कोशिश कर रहा है कि वो एक बैक लाइनर को निकाल पाए। और उनका जो अल्टीमेट जो इंपॉर्टेंट है, जो उनको जोन आउट करना था लॉर्ड के टाइम पे, वो निकल चुका है। तो ब्लैक ड्रैगन को सोच समझ के अपना अल्टी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 60 सेकंड का कूल डाउन होता है उनके अल्टी के ऊपर। और मैं जब से देखकर फर्स्ट मैच से जब से उन लोगों का लाइक ऑब्जेक्टिव ले रहा था, उस टाइम से ही ब्लैक ड्रैगन अपना अल्टीमेट बहुत गलत टाइम पे यूज करते, बहुत ही जल्दी इस्तेमाल कर देते। उनकी वजह से जब लेना पड़ता है, जोन करना पड़ता है, वो अल्टीमेट ही नहीं हो पाता, तो उनका जोनिंग नहीं हो पाता। पर देखा जा सकता है उनको फर्स्ट लॉर्ड भी मिल चुका है गेम का, अभी उनका बहुत अच्छे से एडवांटेज है, लॉर्ड भी मिल चुका है, स्ट्रक्चर्स है वो निकल चुके हैं, तो आराम से वो 2-3 और स्ट्रक्चर ले पाएंगे। पर फिर से दूसरा फाइट शुरू होते हैं मिड लेन पर। जी बिल्कुल, और इसी के साथ यहाँ पे जो फाइट है वो जरूर छिड़ती हुई दिखेगी, लेकिन लॉर्ड वो टॉप लेन से आता हुआ। बात करें मिनियंस का तो वो यहाँ पे एक बढ़िया सेट लगाते हुए दिखेंगे, क्योंकि लॉर्ड जो है टॉप लेन से आएगा और इस समय जो प्रेशर जो है वो बॉटम लेन की तरफ क्रिएट करते हुए दिखेंगे। जो लेन है वो सिंक होती हुई दिखेगी अच्छी खासी। तो एक बढ़िया जो है बढ़त यहाँ पे राइजन एक्स को मिलती हुई दिखेगी। स्पेशल माइग्रेशन यहाँ पे आता हुआ दिखेगा गुनीवर की तरफ से, लेकिन थोड़ा सा जो है यहाँ पे ललचाया जा रहा है, उनको जो है बेट आउट करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि रेज बेट करके एक बार बस आगे आ जाए और उसी का फायदा उठाते हुए यहाँ पे जो है उनको पनिश किया जाए। इसी के साथ होली शील्ड जरूर मौजूदा रहेंगी यहाँ पे, तो होली शील्ड के द्वारा थोड़े से जो मिनियन का जो प्रेशर है वो कम होते हुए हमें दिखेगा। लेकिन टॉप लेन पे कोई होली शील्ड नहीं है और टॉप लेन से जो लॉर्ड है वो मार्च होता हुआ आ रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसलिए टीम जो है बैक ऑफ होती हुई है और इसी के साथ लॉर्ड को पिघलाने का काम करना चाहती जरूर है, लेकिन जो प्रेशर है वो सारी लेनों की तरफ से आ रहा है। फैनी यहाँ पे केबल का इस्तेमाल करते हुए जरूर जाएंगे, लेकिन लॉर्ड अभी भी मौजूदा रहेगा। जमान फोर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हैरिथ किसी तरीके से जो है लॉर्ड को पिघलाना चाहेंगे,
लेकिन बॉटम लेन की बात करें तो मिनियन वहां पे मौजूदा रहेंगे, उसके साथ ब्लैक ड्रैगन आते हुए जोन आउट करने का प्रयास करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे एक बढ़िया अल्टीमेट लगाते हुए टीम को पीछे धकेलने पे मजबूर, लेकिन यहाँ पे जो मिनियंस है वो कंटिन्यूसली आ रहे हैं और इमीडिएट टरेट टॉप का मिल चुका है। उसी के साथ सैंडस्टॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अंदर की तरफ आएंगे, एक बढ़िया अल्टीमेट लगाते हुए अंदर टरेट के अंदर लेके जाएंगे। किलिंग स्प्री लगा चुके हैं, लेकिन स्पेशल माइग्रेशन आता हुआ दिखेगा हमें पीछे से ब्लेसिंग डुओ उसका इस्तेमाल करते हुए। एक बढ़िया सेट, एक बढ़िया कॉम्बो आता हुआ और उसी के साथ डबल किल अपनी झोली में। मिनियंस आ चुके हैं बेस की तरफ और पीछे क्लॉड वो मौजूदा रहेंगे इस बेस को खत्म करने के लिए और अनस्टॉपेबल के साथ खत्म करेंगे इस क्रिस्टल को और इस मैच की पारी को। और उसी के साथ वन साइडेड डोमिनेशन हमें देखने को मिला टीम राइजन एक्स की तरफ से और उनकी तरफ से एक झंझोर बढ़िया तरीके की जो है फाइट हमें आती हुई दिखी। हाँ जी, मैच बहुत बढ़िया था, दोनों टीम का बहुत अच्छा था, पर हमको ऐसा फील हुआ कि ये मैच वो राइजन एक्स को लाइक पूरा डोमिनेशन उन लोगों ने जितना अच्छे से मैप को अपने चंगुल में लिया, अपना कंट्रोल में लिया उन लोगों ने। वो लोग ऐसा कर रहा था कि टीम नाइट हॉक्स को उन लोगों ने इतना परेशान किया, इतना परेशान, उनको फार्म करने नहीं दिया, मैप कंट्रोल, उनका बुश कंट्रोल, उनका जो जंगल एरिया वो उनके हाथों पे आ गया था, तो वो लोग अच्छे से नहीं करता। खलीद ने इतना बढ़िया रोम किया, विजन प्रोवाइड कर रहे थे और उनका रोम और उनका जंगल को बहुत दिक्कत दे रहा था। मतलब यूजंग का पूरा कोशिश था कि वो जोन आउट कर सके टीम फाइट में, लाइक ऑब्जेक्टिव्स मिल सके, पर दिक्कत ये हो रहा था यूजंग जो अपना है, जो अल्ट था ब्लैक ड्रैगन का, वो बहुत जल्दी इस्तेमाल कर रहा था। इतना जल्दी इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए था। मतलब लाइक वो कर रहा था, कोशिश तो कर रहा था कि बैकलाइन को मार्क कर सकूं या फिर लाइक इतना अच्छे से जॉइन कर सको कि जंगल को निकाल पाएगा, पर ऐसा हो रहा था कि वो कोशिश कर रहा था पर अल्टीमेट ज्यादा ही उनका फास्ट यूज हो रहा था और ओपोनेंट ने वो पैटर्न रीड कर लिया। तो वो लोग इतना कोशिश करते थोड़ा बेट आउट कर सके और लाइक यूजंग का वो अल्टी निकाल दे और वो लोग अच्छे से कर सके। तो उन लोगों ने वो किया, वो बहुत इस्तेमाल से अच्छे से किया स्ट्रेटेजाइज करके और उन लोगों को ऑब्जेक्टिव से सिक्योर मिला, उनको किल भी मिल रहा था और इतना प्रेशर दिया कि डोमिनेट किया कि जो उधर से वो लोग रिकवर नहीं कर पाया। और फैनी जो अगर फैनी हो ओपोनेंट में और उसका अगर अर्ली स्नोबॉल मिल गया तो बहुत दिक्कत होगा। और वो फैनी को वो स्नोबॉल मिल चुका था, वो केबल्स के साथ जा रही है, पीछे जाके मार रही है, निकल रही है। उन लोग बहुत अच्छा किया कि फैनी ने जाके हमेशा बैकलाइनर को निकाल दिया, उसकी वजह से उनका भी डैमेज नहीं था और उन लोगों का डोमिनेशन था, तो उनकी वजह से उनको लाइक डैमेज उतना नहीं दे पाए और लोग डिफेंड भी अच्छे से नहीं कर पाए। पर बढ़िया था जो भी था, दोनों ने जो भी खेला अच्छा था। अब वही बोलना चाहती हूँ कि बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टूर्नामेंट और आप लोग अच्छे से और प्रैक्टिस करिए और बढ़िया होके आ जाइए। बिल्कुल, और ऐसे ही तड़कते भड़कते स्क्रीम्स के लिए फॉलो करो एल्गाम्बो ई स्पोर्ट्स को। सारे सोशल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और तब तक के लिए आज रात के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको एक नई स्क्रीम्स के साथ। मैं था आपका कास्ट शिनरा, मेरे साथ कास्ट कर रही थी टेलिसिया। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करिए। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्क्रीम में। गुड नाइट। जरूर होगा। उसके साथ फिनिक्स अल्टीमेट आता हुआ दिखेगा पीछे से। यहाँ पे देखिए डैमेज आता हुआ, एक बढ़िया डैमेज आता हुआ, लेकिन 3 बंदे ताराशाही हो चुके हैं नाइट हाउस के। यहाँ पे 64 बंदा भी ताराशाही हुआ। जी बिल्कुल, डबल किल यहाँ पे फैनी के हाथ में आता हुआ, पर उन्होंने एक किल निकाल दिया। बहुत बढ़िया पोजीशन था उनका टीम फाइट पे और सोप ने लिमिट को गिरा दिया। नाइट हॉक्स का पूरा कोशिश, उनको 2 किल मिले पर उनके 2 आदमी भी निकल गए। अभी फिलहाल यूनिवर्स डबल किल मिलते हैं उनको हेडिट के ऊपर। यूनिवर्स लो एचपी पे कलिया ने सुनामी स्लैम मार दिया उनके ऊपर। फैनी बैकअप के लिए आते हुए पर जेट इनको 1 किल मिल चुका है, पर जेट है वो कंटिन्यूसली आ रहे हैं और इमीडिएट टरेट टॉप का मिल चुका है। उसी के साथ सैंडस्टॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अंदर की तरफ आएंगे, एक बढ़िया अल्टीमेट लगाते हुए अंदर टरेट के अंदर लेके जाएंगे। किलिंग स्प्री लगा चुके हैं, लेकिन